चली गई थी यार, क्या करूं मैं, क्या करूं मैं, लाइट चली गई बहन। I'll do it. इसको properly लगाइए. थोड़ा right में करके लगा. If I bang back 41 after good 0. आ गया? Yeah, that's enough. Yeah, perfect. Yeah, so the primary vehicle is going to be on the 45 degrees, just as a traffic stop. The secondary vehicle is also going to be on the same angle as the primary, but the tertiary vehicle is going to be facing towards the suspect vehicle. Okay, that is how a proper stop is performed. Now, how do you get out? Like I've totally eradicated the part. So 1, 2, 3. How do you do that? Okay. Now the thing is, you stay inside your vehicle. Sorry. Like, you tell the person, this is the San Andreas State Police. Driver, please throw the keys out of your window right now. And let me know when you have done that. You tell the person. The moment he has done that, now what you do is, you just get your gun out. For example, you saw him throw the thing. Alright? Now, he does not have the keys anymore. Okay, he throws the keys. Now, you don't need to tell 1, 2, 3 or whatever. Just fucking, everybody on my left, now they need to keep their heads right there. Alright? Everybody's doors are shut. The moment you hear the doors opening, alright, you get out, everybody gets out immediately. The moment the primary gets out. Every other unit pays attention to the primary here. Alright? I'm just gonna straight up get out, I'm gonna point at him, everybody else gets out. Right? Now, the only person who initiated this stop will be talking, nobody else. Right? Rishi, you gotta shout. Get out of the vehicle. तेरी आवाज चली गई. नहीं गई. Okay, so the thing is gonna be, okay, everybody can hear me, right? Okay. Now, don't you get out of the vehicle, alright? Like, we are not gonna say 1, 2, 3 or anything. Like, everybody's paying attention and everybody will be out immediately. Alright, just because they are paying attention to the primary, that is more than enough. Alright, now the moment we get out, only the person who initiated the stop will be talking here, and he'll be the one ordering people out. Now, how do you order people out?
The first one is going to be the driver. Second one is going to be the passenger. After that, the people in the back. Start from the primary. All right, that is going to be the driver. Now, how am I going to do that? I'm just going to scream on him. I'm going to tell him that driver, get your ass out of the vehicle, put your hands in the air, look through your eyes, and start taking 5 steps to the back. You need to mention, you need to have control over the person, all right? You need to tell him everything in detail. Yeah, 5 steps. Thank you. As the person is here, and I should be audible to each and every one of you. As he's here, now I'm gonna cuff him up. Till this time, everybody else stays in the vehicle. Nobody Yeah, but I'm pays random. attention to them. If they are doing anything stupid, they are taking out a gun, they are on a phone, they are not allowed to do so. Nobody is allowed to communicate from the vehicle that is pulled over. Alright? Just pay attention to that. I've done this. Now what I'm gonna do is, I'm gonna escort the person, make him face away. I'm going to make the person face away from the scene so that he has no information what is going on there now. I come back on my place so that I have my cover. Now I'm going to order the passenger out of the vehicle. Alright? Now the passenger comes out. I'm going to advise the person. Now what you do is, now you need to play with the passenger a bit. You're going to ask the passenger to come, take 3 steps behind, 2 steps to the left so that he enters the dead zone, not you. Okay, make the fucking suspects enter the dead zone. Don't do it yourself. The moment the person enters the dead zone, he'll be on the left. You get him to you. You order them to come. You're gonna cuff them up. You're gonna make them face away from the scene immediately. All right? Look at Karthus. He cannot even see the scene anymore. Is that clear, everyone? Yeah. Info. Yeah, but now in this time, till, like for example, I've taken both of them out and they are facing the other way, and all the units are just there. They're not gonna move at all. You're gonna be the one who's gonna be doing 90% of the work of the shop. Their work is to give you cover. Okay? Their work is not to do anything else. Now, what do in the end is over here, as we have the suspects here. Now, what we're gonna do is the primary vehicle is gonna advise everybody how are we gonna go ahead and approach the vehicle. For example, I'm gonna say that it's gonna be clockwise. You guys know how the clock works, right? Right to left, right? Now the thing is, now the person on the extreme left of mine, that is gonna be the green and color explorer. Everybody's gonna point at the vehicle. They're gonna keep a name on it, and everybody will be facing the vehicle and pointing the vehicle, and the person on the extreme left will be the one to leave first. He'll be the one who will be approaching the vehicle from the front, and you need to figure your way out so that you guys do not come in anyone's crossfire. All right? Is that clear? 10%. Yeah, perfect. All right, Longwood, start going. go. Okay, so everybody's gonna keep the points at the vehicle, and okay, everybody needs to leave immediately. Okay, everybody will be leaving. Nobody goes up front. Only the person. Okay, I'll just give you a little position. Longwood, come here. So as long Longwood was on the extreme left, he'll be ending up here. The second one was UV. He's gonna end up here. Then it's gonna be Aaron. Aaron, come here. Exactly here. Exactly where I am. Right. Now Aaron will be ending here. Now the last person, that is me, right? I should be exactly here. Now what I'm gonna do is, it is Longwood's job. Longwood, hop in the driver's seat right now. Get in the driver's seat. Right. Now Longwood is gonna pop the trunk, and he's gonna say, "I'm popping the trunk." Right? Open the trunk now. All right. Now this is my job to have a look at the vehicle, and if there's nobody hiding, I say it immediately. Clear. Right. The moment the vehicle is cleared, lower your weapons, and then you can go ahead and have a look at the vehicle and initiate and charge the person and do whatever you want to do. All right. But remember, if you're gonna keep on doing this, like straight up rushing to the vehicle, everyone, it is gonna be tough if somebody pops out of the trunk and shoot. Okay. So properly go clockwise, or if you want to go anti-clockwise, you can do that too. In certain situations, you have to go anti-clockwise. For example, if some idiot pulls over on the wrong side of the road. Is that clear? 10%. Okay. From now onwards, please pay attention to the clockwise and non-clockwise, like anti-clockwise part. Because the thing is, a lot of people end up shooting their own cops, and that is why this thing is introduced. Alright? Pay attention to this, and just have a look at their positions. If there's anybody else who's coming, right? If there was another person. Now that person, like Aaron was doubled up, then that person will be here, and I will be in the end here.
Now, at this certain point of time, if there's anybody even hiding inside the vehicle, we all can shoot him, and we will not even shoot any of our comrades. Right? Nice and easy, right, guys? कॉमरेड बोल के सोवियत बन रहा है. Yeah, that's it. हाँ, वो टार्को का असर था पड़ रहा, क्या करें? Okay. पर एक्चुअल में सर ऐसा होता नहीं है. नहीं, एक्चुअल में ऐसे होता था. I've to be honest, I've confirmed all these things with a proper sergeant of the California Patrol Office, so no problem. All right. So these are the all details that you need to know for now, and yeah, from now onwards, as we have, and yeah, regarding now there is one thing that I was saving for the last, and that is for this part, that is using your force. I think nobody fucking paid attention that we missed use of force over there, did we? Now the reason it was kept for now is because using a force, your vehicle can also be used as a force. Okay, so remember that you do not go ahead and start ramming people, all right, because that is equivalent to using the last one. ऐसे ही लग रहा है लेकिन बहुत से लग रहा है. Juicy and the like different है. Fact. Different से दिख रहा है. अब क्या इसके लिए 1 किलो क्या क्रेडिट सबको नहीं मिला है. इट्स लाइक ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स दे रहे, सभी को दे रहे. नथिंग एल्स. मैं अपनी स्ट्रीम तो खोल लूं. भूख लग रहा है यार. And there will be new things introduced to the cadets, which will be a bit tough for them to get promotion, but it will make you good officers. I hope everybody enjoyed it. It was pretty quick, nice and easy. Nice and one, we learned some Joshi. new things. Pay attention to these, okay? Any feedbacks? Yes. Joshi to nice one. And four. And food. Welcome. अरे माकी. Good one, boy. Good one, Chief. Good. Nice one, Chief. Nice one. Nice one. All right. Again. Alright. That was nice मेरी and easy, vehicle है. boys. अरे इतना चिल्लोगे पे कोबरा. अबे तेरी डीसी लिंक काम. अरे कोई छोड़ो ना यार. फालतू ये कुछ है भी नहीं सब. जरूरत 19 MRPD. सेम ट्रैफिक +1. 10 for. Pick me up, Longwood. 10 for sir. आ गया. भूल गया तो सर. 5 and 76. Nah, leave it. 74 more. Let's go. I can overtake you. ये क्या है? क्या है? क्या है ये? सरबजीत बैठा है ना मेरे साथ. आवाज नहीं आ रही. हेलो. अब आ रही है तेरी. अब तो हो गया ना सारा कुछ. हैं? पॉलिटिक अब हो गया सारा कुछ. अब तो अपनी यूनिफॉर्म वापस पहने. यस. तो मैं थोड़ा यूनिफॉर्म अपना होली पे थोड़ा वो ना करते हैं. टैटू वैटू पे लगाते हैं यार. तो ये सादे अच्छे. मैं यार फोरेंसिक करके आऊं तो बस फिक्स रहते हैं अभी मेरे. या फिर फोरेंसिक करो यार. आओ इंस्ट्रक्टर्स आओ सारे मीटिंग रूम में. मैं भी आवा.
does, but yeah, I'm Anarchilai Piridi Urthavatizm. $23.90 MRPD. Meow meow. 76 to the meeting room. Go to. Ton ton ton. चल भाई आने दे सभी को ओहो देखा मैंने बोला तेरे को कि एकदम सही टाइम पर रैप अप हो जाएगी और हाँ। वही टाइम हुआ देख घूम फिर के वही 7 बजे रैप अप कर दिया मैंने सही है यार बढ़िया एक्चुअली में जरूरत ही नहीं होती है Yeah, who does smoke? हाँ कोबरा Yeah, you ain't. सर वो बैच बना रहा था चोरी हो गया No, no cadets. Actually, you know only what, if Jiren's you car? lose. No You are cadets. suspended for that. And I am serious about it. I'm serious about it. Please don't do it, but please. I am actually serious about it. I'm Fuck sorry, off man, from I'm it sorry. right now. Fuck off. Sorry, man. I'm sorry, man. Please don't do this, man. Fuck off. I said fuck off. I You get understand the You meaning? don't need any cadets, right? हाँ पाओ कोई नहीं होगी एकेडमी होगी मेरे को थोड़ी सी बात Correct, करनी थी correct. बैच हाँ कोबरा लोअर पार्किंग का ले ले मैं चलना मेरे के रहा अबे टी-शर्ट पे बोट है कहाँ रुक जा कोई नहीं रुक Say some creativity बाकी सब from instructors our, का you know, LSPD cadets. T-shirt पे देखो होता मैं है। ये कह रहा था नहीं मैं ये कह रहा था जेलिन कम है इधर है इधर है इधर है I'm seriously ordering you. Come here, come here, come here. आजा 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 let me give you a reward 5 points for insubordination disrespecting your senior fuck off भाग जा ध्यान से ने किया क्या था? वो देख 10 points do you want a suspension right now क्या कहता है एक हफ्ता 3 दिन कर दे यार, एक हफ्ते I'm giving you 10 points चल 10 point आपने क्या कर दिया था डीओ को? जो करना बात चाहिए करनी नहीं वो बात करनी नहीं आया बनारस वाले था कौन था? अच्छा वो नहीं बनारस वाला नहीं था there was another guy named he just used some bullshit what due to whom I could have ended up who's the guy? जिसकी वजह से I have to attend 5 meetings fucking छुतिया कौन था? है कोई अबे सेन कर अबे सेन ना? UV the thing is I need you to do a job man go ahead get me somebody to lead the forensics department because I need everybody to know about forensics मैं हूँ फोरेंसिक्स See, डिपार्टमेंट Maya is like not coming. That बनाना है सरबजीत को लीड बना दे जोशी सर अभी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया कि अभी कुछ हो रहा है? हाँ जी ट्रेनिंग हो गई है अब बस थोड़ी देर में वो जो 8 बजे वाली मीटिंग है तब कर लो और उसके बाद मैं वो मीटिंग आनी पड़ेगी सबको सर थोड़ा 8 बजे जाना से पड़ेगा meeting तो है। थोड़ी देर में हाँ कोई बात You नहीं is आप that- उसको- हाँ जाओ मुझको आवाज नहीं आ रही। चलो चलो अरे सर कोई नहीं वो मैं देख लेते हैं। दोबारा सर चलता हूँ मैं ओके जी जी ओके ओके बाय बाय थैंक यू फॉर अटेंडिंग अप्रिशिएट दैट Yeah. सच अ नाइस गाय मैन जोशी we need to like With the don't दो throw the चार nickname, हमें please. sergeants पे like करने पड़ेगा आते ही नहीं। बहुत सारे डिस्पैच आते नहीं। 613 गोइंग 1042 माया जितने इनएक्टिव हैं वो सारे निकलने वाले हैं उसके नहीं माया को नहीं निकाल रहे यार माया ठीक है यार वो उसने पता है ना तेरे को कितना काम किया उसने डिपार्टमेंट के लिए अगर माया को निकाल दिया मेरे को आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट खाली करना पड़ जाएगा ऐसा है क्यों? ना हाँ, मैं काम I'm वो- just saying वो उनसे actually ये पूछ ना- लो एक बार क्या हो रहा है क्या सीन क्या हाँ, क्योंकि मैं फोरेंसिक्स करता हूँ। डिपार्टमेंट अरे वो के पता वही पता है नहीं नहीं हमें पता है उनका माया का पता है वो क्यों इनएक्टिव हो रखी है ठीक है उसका कुछ अर्जेंट सीन है तो इसलिए वो अपने आप आ जाएगी थोड़ी देर में। यार वो बेचारी वो डे वन से इसने कितनी हॉस्टेज है। तेरे को पता है उसने कितना टाइम लगाया है इस डिपार्टमेंट 112 Aaron उसको एकदम से ऐसे she has worked her as up to a head chart Arun Sage. चेक द लेटेस्ट इवेंट मैन। मैं जब वो था ना ट्रेनिंग तब से वो है जब मैं ईएमएस में ट्रेनिंग था तब से वो थी माया Yeah, how much can sell the Hydra jet to us? okay UV Listen up, Yes, I have हाँ, बोल, बोल। Joshi, I got you something. You can use it for today, alright?
अबे मैं को अभी जाना था। क्या है We'll गाजी? be here. क्या है हाँ गाजी? गुची गुची When you गुची come, are you gonna come back? हाँ हाँ later I'll be coming. Like after the comment meeting उसके बाद आता हूँ। Alright. Yeah, come back. Do not tell everybody. Do not use it. It's for you. Alright. Yeah, okay. मैं भी चला By the way मैं क्या कह रहा Giving था the उस training. Alright. I thank you man, appreciate that. मैं कह रहा था Roger, what do you say? Regarding this यार forensics का, can you and UV just confirm and get somebody over there because I need somebody to they're into teach these Longwood, guys sir. about forensics and let's make forensics a normal thing. Yes, I agree. The forensics. It's a very fucking yeah. It should be Longwood, sir. fucking default man because कुछ नहीं होता उसमें. You can easily identify what gun was that and everything else. खुद ही सिखा दो. Like उसमें क्या ही है. हम बस ठीक है फिर करवा देते हैं इनका. उसमें सिर्फ एक PDF है उस हिसाब से बुलेट्स है. वो तो बाद में याद हो जाती है. हाँ उसका फिर एविडेंस का इनको तरीका बता दो कैसे ऐड करना है. DNA कैसे मतलब ध्यान रखते हैं. सर इजी में इजीली जैसे हमारे को ट्रेनिंग मिली थी हम बता सकते इजीली. हाँ तुम बता दो ना. तुम हो ना. हाँ मैं बता सकता हूँ इजीली. मेक इट मैंडेटरी फोरेंसिक ट्रेनिंग. हाँ उसको बेसिक बना देता हूँ. ठीक है इसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं इनके लिए. बस चल भाई मास एकेडमी डन. अब से होगी सिर्फ कैडेट्स की एकेडमी. सत्यानाश. ठीक है. एक और लड़की बंदी है उसको यूआई ट्रेनिंग दे दो ना. वो उसको कायरा ना. हाँ उसका वो कायरा का. आई हैव अनदर गाय हु इज लाइक आई हैव टू of the individuals from the NA batch जिनका अभी All cadet 25 at onboarding करता हूँ. captain's office outside. पूछ लेना एक बार. Like you. हाँ कोई नहीं वो मैं कर दूंगा नोटिफाई. आज से मैं हूँ रात को. ठीक है. बस तू है ना हर्ष आज. बस हाँ आज हूँ मैं रात को. ना बस मेन तो इसी का था. बाकी इन सबको कुछ next time for academy or shit, like if you need any special equipment मुझे बताना. I'll get it for you. Shit sorry अगर कुछ चाहिए रहेगा let you know but TBH इतना चाहिए नहीं होता है इनके लिए. Okay. मैं सोच रहा था कि एक अद्दी एकेडमी नेक्स्ट मास एकेडमी करवाएंगे ब्लेन काउंटी. fucking desert टेंट इवेंट आके. एक ध्यान रखना है. अब LSPD में बहुत लोग हैं. We need to split it up. ट्रांसफर्स ओपन कर दो ना सर. Deputies as well. S plus R. So let's go man. Can you respond the 99? यार थोड़ा इसको देख लो. 8 बजे इसकी मार दूंगा मैं. रुक. Come. Yo, come. 260 days plus. Jishi, what do you built by that? I didn't seriously cut. अबे S plus आ जाओ कोबरा बाइक लेके. I'll be waiting for a I'll be waiting for a pilot at the helipad. I'll be the co. आर्यन सर आ जाओ. ओह अच्छा नहीं है. Yeah, there is a freaking another heli at the here this pad. 97 dispatch. Can I have interceptors on the S plus? Yeah, whose chopper is there at this roof? Go respond to the S plus man. We have a S plus. 10076 latest S plus. You can I have you on the reef? Thank you. ये जिसका chopper है भाई. Yuva, who's I'm there. I'm there. Yuva. Chief sir. Chief, hello. You can't hear me or what? Are we on radio 6 for this S plus? Yeah, cause till now we don't have anybody on that. Right, assign yourself to the dispatch call. इसने create किया. There is fuel at Otto's Auto if you guys want to refuel. Yeah, 10 for 100. Jaeger, I can't hear you if you're trying to.
Yeah, you can't hear me. Jaeger. Can you hear me now? Heading Hello? northbound Los Angeles Freeway. Hello? Jaeger. Hello? Yeah, is it good? Yeah, I can hear you now. Yeah. Mid right to Whose Palomino. Sparrow was that? That chopper there. I'm gonna open it. Mine. Come Olympic Freeway. Can I have Hey, something there? damn. Yeah, Evan Alright, is there. so units coming from the city go to Olympic as well. It's foggy. Never mind. He I made gotta a open turn it to for Sonora Road. He's gonna go Route 68. Which Yeah. vehicle was it? Route six- The Zeta 350. Okay. Let me just see. Got the I am visuals. looking for 2 cadets at Yeah, the got the parking visuals. garage for the S plus situation. Join me in. It's 10 for switching to 5. Aaron, sir. 4-5 and switch to 5. I have the visuals on the S plus. It's going towards the Sandy PD. He's making a turn. Yeah, he took a left. He's on the Joshua. Like Marina Road. Stop. But Somebody if assign I myself with can't the 911 assign call, myself please. now. I will do it. He took a left, Roger. continuing Joshua. Is it the blue? Yeah, it's the blue color. Yeah. I need the commanding officer. Who is the commanding officer? 204 Josh Drake. Head count. Ronnie, it's gonna be 204 and 2 individuals in that. What do you say? Took a Day 1, sir. yeah. That's it for now. So the guy took a right at Route 68 approach. West continuing towards Route 68. Took a left continuing in the mounts. Zincudo Grand Valley. 3485 +276. Joshi, keep an eye on the head count, okay? I'll hold you responsible for it. Listen up guys, जो भी join कर रहा है dispatch call पे join करो, then join. I'm unable to assign myself in the dispatch call. Guys, offloading the level. Okay, With Gucci. somebody else, assign his name. He took a right and north, Zincudo Baransa. Going back towards Route 68. Direction? You're going to Route 68. He's going towards Route 68, currently westbound, taking a right, currently at the vineyard. Shit. Nature call. I'm gonna back. Break Wait for a minute. second, please. I just want to notify all the units that the vehicle that we are chasing is very good with turns and has a crazy high speed. So do not ram into it because you'll fly. That thing is a monster. Going towards Great Don't try Ocean. to ram him. 403+1 would be intercepting from Great Ocean. Crossing Great Ocean gas station, slowing down, left, going towards the city, southbound. Then sir, I'll be waiting. BCD incline. Yeah, approaching Check Shumash. drop up. Approaching Shumash, south on Great Ocean. Crossing Shumash clothing store. Approaching Great Ocean Flisa. Crossing the Flisa bank. Approaching city limits. I'm back. Okay. I'm at the BCD. 436 going back for the calls. Southeast Great Ocean Highway going towards the city. Gonna approach the Bondi Petroleum. Then for city static. किधर चला गया? चल फिर And for Continuing south to the freeway. Erwin is going to the account, so just yeah, he's continuing Del Perro Freeway in the tunnels. Erwin VCB for now. Running it from
exiting the tunnels and continuing at the Dilpur freeway. The vehicle is too fast. Yeah, it's fast for charger. Need interceptors to join in. Uh, we cannot. 200, right? I'm having long eyes. Would be Mustang, please, thank you. Got eyes on the vehicle, sending it straight towards the Elgin Fields Freeway eastbound. Okay, units you from La Puerta Freeway or Miriam Turner overpass to be accurate, okay? Go from Innocence Boulevard, Calais. He's still sending Elysian Freeway. Gonna approach the Elysian Freeway any minute now. 101 to commanding officer. Would you suggest that we get 2 air ones since the vehicle units, ground units are not able to catch up to that faster shit? I would say we have charges, it can catch up to be honest, but you need to intercept them, that is the thing. Yeah. Yes. And The vehicle you need to have approach. speed when you intercept them, that is the thing. So I would say instead just go ahead and be stationary and at Miriam Turner overpass and just be a little speeded up so that you can catch up to him the moment he comes. The guy is seriously sending it towards the highways. He's like currently on the Elysian Freeway flyovers. Device, is this going to happen? Dispatch, you need a charge unit. Negative, we have enough. 10-4-26. This guy is going to get just highway blast until the tracker goes off, then goes to the city, then he will send it once he loses contact. shit, Alright, shit, so shit, get ready with spikes once the tracker goes off. He's yeah, he took a left. Who brought another he's going R1? towards the Uvu. I do have to wear ones. Why not? No, one is enough. Continuing north, South Rockford Drive. Approaching Bob Smith. Continuing I got north, rammed. South Rockford. Took a right, northeast to Marathon Eve. Again took a right, east to Dorset Drive. Clear. Calling David with the interceptor. Negative, we don't need it. Ten. Enough units. Hey, Abhi, try to catch up. Wait, Please do not use your brains and give calls, alright? Let only Joshi talk. okay, the guy is in the north, Alta. Gonna approach the R1 vault. return fuel. I'm just Took behind a you. right from I the got vault, east to Vinewood Boulevard. We can intercept him on La Puerta Freeway. Possibly he's gonna make the freeway again. Took a left, north, Media Street. Sending it in the Clinton Avenue East, Fenwell PL North. Took a right to east to Vinewood Park Drive. Took a left to north to Senator Road. Right, he's going Senora Road, Route 68. I will break off for fuel at the Sandy. Yeah, let's go. You have cash, right? I don't have it. Senora Road, crossing La Fuerta Blanca. Copy. Gonna approach the farms. Passing the farms. Man, they're too far away. Again, turns. Yeah, he took a left to Southwest Bay Tree Canyon. Yeah, it's going back towards the city. The Mustang truck. I think it was the Mustang truck. As you know, it was the Mustang track, the off-road part Yeah, of it. fucking You got any interruptions? not right now. Yeah, it's still continuing south. Bay Tree Canyon took a right to west. Alright, I got Delivery. beeping fuel. I'll go to Fort Zancudo. Everyone breaking off. Okay. My engine started smoking all of a sudden. Wait, it's Where's now. the second air one? Wait, it is smoking for you, not for me. What? Nah, Yes, it's you breaking are out. on standby or no? I think it's totally bad. Air 2? The 311 VSR. Engine. Sir, I'm having copy. engine troubles. Somebody get to radio 6 ASAP.
And tell him. What happened? Visuals? Negative for now. He's sending Route 68. No advance. Aarsh, go to radio 6 and call him. And 4. Just to clarify, this What vehicle did is going to be happen? very hard to chase because that is a very good vehicle with turns. Wait. Okay, so please. It's not smoking for me. That's the reason I said to wait. Should I try? Wait. No. Engines bursting. Upgradation It's not. It's freaking good for me. The fact. Sir is not responding. I'll take out an No. air from Sandy. Copy that. Go ahead. No. Engine is, what do you say, spurting. It's not smoking. Must be something. He's sending it southbound upgradation, are they? The track is off. Yeah, we have ice. 20. What was the exact 20? Heading towards the Great Ocean Highway, west. We had a 50. 0. In the comms. You go left from Great Ocean Highway eastbound. Heading towards the city. 10. BCB. Last in West Eclipse Boulevard. सीधा जाओ towards the PD backside, Little Mount Avenue and Mirror Park. 10-4. PCB, just wait for a bit and then start looking at the stations. Go for it. 10-4. It's probably वो वहीं से कहीं पे होगा, guaranteed. पिज़्ज़ा मंगा लो गरम Make sure to Where did he go last with the send it sirens to? off. West Eclipse Boulevard. ठीक है मत खा फिर बर्गर खाएगी क्या खाएगी सब्जी चाहिए Or a dare to inbound from LS Freeway. क्या चाहिए तुझे सब्जी के लिए ऐसा को मसाला बॉक्स लिया And checking the LS customs, then calling it a code for. Sorry? छोड़ना पिज़्ज़ा मंगा लेता हूँ We don't have visuals, Rathod. Trackers out. We are checking the stations and almost to यार एक LSI जाओ यार. Why नहीं 1 unit going to sir? जा रहा हूँ. Can somebody that Rockford one? Rockford एक T backside भी है दो. Just check over there too. T backside वाले दो में जा रहा हूँ. 10-4. चिक्का this is the Back vehicles were seen, but yeah, this is the new thing. just check around कोई है गाड़ी तो नहीं. मत कर I got hit by a Camacho when I was following the car, so give it a call for that. It's a black and red in color Camacho. LSIA, no one to be seen. Was it intentional? It doesn't seem like that, but he was following. Not intentional, I guess. Yeah. A glimpse of us. तू कितना लग रहा है यार ठेड़ा It was the motor.
back of the MRPD escort. Stanford. Did anyone check the Rockford? 6. You found. +176 to MRPD. Yep. Central same traffic. Switching radius, calling at a code for. Same traffic. Let's switch lanes. The 436 at the 6. UV, my track was done. Can I when will I do this hovering and all things? Like my track part was done in the event test. You know? Can you hear me? Yeah. What? Yeah, I'm saying that my track part was done for the airwind test. When can I do the rest? We are having guitar, my man. Yeah, too. Never mind. 76 to that latest 90. Turn for same traffic. Shouldn't we go there? You know? Assign yourself to the dispatch call if you're joining in. I'm gonna be 76 there, okay? Tell me क्या there. Or should we both go? UV, it's your call. You gotta have some mix. You gotta, mumble. Mumble. Okay, better. I'll 76 then. For 360 dispatch, any cadets? Yeah, I need maximum cadets to respond to this, okay? 05 to dispatch, we need FTO for ride along. Come to this low parking. And so. I need at least every command member or an FTO, whoever is an FTO, to be accompanied by a cadet, okay? If you don't have a cadet with you, it means that all the cadets are occupied. And if all the cadets are not occupied, and if you don't have a cadet, forget your FTO status. Bye. On that, sir, any cadet on MRPD open, upper grading. 10-4. 450, 41, I active. 98 Which fuel station was open? Was it 1090? Robbery. BGT हुआ है तो छोटा बैंक कर रहे हैं बैंक के लोग बैंक जो 10-9 for the fuel station. Little Soul. Also. अपने मुझे क्या कहते हैं अपने आप को मुझे मेरे अंडर करो 436. हाँ कर रहा है ना 436. या नाम क्या है आपका? Myself Jimmy. अटे जान दे. Hey. 101 + 123. Waiting on for units. 76. It's a silver colored bison. Is that guy on duty who was shot at? It was Ali Malik. He is 42. Yeah, Ali. क्या बोल रहे थे? कॉल से बताना. 436. Aarsh Jaeger. He went 42 already. कर दिया.
हाँ जी 300 the bike unit 23. अब देखो जैसे अभी ये 90 है 90s दिस क्या कहते हैं रॉबरी कोई बैंक या स्टोर ठीक है जैसे कुछ प्रमोशन टेस्ट देखनी थी सोलो कैडेट के लिए सोलो कैडेट आपको 2 weeks फॉर द ड्यूटी है ना एंड I need an 5 air one, a bike unit to MWs be on standby एंड always. या टेस्ट देना होता है आपको थिंग इज 3486. You need the air one over there at the 90. We need an air. जो 36. सेंट्रल डिस्पैच को लिखते हैं वो कंसीडर किया जाएगा क्या Guess we already have a सेंट्रल bike unit. डिस्पैच को जो डिब्रीफ लिखते हैं स्टेटमेंट हाँ हाँ उसको ही बोलते हैं सेंट्रल डिस्पैच वाली सेंट्रल डिस्पैच वाली भी I think it would be answer. 43610 नेचर कॉल ब्रदर आया 2 मिनट है ना Might be a vehicle change, you know. Bison. As soon as the airline is 23 at the scene, please perform a code 6 around the area from top. 304 to dispatch. Cobra will be the commanding officer of the 90. Cobra, I need a cadet to negotiate. Okay, 2 cadets, at least 2 cadets to negotiate. Okay, send that if you are the commanding officer. And keep an eye on the head count. 10 for 1, 2, 3 on the 1090. I got 3 in my air one. 2 cadets. I need a bike unit to be on standby and a air one to be standby. Bison लेकर आया लेकिन प्रॉब्लम हो गई शायद स्विच करेगा स्विच तो स्प्लिट कर सकता है तो 2 बाइक यूनिट हो जाए तो सोने पे सुहागा है डिस्पैच और एक इंटरसेप्टर ले आओ मेरे से अच्छे से चलती नहीं है पहले बता रहा हूँ जिसको रात गाड़ी स्विच कर लो मेरे साथ मस्टैंग 10 for sir. Chaji Singh will be the one who will be 436 negotiating along with Jimmy Shegar. Cobra. Cobra, once you're done, switch to DD5 for the 90. All the units. मैं जरा कपड़े चेंज 10 कर for लूं One would be landing nearby. switching radius. Switch to DD5, everyone. switching DD5 436 ready 5 MM97 dispatch 605 switch to ready 5. हेड बॉय मैडम नहीं है क्या शहर में तुम्हारी बॉस नहीं है क्या तुम्हारे शहर में अगर है गंदा आदमी आपके बॉस कहाँ है स्ट्रॉबेरी आपके बॉस कहाँ है शहर में नहीं है क्या 1 मिनट रुक जा भाई कौन है वो सोनम जी हाँ भाई पे A1 you stand by अरे रेडियो 5 पे नहीं आ रहा आपका बस नहीं आ रहा ना रेडियो 5 पे है ना चेक कर लो अरे सॉरी अबे ये मैंडम की चेनी कहाँ से आ गई गले में हमें भी दे दो 97 dispatch. कोई नहीं आ गई तो आ गई How many Negotiating officer row uधर. already है sir? Air one can't see you on scene. थोड़ा कोड 6 कर लो आसपास. यार 2 बाइक यूनिट रखो यार मिनिमम डिस्पैच 2 बाइक यूनिट रखो स्प्लिट मारेगा ये गारंटी दे रहा हूँ sir I'll be the hostage unit me and the my cadet Jimmy Cobra sir, can I take out a bike unit? Wait. अबे 8 बजे वाले
तो सिर्फ एक बाइक में स्विच होते तो आप अपनी बाइक वापस रख के गाड़ी लेकर आएंगे, ठीक है सर? फर्म सर। देख रहे हो भाई, 100% नहीं जा रहा, 60% जा रहा है। टेढ़ाऊ टेढ़ाऊ। NBC. NBC से Airman is there, sir. VSR. Okay, to help up dispatch, Longwood Evidence is ले taking रहे a हो? leave for a सारे लो? meeting, and so I want another evidence ले रहे हैं? unit from 36. सारे एविडेंसेस लो, सारे। Still, I can see only 8 units on dispatch. किसका? चेन्नी का क्या करें? चेन्ने? ये चेन्ने सर आपका मैंने रखने दो, रख लो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ एक सेकंड अर्श बेटा, कुत्ता भौंक रहा है कोई, कुत्ता भौंक रहा है। हाँ पटेल। अरे पीओवी मांग ले, दिक्कत हो जाएगी सब। क्या हो गया लंगोट सर? Who's gonna drive the this food? Will you take the evidence? Not yet, sir. Cobra can't hear you, man. हंसपा जी। हाँ बाबू। ये कौन ले जाएगा फिर मस्टैंग, अगर ये लॉन्गवुड तो 42 गया है? अरे मैं लेकर आया हूँ। अच्छा तो लॉन्गवुड कौन सी गाड़ी लाया था? लॉन्गवुड वाली गाड़ी कहाँ है? एक सेकंड। मालूम नहीं। कोबरा तुम्हारी आवाज नहीं आ रही रेडियो पे, तुम्हारे हाथ ही हिल रहे बस। मैं रेडियो 6 कर रहा हूं, रेडियो 6 पे बात कर अच्छा अच्छा। क्या है आपके मुंह पे? डिमांड ऑफ रॉबर्स। तुम अपने मास्क एक सेकंड अपने मास्क पे ही थूक रहे, तुम्हारे मुंह पे ही आ रही है तुम्हारा पूरा सलाइवा। There are 3 robbers, no additional. मैं? You asking me? Meow. Yeah. Few minutes ago you were wearing LSPD stuff. I'm FOL, bro. Field Operations Lead. Fuck this. अच्छा। Yes, sir. Whenever I see you, I remember the good old days we had. I can even wear this outfit. गाड़ी रोक बहन का लौड़ा है, बंदूक अंदर रख दे। रो। सर अब नहीं होता ऐसा। 464 additional needed 490. अब नहीं बोलते गाड़ी रोक। सर जब आप कैडेट थे तब सर तब जब आप कैडेट थे तब कौन था चीफ या कैप्टन? रवि का। Dispatch, can you tell me the correct? And you're in on the Great ocean. Little bank. जिसने अभी तक dispatch पे अपने आप को अटैच नहीं किया है, प्लीज अटैच कर लो। इट्स द लास्ट कॉल। यस मेरा पार्टनर Sir. कहाँ पर अटैच करना है अभी? हाँ बट कौन से कॉल पे? नीचे वाला पॉलिटो बैंक रॉबरी। ऊपर वाला। सर जी गाड़ी खड़ी कर दूं? Did anyone take the vehicle evidence and flag the vehicle? 390. BCD। बेटे रुकोगे तुम? हौसी दे ज्यादा। ये ग्रेट ओशन हाईवे वाला रेप्लिका। The vehicle has been not flagged. What are you doing, cadets? दो तो आ गई भाई। भैया थोड़ा सा संभाल लो यार, कैरेट्स को तुम्हारे ऊपर छोड़ा है। अरे हर्ष कर रहा इसको वो कर रहा फ्लैग कर रहा। संभालो भाई। Who was negotiating officer? पागल हैं ये, कितना अनर्थ हो रहा है यार। सर बोलो। Negotiating officer on this radio. The candidate is negotiation. वो सफेद बाल वाले इधर आइयो, इधर आइयो। Dispatch हमें 10-2। 10-4, yeah. कौन सा रेडियो 5 ना? एक सेकंड का मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा। सॉरी 25 DQJ बता दिया ठीक है। अच्छा भाई दो बाइक।
वैसे हाँ भाई हम क्या कह रहे थे अगली बार हमको एडी लाइट हम इनको गोली मार देंगे अगर हमको पकड़े दोबारा हमारे अंदर है ये मुफ्त में 29920 इंडिया कॉल दे दो वो तो अंदर है गोली मारेगा तू रहे आज लोग क्या बात कर रहे हो बताओ सर गलत बात है ना ये तो सर मैं कह रहा हूं कमांडिंग ऑफिसर लेट मी नो व्हेन यू आर रेडी जब तक बाइजन है तब तक एक्सप्लोरर प्राइमरी स्विच किया तो फिर उस हिसाब से प्राइमरी चलानी है गाड़ी किसी ने भी ए चलानी है ठीक है यस ब्रो ए फ्रॉम सर दे आर रेडी फॉर रेडी लॉन्गवुड सर व्हाट स्लॉट 20 ये कलर बदल ले लॉन्गवुड सर इज ऑफ ड्यूटी डूड गुस्सा आता देख के गुस्सा आता तेरे को ठीक है You carry on the chase, air one gonna join in 1 minute, okay? अरे 97 उसकी गैंग बड़ी तरह लोकेशन देने का चलती नहीं है क्या 4-1 to dispatch, I'm still in 76, give me like 2 minutes. Sir, are you guys ready? Direct to the negotiating officer, please hold them for a bit. Form the code. Oh, can I open fire? सर देखो अगर हम पिस्टल चलाएंगे तो आप क्या चलाएंगे अंदर रहने गाड़ी Okay, me and Jimmy will be the hostage unit. Just you know. बेटी ओ पुलिस वाली बेटी Attend on that. Bike units will remain last for now. सर अगर हम बोलो आसमान चलाएंगे तो आप Negotiating unit, please tell me their like class of weapon. साले चौथी क्लास में तो तू फेल हो गया था क्या Chandra. These guys are asking class 1 चलाएंगे तो class 1 चलेगा. You guys are ready for the ET? Yes bro, yes. They all are ready for the ET. Just all units ready? बस 1 मिनट हंस को बुला दे आगे तो खड़ा है 1 मिनट Hans sir, they are asking for you. तो चुम्मी लेनी है क्या मेरी क्या पता सर सर जी just a question आंसर अगर हम पिस्टल चलाएंगे तो आप क्या चलाओगे पिस्तौल हमें लगा वैसा कुछ होगा चलो ठीक है बात में रहना बस 4-1 + 1 10 23. मजाक कर रहे थे यार देख ही लगते हैं कितना ग्राइंड होता है EFT में आज हो जाए EFT स्टडी के आएंगे यहाँ पर EFT में नहीं होता तो यहाँ आ जाते हैं Units get ready. इधर जाओ उधर कवर में जाओ. अरीना वाले जीतते हैं आज हो जाए कैसे? वर्सेस अरीना जॉइंट नहीं है नहीं जॉइंट है आप ले रहे हो ठीक है. You're looking so beautiful. Jimmy, come in my vehicle. Me, ma'am is taking hostage. Ajo. Okay, so 436 going to be in that is ET. Hans sir, can I take over the like primary because I'm an explorer. Hey, you know. जी बेटा ET on the air one. तुम कम दोगे ठीक है. Make it 15 seconds, sir. यार मैं होता तो कब का आता यार क्या इतनी अरे सर हम आ गए थे सर आप समझिए 2 कैडेट्स हैं उनको थोड़ी ट्रेनिंग दे रहे थे. तो 1-1 टू डिस्पैच कमांडिंग ऑफिसर कैडेट को कोड रेड अगर हुआ कैडेट फॉल बैक करेगा कि रहेगा रहेगा चलेगी उस पे तो रहेगा कैडेट गांड मारेगा ओए होए होए होए. बाय द वे आई कैन सी सो मेनी यूनिट्स एक बार बताओ कितने लोग हैं पर डिस्पैच कॉल देखो डिस्पैच कॉल पे जो लोग असाइन नहीं है बैक ऑफ 12 minutes. 4-1 + 1 will be taking the hostage sir. Activity. The living Air one. outbound. 436 going for the primary. चलो. But visuals heading northbound Great Ocean Highway. Render. Air one. Air will take over the comms. Nobody is ground units. जान का दे. The vehicle is already busted up. Vehicle gonna be heading northeast Great Ocean Highways. overtake me overtake the Mustang Sending it straight. अब बाइक यूनिट आप लास्ट में रहो जब तक वो व्हीकल स्विच नहीं करते 10%. Recklessly driving. Primary had a 50, nobody. Secondary had a 50. Vehicle continuing still straight northeast on Great Ocean. वो गाड़ी पानी left will be clear for you. Gonna be heading towards Inkur tunnels. यार पानी में तो नहीं गई ना. बाइक यूनिट तुम जाओ मैं देखता हूं इनको सिर्फ नीड 91 8 Still continuing straight. लगाई थी हो जाता. Vehicle in the tunnels northbound Great Ocean. Turn off your Kotus bike.
Left will be clear. About Great Ocean, heading straight Charger northbound. requesting primary. Explorer unit. Explorer left will be clear for you. And 4. Still sending it straight towards Palito north. Slowing down currently, wrong lane of traffic. Taking the primary charger. Bison struggling, sending northeast. Palito. जरा बाजू से लेना चाहिए छोड़ो भाई चार्जर करें. Yeah, what's the 20 for the 18? It's gonna be north. Currently northeast, Great Ocean, sending it towards Palito. I see one extra officer on dispatch call. Whoever assigned himself or herself at the end, fall back. I repeat, fall back. Tell for me and Ash will fall back then. Fall back. कहाँ जा रहा है? पलीडो जा रहे हैं सर. Palito. बीच पे क्या? Be advised. Negative. Be advised. Heading Chicken towards factory the- shootout हो सकता है. Yeah, I know. पर रात को भी हुआ था वहाँ पर. Chicken factory code red. Explorer देख के ना जरा. Hand 4. अरे वेस्ट है क्या Slowing down. Yeah, it's chicken factory boys. Get ready. बाइक ही निकाल. Guys, be ready, class 2. गाड़ी वो they are exiting their vehicle. Train tracks everyone. Train tracks. हाँ ठीक है हो comes Aarsh 1 minute. Dispatch gather up in अच्छा one अच्छा place बैठो over बैठो बैठो there. बैठो. Count how many are you on the ground and let me know. ले इधर I इधर am इधर. back at here to take some supplies. अरे वेस्ट है ना Cobra, I'm giving you the assignment. सबको Bikes, gather bikes. up We और got एक bikes. We got bikes. We got bikes at the back. I'll be They are escaping ray. इसको हटा. escaping. One of the We got 3 bikes at the back. Dispatch. इसको हटा, It's इसको not a PD code पे red, I रखो. guess. इसको PD. They're switching bikes. I need bikes on the tracks. Is इसको that? स्लिम जिम करो. 10-4. इसको स्लिम जिम करो. बैठो इसके अंदर. Sir, got eyes Slim on jim one. करो. वहीं पर ही देखना वो they might Just shoot you splitting back up. as well. Okay? I need 2 bike units ASAP. I guess there is one vehicle also coming to send. Never mind, 74. Matters. कुछ आवाज नहीं Slim jim करो. Slim jim करो. Slim jim करो गाड़ी को. क्या कर Slim jim is lock picking. गाड़ी के अंदर बैठो और You want slim me to jim take out करो. a second iron? Ping for slim jim. Negative. 3 bikes हैं. 3 bikes हैं. Securing the bison 436+1. Do you need the air one? कौन से वाले में चाहिए बताओ? सॉरी गाइस मैं चैट नहीं देख पा रहा यार. दुर्यु ये कहाँ में से वो रखता है चुना से सारी से. 3 split up है सर. नीले वाला लौंडा तो निकल लिया. बाइक यूनिट आपके पास किस पे विजुअल है? सफेद वाले अभी जा रहा है ग्रेट ओशन हाईवे साउथ वेस्ट गोइंग टुवर्ड्स द सिटी. 10-4. I'll secure our officer. जिमी आप गाड़ी पलीटू पीडी लाओ मैं ऑफिसर सिक्योर करता हूँ. 10. The blue one got away. Right. Air one attaching to Cobra over here. That is Zankudo. बताओ गलती किसकी है? नहीं तुम बताओ. You good? Good? Yeah, I'm good. You what about you? सही हो ना भाई? Okay, I'm sorry. I'm so sorry. I was. ना you good. आपकी कार like it is a freaking lightweight vehicle. Yeah, I'm good. Actually थोड़ा सा ना headache हो गया था तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं. तुम बढ़िया हो ना? हाँ. बस Gucci. They're entering inside the predator base. 20. Okay. जिमी वो कार आपको उधर लेके जानी है. बैकअप बुला रहा है एक बंदा बैकअप बुला रहा है. कोई बात नहीं. What's your 20? रेलवे ट्रैक प्लीटो. हम प्लीटो पीडी के आगे वाली ट्रेन ट्रैक पे सेंड फ्रेम करेंगे. I think the guy I am chasing is distracting me and some other units. रिपीट रहेगा. कोबरा बाइक कहाँ से निकलती है सैंडीपीडी पे? सर वो सामने वाला एरिया जहाँ पर वो है विकलांग वाला. So where the wheelchair is fixed. Let me think. Oil mine. Yes. Oil mine चले गए होगे.
Girls. कोबरा तेरे ऊपर हूँ मैं. Officer secure. 10 4. He is in comms. बार-बार रेडियो पे टच कर रहा है वो. According to north of Toledo, PD, I mean Toledo, middle lane. Morning lane towards gas station. On middle lane. Straight side of. Focus on one, okay? Focus on this guy. Yeah, you guys focus on one. I am focusing on one. Copy that. 10 4 sir. And if I can get one unit, that would be helpful. मैं आ रहा हूँ तो मेरे को 20 देता रहा मैं आ रहा हूँ. Yeah, what was that explosion? It was me. RX-7 pit us hard, like let's it. 10-4. He ran away. आए थे मेरे सामने सर, मेरे को लगा नॉर्मल बंदा है. रिपेयर किट लो. तो तुम चूते हो. हाँ मेरे पास है, कर दूं? मेरे वाले भाई यूनिट प्राइमरी सेकेंडरी लो. रिपेयर किट चाहिए. 20 अपडेट कर मेरे को. सर मेरी गाड़ी फट गई सर. Can't do anything, sorry. Okay, any visuals on anyone? I need the 20. Sinara Road, southeast bound towards the city. 10 for got it. Come on. Jalen, you still on the bike or no? Yes or no? अच्छा बैठ जा. 24 I was with it. We have one suspect currently chasing Sinara Road southbound towards the city. I'm gonna be 76. Code 1 पे रहो, सारे code 1 पे रहो, please. Right. Please. There's one more thing. There is a black in color RX-7, matte black. 10 for interfere, right? You are authorized to put him down. Matte black RX-7. अभी मेरे सामने. नहीं सामने ही था यार. फिर मैं पैदल चल रहा था. Everyone descending for visuals. keep updating the 20. कोई नहीं जाओ. तीन नहीं It's gonna be southbound on the Elgin Avenue, straight towards the Elgin. You good bike unit? Casino. I'm good. Here. यार जो बाइक चल रहा है ना प्लीज ब्रेक ऑन रेस्ट प्लस. अब चलाएंगे हम FPP में. Giving up comms for the bike. It's gonna be Alta Street westbound. Vinewood Hills on the west boulevard towards the. E+ ये सब ना. So you have to set it from your this sets, you know. Slowing down again and right inside the alley. Set, Exit the alleyway westbound. Yeah. Cobra has I have eyes on him. Yellow. Yeah, the 50. Chal probably back after repair. Getting on bike. Getting straight. सीधा जा रहा है. Took out of the alleyway round. Back from the alleyway. Hiding over here. There you go. Alright, these are the Spanish Avenue. I have no visuals as of now. We went into an alley. Any yellow blue tracker. Blue tracker? 10 forgot it. Alright, this is the Rockford House Avenue. Southbound Backside of the Rockford. taking a. It's fine. Everyone will take the comms here. Harvick Avenue near the Rockford, sending it straight towards the Pacific. There's a linkage. Turn after clothing, Vinewood. Eastbound towards the Pinkage. Crossing the Pinkage bank towards the Elgin. Still straight towards the Mirror Park. Slowing down near the Elgin. Taking a left, opposite lanes of travel, LS Freeway. Yes, tertiary. I'll say tertiary. Lanes of travel, LS Freeway. Air 120% on fuel. Sending it straight eastbound out of the city, LS Freeway towards the Palito. Teen bike, nice. Urban descending for visuals. If charger will be intersecting. Guy is slowing down. He's on a phone call. नहीं चल. अरे अलीशा भी तो. Payphone is calling for backup. रख दे वापस गाड़ी रख दे. Chat. वो रखा नहीं गाने अब चल ही जाते तब.
And 100% sure he's calling for backup, either call or radio. Yeah, Yes, क्या भाई he's calling बाजू में for आ गया backup. बैकअप। चलो भाई एपीडी Air1 breaking ऊपर up for चढ़ेगा तो refuel बोल। Sandy. नहीं चढ़ा. गड़। Air1 is out for refuel, okay? चलो मार्क पे। अभी रिफिल भी करना है। Info कर लेंगे do not bounce on a freeway towards ये A+ पे जा रही है ना, S+ पे मैं ओवरटेक कर रहा हूँ इसको। A+ ही करेंगे। A+ है सर, A+ है। मार्च लगाते रहो 20 Merging north on Sonora. इधर चलो। 10 एंकल ब्रेक क्या? यूटर बैकग्राउंड। 74. Pass in the middle band. Primary, secondary, tertiary bike units मेरे से. एडी का ट्रैक लगा। Still continuing north going towards Mojito. एडी? फलीटो जा रहा है ना। there is a black color jeep behind हाँ us. इन्वॉल्व नहीं है, अभी तक इन्वॉल्व नहीं है. अरे ये तो मैं गार्ड मारूंगा उसकी. मैं मार दूंगा। Info sir. Pass wayfield already. Going towards Mojito. Giving calls on radio. ये बेचारी अलीक्ष Vehicle slowing down. अलीशा क्या? ये हमारे जो पीछे मोहतरमा बैठी देखिए यार नीचे खुदाएगा. अब निकाल से नहीं निकल सकते अगर if he puts into the pit. देखो कोई नहीं, रॉन्ग साइड पे मैं हूँ। सुनो एक काम चलेगा। Guys slowing down again on a phone call again. और अलीशा मैम। ओ भाई रुको यार एक फोटो निकाल दे तो। एक कर लो तुम। Pass in Toledo gas. 436 on the way, just 30 right. निकाल दी फोटो। ये भी सही है। एक ऐसा नीचे रख के नहीं निकाल सकते क्या? Yeah, I saw that. 436 attach gate T. बाइक यूनिट बढ़िया। Middle lane of Toledo continuing southwest. Hans will you reattach? Class 1 in hand, okay? I'm parallel. I'll just run parallel just in case. अलीशा मैम। Going back south. लास्ट हीलिंग। लेकिन कोई आता है क्या कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन पिट जॉन। Air1 back on field, semi 20. बढ़िया. Sonora, थोड़ा ना तेज बोलना। मतलब पलीटो से अरे अपने मैंने ईयरफोन्स पहन लिया ना तो वो गाने बज रहे हैं। एक फुल वो तू आगे जाके कलर चेक कर। ये था बढ़िया। जा रहा हूँ. ये कब से है? बाइक आप पहले जाओ। जब तुम गाड़ी रख रहे थे ना तो तब मैं लेने जा रहा था। अच्छा उसको और बोल देगी उधर Lateral clear dispatch. जस्ट एंट्री की टर्न्स ना साउथ से करो। देख रहे हैं 4-4 भाई। उड़ा दिया। Sorry. अरे भाई Sorry. Traveling to travel southern side. Cobra your bike armor on. 10-4. Hans you become secondary bike unit. एक back off हो गया था हमारी तरफ से. 10-4. Left लिया उसने नीचे. Keep going, Charger. Keep going. It's okay. Keep going. Hey, brother. He took the left, left dispatch. Left, he took the left. लेफ्ट लिया तो तुम राइट को जाओ। किसके पास विजुअल है आप कॉल दो हम आते हैं। मैं लाइट हाउस की तरफ Light house. I'll check the front, you check the I need light house. I need Ivan over here. I saw him. Explore on your left. झाड़ी में गया था वो। ठीक मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। उसने जंप किया। यहाँ पे गया था, नीचे गया था, कुदाया लगता है। Yo, there is a Kuruma. Yep, he's inside the house. I see him.
Kuruma in the front, lighthouse. Oh, पीछे lighthouse में पीछे. There's a boat. Boat. यहाँ पर बोट निकाल सकते हैं क्या? यहाँ पर बोट निकाल सकते हैं? टाइम लगता है, निकल सकते हो वहाँ से, निकाल सकते हो. Gonna take you 40 seconds. Okay, I won't go behind them. Go behind them. आ रहा हूँ मैं LSP पे. ये कौन है साइकिलर? यार वो पांच जब तक तो आएगा they left man. They went towards the right side of the entire map. हमारी फुल एपी लो वाला सर मेरे को कुछ समझ ला रहा. पॉलिटो क्या सिटी की तरफ गया मुझे बताओ. नहीं पानी में गया वो. पानी में किस तरफ? लाइट हाउस. Yes. Auto take out boat. There are some guys here. What the? तुम भी उन लोगों को चेक करो लाइट हाउस. क्या कर रहे हो? The fuck is going on? सुन देख जहाँ हमारा पूरा साउथ मैप पूरा ईस्ट साइड मेरे को एक यूनिट चाहिए पेट्रोल करते हुए. They will dock themselves. बाइक वाला बोट आता ना उसमें. लास्ट बोट में गया ना वो. क्या हुआ है सर? नहीं उसमें क्या था? The guy ran in a sea shark. ये चेरी वाला बंदा बोले sea shark में लड़ गया. चेरी किस तरफ गया था, लेफ्ट या राइट? I need one unit to check human labs for any kind of car parked at human labs. जिमी इन थोड़ा जल्दी करना. जिमी गाड़ी में. Jimmy. Sir. Jimmy coming or not? Okay, I'm leaving it. ऐसा क्या? One of them is swinging. It's got eyes. 120. Southbound sending it. jet ski में भागा रहा है. 10 for key visuals, okay? And for I'm gonna go from the. Hadi. ऐसा क्या? ठीक है. बोल सकते हो ऐसा नहीं, बस थोड़ा एक्सप्रेशन. On my track, below me, okay? अरे I'll be following from the cross. Yes. भाई गाड़ी पूरी नहीं. I'm ascending. He might shoot me. I feel like so. You are in a air one. Why are you scared? इसलिए तो ऊपर हूँ. On the top. Yeah. Always. बोल सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं. अभी मेरी बात सुनो डिस्पैच. ओके गो ऑन. आप बोलो सर, आप बोलो. मेरी बात सुनो, वो पक्का व्हीकल स्विच करेगा, ठीक है? करेगा ही करेगा. तो बी प्रिपेयर्ड. जहाँ भी जा रहा है मेरे को एक व्हीकल यूनिट चाहिए पैरेलल चलते हुए साथ. 10-4 sir. What's the current 20? ह्यूमन लैब्स के एकदम ऑपोजिट में देखो, मेरे ट्रैकर के एकदम नीचे ही है. आई थिंक वो एलएसआई की तरफ जाएगा, डॉक्स की तरफ जाएगा. लेफ्ट साइड. बेसिकली पानी में है ना वो. पानी में ही है, मुझे लग रहा है डॉक्स की तरफ जाएगा घुमा के. तो सब डॉक्स आओ. I want everyone to go docks right now. 76. You're 10 for 76. स्प्लैट्स वाला पता है तुमको, डॉकिंग यार्ड वहाँ पे जा सकता है, ठीक है? And I am 40% on fuel. हाँ. 10 मिनट. स्प्लैट्स के बाजू में. गिव अप करो फटाफट. करता हूँ. मेरे मुंह से नहीं है वो. Just 70 on max speed. करता हूँ. सर जाओ जहाँ पर बोला है. I will be staying parallel with the air one. देखो बोट का स्पीड 60 to 80 माइल्स पर आवर है, जेट स्की का 90 है, ठीक है? 10-4 सर. थैंक यू फॉर द जीके. कायदे से. कितने यूनिट्स जा चुके हैं वहाँ पर? 6 docks. 26 dogs. He's still heading towards the docks. Sage. यस, घुमा के लेगा. मैं तुम डॉग्स के एंड में आ जाता. ये जी-वैगन किसकी है पीछे? नहीं, it's fine. उनका नहीं है, already interrogated them. कुछ. I want at least 4 units at docks. On my way, sir.
तुम्हारा हुआ क्या था, क्या उसका होता है, तुम उसकी तरफ चले गए डॉग्स थे पे भी ऑल थोड़ा वाइट पे ऐसे मार दिया। थोड़े लोग डोडो की तरफ जाओ, थोड़े लोग ट्यूनर की तरफ, थोड़े लोग डॉग्स की तरफ, फुल डॉग्स को घेरो। मैं मेन डॉग्स पे जा रहा, जो लाइक मेन एंट्रेंस होती है ना स्टार्टिंग की उधर। ठीक ठीक। मैं की 605 direct to Eddie Brock, sir. Wow. What's 20? In a chase. I'm almost 20. I'm 23 at dogs. अरे अभी भी चला के जा रहा है उस तरफ। The bike unit behind me, like there is a bike chasing. No, never mind. कॉम्स मत दिया करो अगर नहीं वैलिड है तो। वो डॉग्स की तरफ अभी भी जाएगा and I'm 30% on fuel. I'm 23 at dogs. At tuner. यार सिप्रेस बोला था मैंने, सिप्रेस के पीछे कौन है? मेरे को लग रहा है वहीं पे गई है। 50-50 चांस। Towards the dog. घुमा रहा है पूरा। राइट लिया, अंदर घुसाएगा, कैनल्स के अंदर घुसाएगा। विजुअल्स। बोट निकालो ना। हाँ बोट पीछे ही आ रही है। हाँ एक बार ये बताओ मुझे। 0.14 miles. I got visuals. They're heading towards inside it. इसकी तरफ से कैनल्स भगा लो, जो भी ग्राउंडेड एरिया से गो टू कैनल। पीछे वाला कैनल्स अपना पीछे वाला, पीछे के पीछे वाला। एक मिनट होल्ड करना। I'm trying to catch up. I'm red on fuel. He's behind Cypress, as I told you. Got it, got it. Full canals, full water. सिटी के बीच में जो canals है ना, उसके अंदर जा रहे हो। ठीक। कैसा सिटी के अंदर वाला कैनल्स नहीं गया है, वेस्ट पीछे वाला गया है। हाँ पता है, मैंने देखा था। Oh no, I might fuck up. लेफ्ट लिया, वेस्ट बाउंड जा रहा है। हाँ डोडो के पास वाला। डोडो डॉग्स जंप क्या किधर जा रहा है अभी? वेस्ट बाउंड ही जा रहा है, चम स्ट्रीट के पास है। इधर जाएगा तुम्हारा एलएसए जाएगा या तो डोडो में रुकेगा। आ रहा हूँ मैं, पीछे ही हूँ। एल अप्रोच चले सही है। आयरन बिल्कुल तेरे नीचे ही है ना वो? बिल्कुल मेरे नीचे ही है। 0.14 miles पे हूँ मैं। एलएसआई लिया आई थिंक, या तो डोडो या तो एलएसआई। एलएसआई ले रहा है, राइट लिया एलएसआई। या नहीं, प्लीज कंफ्यूजिंग मी, थोड़ा वेट करना ठीक है। एक जीप है डोडो पे एक जीप है। जीप है, फोकस ऑन द जीप। तो अकेला है। Got the visuals. I am solo. We have minor visuals. थोड़ा सा रख आयरन, थोड़ा रखा। 20% फ्यूल रख लूंगा 2 मिनट। रख कोई बात नहीं, मेडे करवा लियो, थोड़ा वो ग्लाइड करके एयरपोर्ट पे लैंड कर दियो। घुमा रहा है, एलएसआई घुमा रहा है। Got him, got visuals. जीप यहाँ खड़ी है, उसने मेरी बाइक बंद कर दिया। चिपक के आओ, शॉर्टकट पड़ेगा। मिल गया। तो रिफिल मार चल। मैं रिफिल जान रहा हूँ। मैं भी लो, आई एम आल्सो लो ऑन फ्यूल। हाँ मैं भी बता रहा हूँ, ये वाला से लो ऑन फ्यूल। आई नीड अ रिप्लेसमेंट। एडी या कोई मेरे को भेजो। आई कम एट एलएसआई एयरपोर्ट के अंदर आओ जल्दी, 2 यूनिट। जो पानी पे विजुअल्स रखना, ओके? हाँ कॉम्स ले रहे हैं हम लोग। वो लास्ट westbound, exact parallel to runway 1. ये तो आते यूसी वसपुची बीच पहुंच। व्हीकल यूनिट वसपुची जा रहा वसपुची बीच जा रहा हूं। left side of LSI reporting you northbound. We'll be going towards east from this side of LSI.
I need one car unit in replacement for mine. He's still continuing north on the side of LSIA. Yeah, he's gun pointing at us. कोई बात नहीं, तुम भी उल्टा गन पॉइंट करो. क्लास चूज. उंगली दिखा रहा है, गन पॉइंट नहीं कर रहा. चल. हाँ. शूट आउट? नहीं, कुछ अलग है, कुछ अलग है. 10-4. बाइक तू जाना. मैं आधा टाइम तो कंफ्यूज घूम रहा हूँ. Was AD on your radio in your situation? No, not sure. वास्पुची बीच जा रहा, सीधा वास्पुची जा रहा है वो. 10-4. बाइक इधर आ, follow me, follow charger. 10-4. He's by the pier, going towards pier. Dean's World. Continuing north. दो इन एडी तू वहाँ पर आ जा. He's continuing towards the yacht. Guys, AD was in your situation. He was involved in the robbery. Okay, can you cover at pier, Dean's World, in a charger? Parallel to the yacht. अरे क्या सेकंड की तो direct to Jalen. 10-4, go ahead. It's the bike that you call for. I mean, Yeah, it's near the lighthouse. Heading towards southwest. Lighthouse catfish. Oh, he took a U-turn. He's coming back to Dean's World. He's roaming around the yacht. I believe he's going inside the yacht. Yeah, we got long guys. टनल में जाएगा, वास्पुची वाली टनल है जो कनाल्स वाली. समझ गया. उधर ही खड़ा हूँ मैं. मैं जो सिटी होती है ना जी, ये जो कैनाल्स में जाती है, मैं उधर हूँ. जहाँ पे माइकल की लड़की पोर्नो बनाते पकड़ी गई थी. हाँ, समझ गया. Continuing northeast, inside Red Desert Avenue. I'm in the tunnels. We are following him to the hill. Got the visuals, especially below tunnels. Gonna go towards south. Left लिया वो. He took a left. और इसमें कौन एंकल ब्रेक करता है? We cannot turn, man. Long eyes. If somebody is free, can somebody slim jim a fucking jet ski, please, for God's sake? Right. He's continuing in Vespucci Canal. Canals, whatever. सीधा जा रहा है. 2 times occupied है. Right लिया. 20 बहुत बढ़िया है. 46 for heading on. लेफ्ट के राइट आर्श, जल्दी बोल. राइट लिया. नॉर्थ प्रॉस्पेरिटी. अब फिर से कहाँ जा रहा है? लेफ्ट लिया. अपडेट मी 20. VCB. इधर है प्रॉस्पेरिटी, जो फर्स्ट वाली एकदम वो होती है. माँ की चूत बोल रहा है, चूतिया. 10-4. Exiting Vespucci Canals. Got him. वापस जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है वापस. Going towards beach. तो अकेला है, Hans, be careful. Yeah, he's trying to continue. हाँ? कर रहा हूँ. I got hurt, please, guys. He's breaking around. ट्रेन चलिए. तेरा लाभ खराब. मैं पियर आ रहा हूँ वापस, okay? 605 direct to 101. Send it. Retrieve a charger. Should I bring it into 80? Keep it in the garage. Keep it in the PD garage. Okay. And एक बाइक भी है वहाँ पे लाइट हाउस पे मिल जाएगी आपको बाइक. Currently at pier. Left he's below Dean's World. बाहर निकला. Okay. बाहर बता दे रहा किधर है. BBMC राइट हैंड साइड लाइट हाउस के में. कोड रेड वाली पियर. Dean's World वाली. नहीं, Dean's World वाली. Sorry, कोड रेड वाली नहीं, Dean's World वाली. दिख गया बात. He is trying कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए इनमें से, बट हो जाएगा. मेरे को और 2 यूनिट चाहिए, कार यूनिट्स. वापस जा रहा है टनल में, वापस जा रहा है. If we are going to get some jet skis. Go back to canals. Vespucci Canals. 10-4. ये फिर एंकल तोड़ेगा. Disregard shots, fine. 10-4.
बताना, अंदर कुछ सीधी दिखी नहीं मेरे को। सीधा 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 निकला, दूसरी साइड निकला। हाँ निकला, अभी निकला। वही एवन चेक दैट। मिल गया, टेंशन मत ले। Sir, hold on, we're just getting this. एरवन मेरे पे ना टर्निंग की प्रॉब्लम है, ठीक है? तेरे को थोड़ा विजुअल रखना पड़ेगा यहाँ पे। बस स्पेस बार। हाँ वो कर रहा हूँ मैं, वही कर रहा हूँ। अब पोस्ट गार्ड, अब योर चीफ। 10-4 सर। राइट लिया, वापस राइट लेगा, छुआ, ओ ठुका, थोड़ा ठुका, वापस टनल के अंदर जाएगा। अरे मैं जेट स्की लेके आ रहा हूँ, रुको। हाँ बोर्ड जेट स्की निकाल ले वहीं से बीच से। अरे रुक रुक रुक, बर्गर शॉट के पास रुका है बंदा, ऑन फुट आएगा अभी एक जना। I'm here, बर्गर शॉट के पास में। 20 guys। दोनों उतरे बर्गर शॉट के पास। गाड़ी बर्गर शॉट पे ऑल यूनिट बर्गर शॉट। अच्छा ऑपोजिट में गाड़ी है, नहीं गाड़ी पे बैठ, गाड़ी ऑपोजिट वाले मेरे पास आई है, ठीक है? उतर तू इधर आ। क्या रिवर्स लिया, कहां जा रहा है? पास आइयो, बी बिल्डिंग के पास वाला बर्गर शॉट के पीछे। आ गया। एक बंदा बर्गर शॉट की तरफ भाग रहा है, एक बंदा हैंड्स अप करके खड़ा है। Are they on foot? एक हाँ दोनों ऑन फुट है, एक जना हैंड्स अप है, एक जना उसके तरफ बढ़, व्हाइट कलर का हुडी में वो रोल किया गन। तो उसको कवर दे, मेरे पास एक बंदा है। यस नाइस। उसमें गाड़ी में बैठा क्या सेंटिनल? बंदा ऑन फुट भाग रहा है। नहीं ये सस्पेक्ट, गाड़ी ऑन फुट है। मेरे पास सस्पेक्ट है। क्या बैकअप? के पास है, बर्गर शॉट के बाजू में। बैकअप। क्या बैकअप? या वी हैव उसका बैकअप के लिए ब्लॉक करो गाड़ी को। टेस्ट मिस्ड। बंदा टेस्ट, ड्राइवर डाउन। 10-4। Need a 91. Going for cuffs. I have one guy. अरे रंडी के बच्चे हैं क्या ले? 462. 195 ड्राइवर 195। He's in canals. टेक केयर ऑफ द नाइट। दूसरा बंदा देखो, कनाल्स में घुस जा। चला जा। चल जुटा। इस तरफ जेटकी की तरफ आएगा। उसके जेटकी में अगर वो हंस तेरे बाजू में आ रहा है। Yo, I need backup. Shut up. Sheriko is like with me. I'm the. ऊपर है। ऊपर चढ़ा, घर के अंदर घुस रहा। ऊपर घुस रहा। आ रहा लेगा एक बड़ा वाला। हाँ जंप लिया। राइट लिया, उसके बाद बर्गर शॉट के एकदम पीछे ब्लू बिल्डिंग की तरफ रेडियो कॉल दिया, फिर राइट लिया, कॉल दे रहे गाइस, बी केयरफुल। जंप किया, ठीक है? स्टेयर्स के ऊपर एकदम बर्गर शॉट के पीछे। ओके 1 सेकंड। ग्राउंड इन, आर यू फोकसिंग ऑन दैट? 10-4 उसके पीछे से भाग रहा हूँ। 99 और 99 का फेमस लोकेशन वहीं पर है, वहां से बर्गर शॉट लेफ्ट, बर्गर शॉट की तरफ जा रहा है। वो क्यों नहीं रहा है? बर्गर शॉट के एकदम सामने है। ब्रो अबे यार क्या सस्पेक्ट, गो एक्सप्लोर, जाओ उसके पीछे। 1 सस्पेक्ट लेफ्ट, जीप में 1 सस्पेक्ट है, 2 सस्पेक्ट है जीप में। क्या यार सीरियसली गाइस, नहीं हो रहा था सर। टीज करता है यार उसको। अरे हो नहीं रहा था सर, पूरा ट्राई किया। चल रथौड़ चल। 95 We lost 195 by the way. तीन सस्पेक्ट्स के साथ। को आई को मार रहा हूं, पीछे आ रहा हूं। Sending it in north last location is Boulevard. This one need 90 and we have one suspect at Burger Shot. बर्गर शॉट आ रहा हूं मैं। अगर वापस लेकर आ। हाँ पता है, उसको लेके जा रहा हूं मैं, और एक सस्पेक्ट है मेरे पास। आइस है या बीसीबी हुआ था? आइस था, लेकिन क्या कहते हैं लास्ट बताओ आइस बताओ। लास्ट में थी लॉन्ग आइस था नहीं है। ठीक है सेंड कर वहां पे, मैं ऊपर से देखता हूं यहाँ पे स्पीडिंग ब्रेकर मिलेगी तो देखता हूं। Someone check the clocking wheel back.
कोबरा मेरे को बता कि नेगोशिएशन ऑफिसर कौन था, वो कहाँ है? यहाँ पर आओ, बगल शॉट के सामने। Yeah, I am in front of Bhagata. It's VCB for the sheriff. 10-4. And this teasers. मेरे को कवर दे इधर, मेरे को इधर कवर दे। ग्राउंड यूनिट जो 2 बाइक है इधर, बगल शॉट के लेफ्ट साइड पे ब्लू गाड़ी। Air 23 at the scene, scouting around for you guys. ना खराब हो गया बेंच। क्या नीचे एरोन नीचे नीचे पैक्स ब्रदर 30-80 मेरे को रियल लॉन्डे को उठा तब भी जाएगा पूरा। बाकी बाइक कोबरा मेरे को वो भेज जो प्राइमरी है ये इसमें, उनको वेस्ट पे लेके आया 1 सस्पेक्ट। 10-4. CVP is at the Sandy. एकदम फ्रेश। किस वजह? हो नहीं सकता। Yeah, taking there. 3182-614, do you copy? 463. Sorry, 43676. Aarsh. Yes, sir. बस पूछिए। हाँ सर जाइए। Is anyone retrieve my bike? 10-4. I'm gonna just first get Alicia treated. She's been down for like 30 plus minutes. 10-4. Dispatch, did anyone retrieve my bike? Yeah, you mean bike or what? The bike and I had a code 0. Did anyone retrieve it? What was Aarsh, the ट्रीट करवा के बस पूछ वीडियो। आता सर। 10-4. Yeah.
I was just standing. How can you arrest me and all that, bro? Literally the cop told you 5 times to move away, and you're not moving away. So please don't be a kid and go according to the RP. Do RP on it. If you have conflict on it, do RP. Don't cry about it. Do RP. Macdump season, too much of like on a small reason. Macdump season, according to me, it's my point. Rest of the points were given by other people in the PD. I just had one point. Macdump season and shootout on a small thing, on a very small RP situation. Basically, it's wrong or right. I won't say that I am not a judge of that, but I will say one thing कि पता चलता है कि that you are looking for excuses for gunplay. So we are not fools. We admins and staff and other cops, many of them are not fools that they won't know that you are actually looking for GTA Online in RP. That on a small car scratch or on a small arrest or on a drug sale arrest or a small arrest like that, you are starting shooting and everything. Pata chalta hai that, and next you can say that okay, it's my RP, I am a gang member and all that, but tell that to somebody else who doesn't know RP. So yep, that should be avoided. That's all from the PD side. Ash, if there are any other points, tell them. I think I have covered all of them which were given. एक पॉइंट है, वन पॉइंट मोर. एक दो सिनेरियोज में आजकल क्या हो रहा है, रॉबरीज इंक्रीज हुई हैं. सो आउटसाइड एड जो है ना, इफ़ यू नो फक अप योर थर्माइट्स जो आप लेके आए हो और आप उसके बाद बाहर से अपना कोई आउटसाइड एड लेके आ रहे हो, दैट वोंट बी अलाउड. सो हम अभी दो सिचुएशन ऐसी आई थी, इन आर पे टैकल करिए, बट आई जस्ट सजेस्ट यू हेड्स अप कि वो चीज़ मत करो. दैट वुड बी ग्रेट. दैट इज वो साइड से ही वो Just any points? Any other police chief wants to, sorry, any police high command wants to speak? 750 आगे मैं कोबरा कल की सिचुएशन No, that is all good. Yeah, I just had one point. This is what I think. Just because you are arrested, that doesn't mean that you have to prove a point that you have to go back and kill those cops after you have been released. Because believe me, we arrest a lot of people, and if we have to deal with all of you coming back at us shooting us, that'll be super weird. कोबरा बे यार यहाँ पे ही बैठ गए वीडी. ठीक है अपन भी Basically, चलो हो जा. if you're having an RP with a particular officer that you hate in RP and you're having a storyline with that officer, I should be then bike of using that future. as an excuse, Messages don't just there. shoot down other officers who are a part of the police department just because they're an officer. If you're having a revenge or a nemesis cop or something with a particular character, just stick to that rather than targeting everyone who's a part of the department. So yeah. Yeah, one more thing. अगर you are searching for a guy, right, and आप जो भी है, ठीक है, you are hunting down a cop, पर दूसरे cops जो हैं who are peaceful, अपने code one पे हैं, you go by them and you say hello sir and how are you, and magnum them on code one, ठीक है. तो प्लीज़ अगर वो अवॉइड करो. इफ़ यू वांट टेक रिवेंज, बिल्ड आरपी फॉर दैट वुड बी वेलकम्ड by the PD itself. But ये थोड़ा सा अगर avoid हो जाए कि how are you sir and mere interaction just to initiate very mere initiation,
सो ये प्लीज़ अगर कम कर दो तो वुड बी ग्रेट। रिवेंज के लिए और भी तरीके हैं दैट कैन बी इन आरपी अच्छे बिल्ड हो सकते हैं। और Okay. So, any more police, anything you want to say? It's over, right? हो गया ना पुलिस का? I just want to say, Yes, I just want to say one important, really important thing. For every scenario you do in the city, right? The police responds to a particular way according to their things, and the criminals respond like they do their own thing. It will be the best interest in both the parties that everything that we do remains in the city. And I want to emphasize this all the time कि जो भी हम करते हैं हमारे repercussions, हमारे actions, जो भी issues है, we try to deal everything in the city itself. So it becomes very smooth, and there is a continuation of a story involved, rather than taking outside the city. That's the only thing, very important thing that I want. Okay. Guys, EMS के कोई high command है तो थोड़ा आ जाओ इधर. Just ask for this request. Sir, from EMS side, Electro will be speaking. Lokesh, देखो अगर request to हाँ speak क्या रिक्वेस्ट कर दो ना आप इलेक्ट्रो लेट मी चेक And also from DOJ side, I think whoever is there, where is VV? VV is there? DOJ के साइड में किसी को बात करना है वो रिक्वेस्ट पूछो. शोकेन इज रिक्वेस्टिंग राइट Ask request. राजपूत EV is here. EV is also here. बीबी रिक्वेस्ट कर दो ना आप आई विल गिव द एक्सेस From DOJ. EMS. Yeah, wait. EMS कौन आया है? Hello there. Yeah. Yes. Electro, Am I you can audible? go ahead. Yeah. Tell us about EMS. What's happening and what are the things you're left. So first of all, greetings from EMS to all the people in city and Tao and the admin panel. So basically, I have some points here that has to be raised from the department point of view. So guys, I have to inform you one thing to the all people. Currently, the management of the EMS has changed, and the people also are changed. So we have new people now, and those people are observing some things, and they have a concern over it. Basically, there is a point कि यहाँ पर लोग ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि अगर आप EMS को RP देने आते हैं तो आप प्लीज़ उसको एक डॉक्टर्स को जो भी आपको पिल बॉक्स पे दिखते हैं आप उनको खुद भी अप्रोच कर सकते हैं. अदर देन दैट इफ अ डॉक्टर डजंट अप्रोच यू इन एनी काइंड ऑफ वे आप सीधे वहाँ पर जाके चेक इन कर लेते हैं. ये चीज़ हर कम्युनिटी मीटिंग में EMS रेस करती है एंड many people understand that. I'm not talking about all the people, but there are some people that don't understand this point कि यहाँ पर आप check in कर लेते हैं सीधे and you cut your RP with EMS basically. And also if EMS tries to like contact you in any scenario and if they're trying to like gather some RP from your side, then there are some people that gets violent and they try to do gunplay, and those people are reported to the admins also. But the thing is कि everything has not meant to be reported to the admins. आपको अपने साइड से कुछ चीज़ें दिखानी पड़ेंगी. Also the EMS department wants you to be like responding to these situations according to you. But यहाँ पर हम लोग केवल एक चीज़ चाहते हैं कि EMS भी अपनी RP enjoy करे and the people of city also enjoys their RP. अदर देन दिस अ पॉइंट इज कि यहाँ पर एक नया रेगुलेशन EMS ने यहाँ पर एक्चुअली अभी इम्प्लीमेंट किया है द डिपार्टमेंट फंक्शनिंग. दैट इज GSW केसेस जो होते हैं यानी गन शॉट वुंड्स केसेस जो आते हैं EMS के पास. एक्चुअली इफ़ यू सी दैट ऑन अ पॉइंट ऑफ IRL अगर आप उस चीज़ को देखें सो द थिंग इज़ कि every time GSW case is registered in a hospital, police involvement is really necessary in that point. और उस चीज़ के लिए the necessary documents that are requested from a patient has to be sent to the hospital authorities. And many people then again gets violent and try to do the gunplay over it and not support this kind of like effort from the EMS to actually enhance the RP of the EMS side as well as the people who are giving at that time. So basically the PD gets also RP, you also get some RP, because at the end it is all about enjoying RP, not getting triggered and not taking it OC for that. So just enjoy your RP for that instance and give the RP to maximum people you can give. That's the point I want to raise. And other than that, many people are being observed lately that are trying to do volunteer basically without
giving the required RP to the EMS. Now, what I see here actually that the commanding or the like administrative authorities of the tasks of health related things in the city are administered by the EMS. So what I think here is the instead of doing the volunteer bribe from your side, there are regulations that has been updated and also being like broadcasted to the LSBN news to that too. कि volunteer जो भी लोग करते हैं इधर those can actually contact the EMS and grant a certificate. EMS can grant them a certificate to do the EMS volunteer thing in any case. These are all the points stuff. Hello? हेलो केविन केविन वेस्ट पूछे डॉक्टर जो हमारे हैं केविन वेस्ट पूछे इनके सपोर्ट में मैं कुछ बोलना चाहूंगा जो हमारे केविन वेस्ट पूछे हैं वो अब इस टाइम पे हेड है हेड ऑफ द हॉस्पिटल जो सब कुछ अभी इस टाइम पे संभाल रहे हैं जो केविन है जैसे कई बार होता है कि जो आदमी होता है जैसे किसी क्रिमिनल में फंसा जाता है तो ही कैन अप्रोच केविन माई सेल्फ जोली सिंह जो मैं लॉयर का कैरेक्टर है मेरा उसमें मैं अप्रोच करना चाहता हूँ मैंने एक कैरेक्टर से अप्रोच भी करा हुआ है जोली सिंह से केविन वेस्पूची को उसमें क्या हुआ था मेरा एक केस था जिसमें मैंने केविन वेस्पूची को अप्रोच करा था क्योंकि ऐसा सीन हुआ था जो मेरे विक्टिम थे मतलब मेरे जो क्लाइंट थे वो ऐसा विक्टिम थे क्योंकि पीटी की साइड से उन्हें कोई भी मेडिकल अप्रोच नहीं मिली गई थी तो मैं ऐसा केविन को अप्रोच करा इन एन आरपी मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा सिनेरियो था जिसमें मेरे जो क्लाइंट थे उनको कोई भी मेडिकल अटेंशन नहीं दी गई थी क्योंकि एक केस ऐसा था जिसमें उनको गोलियां लगी थी जो मेरे क्लाइंट थे उनको गोलियां लगी थी और उसके बावजूद उनको कोई भी मेडिकल अटेंशन नहीं मिला था तो वो भी एक पॉइंट था और आरपी इनिशिएट करने का क्योंकि कोई भी आरपी इनिशिएट कर सकता है इफ दे हैव वैलिड पॉइंट क्योंकि आरपी में आप अगर किसी चीज को घुमाओगे वो वैलिड नहीं होता जो भी आपने चीज करी है जो भी आपके साथ हो और वो आप ओ सी मतलब स्लैश मी करके बताएं वो ज्यादा वैलिड रहता है क्योंकि हम सब आरपी प्लेयर हैं तो हमें इनिशिएट लेना चाहिए कि हम हर चीज को अप्रिशिएट करें कि हर किसी की अपनी आरपी होती है लोअर की अपनी आरपी है जज की बिल्कुल बिल्कुल अदर देन दिस मेरा पॉइंट रह गया था गाइस दिस हैज हमें हर किसी की आरपी को इनिशिएट करना आप कंप्लीट करो शॉगिन आई विल रिपीट अबाउट दैट आप बोल दो एक बार उसके बाद मैं कंप्लीट कर लूँ all right so the point is talking about slash me rp from my point of view what I think basically कि कभी कभी slash me rp is actually ruining some kind of like enjoyment of rp that has to be done verbally यहाँ पर like many people come and like be quiet they have their rp key they are unconscious and they cannot speak at that state that is correct but if we talk about like ठीक है. If we talk about sorry for the inconvenience guys okay so if we talk about slash me rp what we can do here is the people who are unconscious we are making an effort from the EMS side to those people like we will do one kind of like assuring rp एक rp हम लोग अपने साइड से इस तरीके से करेंगे कि we are using a like a adrenaline injection or some kind of a injection that will make you conscious in the rp and at that point if you're conscious you can contact the doctors for your rest of injuries but the point is many time it has been noticed if the EMS does this rp the people does not understand that as a like effort made by the EMS they just did like think that is a point ki they have been revived and now the treatment is done and they do not talk to the doctors and they run away now that is some low effort rp you're doing from your side basically what I see here is ki we will do that adrenaline thing from our side now you have to understand that I'm like announcing this as a to the whole community right now
You can do this as like you have been assured that you are now conscious in RP, and now you can tell the doctors about your injuries or the things you have been faced with, and the treatment can be done according to that. That will increase the basic sense that has to be developed in the RP of EMS, as well as the people that are doing it. Thank you, Tha. Thank you for this. Thank you, everybody. Okay. Let's see the questions about the PD. Any questions are come, then the PD guys can answer those. Check the PTS. Hans, thoda PTS dekho, or you all can answer these questions what are directed to PD. We'll finish the PD thing first. Anyone has questions for PD, please put it now, because later on we won't answer those. One is for Roger. Roger, hello. Roger is there. Okay, I want to Yes. reply to Roger Radius about a point he just said. It really needs to be addressed here. Is Roger there? I guess his Wi-Fi is fucked up. Okay. Told. For the PD. See, whatever PD PD questions is are not there. scared of internal affairs. Whenever they do something wrong, we say we'll surely report it to IAA, and they're like, हाँ करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? Strike पड़ेगी, rather than it's just saying. So that's like a counter RP you need to give is you need to report it to the IAA. Simple. If a cop is there, let's say अगर आप मेरे पे मान लो मैंने आपको बोला कि कर लो जो करना है, I will strike ही पड़ेगी. So mention it in the complaint as well कि the PD guy has an attitude like this, and IAA will take care of that. IAA will make sure that. So अगर if somebody saying I am not scared of strikes, ज़्यादा से ज़्यादा strike पड़ेगी and all that, just mention it there, and IAA will take more severe action on the officer. So that is the thing. People are not RPing, waiting or try to help people new in RP. नहीं, ये PD के लिए नहीं है. Okay, I have a small question to raise. Like in a chase a car, why the PD doesn't use comms to say which vehicle it is, or maybe the class. I have a small RP, a 5-unit following me like bike. Okay, people, we have that thing that we always mention the vehicle class or estimated vehicle class. Sometimes we don't know the vehicle class as well. So what happens is whenever, if you feel that there is like more force being used, okay, let's say if you're on a D class vehicle chase and there is a what is interceptor chasing you at a primary unit, you can always report it on the forums. It will come under match of force, and it's a OOC infraction for the PD, and it's a server rule break as well. So if you feel that is happening, report it on the forums, take the IDs and report it on the forums, and we'll take care of that, and these staff will take care of that. Hey, Rahul, you're asking too many questions which are not. They are all questions related in RP. How much time, complaint, everything. Do your RP. No, go and find out from IA. That we don't put time limits. It's all based on RP. Now, if you are not getting a solution from IA, you have another RP. Why don't you file a PIL? Oh, sorry, a petition in the court. You have to do those things, but don't try to take answers everything from OC, which will not happen. What is the response time on IA complaint 1-2 weeks ago? Generally, the response should come in 24 to 72 hours. Do one thing, contact Roger. Roger will take care of it. Sometimes we see. Contact Roger नहीं आ रहा है, तो he has his own way of doing things. He can need a lawyer. He can file a case on the IA saying that the things didn't come to me. I want to file a petition. I want to hear from the judge. I want to list in the case. उसके पास वो अधिकार होता है. Because see, IA is actually an in-RP thing, IC thing, not an OOC thing. That I will like to clear over here, because some people think that's an OOC thing. It's an in-RP thing. So you have in-RP things to handle with that. If your complaint is not, as Tao said, complaint नहीं हो रहा है, so contact lawyer. Sometimes we see PD officers, they literally say I've killed 2 heads, killed 2 people, like they're having fun in RP. Later, like they're playing AIM Arena, which actually aren't playing RP. Okay, I'll address this question. This is actually on my head, like since like 2-3 weeks I've been checking this. It's happening on everywhere, not only just PD.
PD के भी काफी लोग हैं who are doing this. On the other side, crime, civilian, many people are there. I even put out a sarcastic comment few days ago, just so that people would realize, and they took that as well in the joke. If there is somebody, I would like to make it clear, at least from PD, which is in my power of authority in character RP. So जहाँ तक बात है PD की, if anything that happens, take their server ID, report it on forums. Our PD curator will check that. So that is technically wrong. So yep. Responding to the gas in corporate gang areas and patrolling there just to trigger them is ungli. So now if that happens, like that's first of all that's baiting. Again, that's a server rule break. What you need to do is that okay. One thing you need to do is that report it on forum. No, Secondly, wait, no, Hans, there are two things in this, which people also should understand. एक side का point of view पे काम नहीं होता इधर. Might be that PD guy is doing some investigating RP. Might be there is a reason for him to be possibly there in his RP. ये सब कुछ हो सकता है. Now, if any person thinks कि वो नहीं होना मांगता था, वो कुछ नहीं होता था, he can ask for a point of view from the PD side. If he wants to get clarify on that he can ask from the forums, or if they are from gangs, they can ask from their curators. They can do that. But just directly blaming cops that they are coming and baiting and all these things will not happen that way. You need to understand both the side of point of view. Yes, police does it on purpose without having the fear RP and all those things. That's a different thing. That yes, will be taken care of. But police is doing for their counter RP and their investigating RP. Sorry, you cannot stop those. That will happen. Yeah, other thing. That's a right question. Hans, you all should take. PD to request to PD not to leave suspects unattended when they are brought to the hospital. That's a very good question, actually. PD does that, and that's a very bad thing that PD does. They should not do that. The PD officers which are there part of that situation should finish that situation and go to another situation by leaving those people in the hospital, just saying that नहीं और एक situation आया मेरे को उधर जाना है. ये नहीं होना होता है. This is not RP. This is has to be, that guy has to be taken to his conclusion, and that thing should happen that way. That officer should not indulge himself in any other RP, even it is very important RP, by leaving one RP at the midpoint. Yeah, Hans? Hello. Jito, I'll do one thing. I'll put out a short briefing note after the meeting for the PD people in their respective channels, not to do that again. Yeah, No, they should not do it at all. Not to do again. It should have never happened before also. But it's happening only is a violation first of all. Because they should know that the RP should be a continuing thing, not half the way. So then they are not trained well. If this PD, somebody who does this thing, they should be sent back, demoted, and told to get their training back and then promoted again after training. Because they don't know exactly what is their way of doing things. So उधर वो करना मांगते हैं आप लोग. You have to be strict on these things, because इसमें दूसरों का RP खराब होती है. Is there any specific reason PD goes straight for the hard cuff now? Okay, there are two types of cuffs in our server. One is the normal cuffs, in which you can walk around with your cuffs on. Another one is the strong cuffs, which is also known as hard cuffs. So why we don't do the other one? Because in soft cuffs, the other player does not get a mini game to break the cuffs. They don't get the chance. So, but when we do the hard cuff, they get a chance to break the cuffs. So that is why we use that. It is just to give the other person chance. But PD tells them that they are going for the cuffs? Yes. It has been told by them. Okay. Many of them time we do 9131 for the PD side, no one replies. Those are things which are possible, Jay Shetty, but those are also possible because it's very difficult for PD to manage all 911s, all 311s when they are on, because there are a lot of situation happening in the server at a given point of time. So they have a lot of other things according to their priority. Sometimes they move according to that. Yeah, but they should give more effort. Now, this thing would have been better if there was a dispatcher. Now, in our servers, nobody wants to do RP of dispatcher. Nobody wants to have, involve himself to be part of a dispatcher RP. Now, if dispatcher RP was initiated and somebody was doing that, these things would be taken care well, the 911 and 311. Because he has his own features, how he tells the officers how exactly which situation to go and which situation is still pending.
So there are problems there, but it's 11 months. Nobody wanted to involve in that, so we can't help you all in that. If it is up to the RP players, if they want to indulge into this RP and show this RP to the other guys, but feature is there in the server, but somebody has to get indulged in it. Any more police questions? I think all of them are done. Yeah, so Few EMX here. old pillbox needed, that will, what is your need is not required by the server mechanics. What is the server mechanics? You have to live with that. There were some bugs at the old pillbox, is getting repaired. So once that will be done, the pillbox will come back. One more thing, PD has changed 2 times, just follow the cars and car. There's another question there on top, Hans. The recreations question is still left. It's from yep. Also, one of the PD has a chase type where they just follow the car, and when the car is about to turn, they start ramming it. Sorry, I forgot to mention. It is kind of understandable why it happens in net issues. See, I'll tell you about that ping difference. It is actually inevitable, but we are taking measures like as much as to avoid it. But at the end of the day, it cannot be avoided completely. Trust me. We always try to maintain distance, and we tell the cops to do that. But please understand that it is actually because of the ping issues. I mean, you already know that. So if like what happens is sometimes what happens is due to too much of ping issues, if the car gets damaged because of the ping issues, the cop is supposed to give a chance to get the car repaired. At least when I am there, I make sure that happens. So it is actually unavoidable. There's another question by Fury. Yeah. Fury is we put cars are suspecting people after seeing that the sentences you go inside. Yeah, actually, this thing that's been happening is that what he's trying to say ki people are some people, not all, lower garage में जब भी गाड़ी, let's say if a suspect's car is in the lower garage, after he comes out of jail, he has to take his car back. He without even letting no one come in the garage door, even after being locked. I could not get the question actually. The guy took out the car without informing PD, right? I don't think that can happen if the doors are locked or anything. Yeah, that thing actually is RP players should understand that they should go to the PD and ask the vehicle back, then entering directly the government area. That's because the door is open, you cannot just go inside and remove. That again is not a violation of server. It's a law break. You can be arrested for that. Your car can be impounded back by the PD because you have trespassed and robbed a vehicle. They can charge that thing. So people should know that they should do RP to get their vehicle back. There's two types of RP there. Sometimes there are strikes, which we have not started actually fully on that. That you can go near judge and take your vehicle removed from the impounding thing, or you can go to the police and remove it from there. But you have to do that RP with your judgment copy or with your sentence completion. This you all can go and tell them that my sentence is complete, or the judgment says that I am being acquitted. You can remove all your things what are been seized or whatever, leaving the illegal things. I want to point out a few things. No match of force. See, about the match of force, I understand there are... There's another one before that. Srikanth is there. BD Srikanth, desperately needs a break from some of these idiots in gang, literally kill them non-stop and no one wants to come to server. Now this again shows that RP players, his own behavior in RP. Should he be playing this server or should not be playing this server? He should decide on his own. Now the thing is, we tell them every meeting and every time we tell the gangs that you initiate a RP and then do things. But they do it for content basis, and it's a truth and reality which they cannot deny. They do it for their own purposes where they get their content and everything, and then they get sour if they lose that content because then they feel that I have lost it, so my name will go down, and that's the reason they do all these mad things of attacking PD, which becomes an easy target for them. Yes, we have seen many people without initiating RP, they are just shooting PD down and all this. That's the reason sometimes PD gets angry and then they also tend to increase their force on people. So it goes both the way. Now, if people try to do that, the PD will increase their force and they will be also not
be so simple and no, like, they won't give you that much RP. They will be directly doing their police work as how they will do. And then you will feel it bad. But you guys who initiate this should understand this will happen to them. And this will happen more frequently. Yeah, Romit's point. No match offers. Regarding match offers, I have already said that if you feel that there is something, report it नहीं on नहीं the उसका forum. उसका प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ उसका प्रॉब्लम है वो बोल रहा है कि 12 कॉप्स होते हैं हम लोग 2 है पर समझो बात को रोमित दैट्स नॉट पीडीज प्रॉब्लम दैट्स योर प्रॉब्लम you are allowed to go with 6 people. Now, if you are 2, that is you have taken the risk of going 2 people in a situation. Now, it's up to you why you took the risk. PD will come 12, not because you are 2, they will not become less. What Can is I their ask? mandate, they will follow their mandate as how they have to do police work. Now, you are given a chance of taking 6 people to do your things with 6 people. If you think that the police will be indulging in that, don't do it with 2 people. Why are you doing with 2 people? Don't do it. Can I say something regarding this? Wait, there's another point which I want to also get off is no fear. Some of the high commands they were in the gang hood and we were 5 to 6 people around and we all pointed guns at them and told them to go away, but instead of leaving they pulled out theirs. That's wrong. These police should not do. This is completely wrong and I've seen police doing it. It's not, this point is very much correct. I have seen personally myself PD doing it. PD is, they have to understand there's a fear, there's life threat. Now, if you are come there and there is a gang which is 5 to 6 people and you are not more than them, or you are not doing official work, or you are just 2 or 3 people and they told you to get, they are giving you a warning to leave, it's better you leave. You can come back. You can come back with your force by planning well to execute the situation. But that period of time pointing a gun back to the gang is allowing the gang to kill you. That's what it is. So you are actually not following the proper procedures. So PPD, police, anybody whoever does this, even high, they have, see, is written high command. If high command does this, the other police officers will eventually do it. So even high command should understand this. Or किसी ने किया है तो yeah. See, Romit should open a ticket on this basis and give us a proper point of view. Because if you don't tell us these things, we cannot change these things. So these things next time, if it happens again, you have to give your point of view and say what was the situation and open your ticket. We will talk to them and we will see what actions has to be taken or warnings has to be given. There's no thumb rule, Asuna. You are again wrong. Who told you that PD cannot shoot first? PD can shoot first, but they have to have enough reason to shoot first. That's the whole thumb rule is. They are not like gangs, which will just shoot for reasons of their to save their stash or save their some criminal activities or something like that. PD has to have their reasons, but there it's not like they can't shoot first. There's nothing like they can't shoot first. They cannot. It's not written somewhere that they should die first and then they will be taking initiations. It's not like that. Yes, but if you think somewhere PD is just shooting without any reasons then to shoot, you should rectify this by telling us about this. The PD are actually not professional while talking to the civilians because they usually abuse language, talking to each other and see, talking to each other. No, it's possible. It's possible. Talking to means I have seen also police are abusive. They act like sometimes some, not all. Some officers act like they are gangsters. They are disciplined officers. They need to talk to people in a disciplined way. They have to do that. Now somebody can do a RP. Besides that, he wants to be not be a good person. He's this, but he has to be also ready that he might get suspended or he might be dismissed from the list. That will be in his RP. If somebody complains tomorrow and I that discipline was not proper as a civilian taxpayer, I have been harassed and it is proved correct, then he will get his whatever he has to get. But yes, police normally should be more disciplined ways talking to people, civilians. That's very important for police. They have to be professional. They cannot mix up they can have two characters. They can have one PD character, one gang character, but he cannot get his gang character ways into PD. Into PD, that's a different character who's been trained and brought to PD. So he's a trained guy. How to deal with situation, how to talk to people. So these things they should remember. The rule of 6 has to be avoided by the cops and crims. If it's not, then it's a ban. Number of man rule is already there being enforced.
why every time PD uses 3 speed unit cars? Okay, generally there is only these are only used for a bank robbery or a vault or S plus chases, the interceptor if we are talking about. But again, this has been tested and verified. And So let me tell you that again one more thing. There are vehicles which are very fast in the city now. Vehicles which cannot compare to even PD helicopter. Remember those things. So what you are saying might be could have worked to initial time of the server. Now there are vehicles which are very powerful. Now PD also will use the EMPs for this because they have the server mechanism to use EMPs when the vehicles are fast. Then they come chasing them. So remember this thing also. by every time PD use 3 speed. अच्छा ये तो हो गया. In a situation I'm caught by my PD, my friends are trying to save me, but in this scenario, what can we do? थोड़ा इसका बताओ हर्ष भाई Why क्योंकि should your friends save you if you have already consumed your 6 people? If you have not consumed your 6 people from a gang point of view, I'm talking about, not a civilian. Civilian still 4. From a gang point of view, if you have consumed your 6 people, nobody else can come in the situation. If you have not consumed, and your friends are communicated well in RP through radio or whatever means, then he can surely be part of the situation. But again, the rule is still there. Once the situation is over and the PD has taken that person to the hospital, then you should not initiate. You should wait till your person might ask for prison escort or something like that, and the remaining people can initiate that situation back into the back during the prison escort or something. Only the 6 people are which were there, part of it. Not even the people who had got injured. The injured people who died, who got this, they cannot be part of the situation. some PD people mix character. This has been strictly taken care of already. We always on a lookout. Secondly, you asked that there should be some control or rules on gang people for playing PD characters. I'll tell you one thing that whenever there is a recruitment internally from my side, from the staff side, and from high command side or whatever authority, there is only one message given to the recruiter, whoever is in charge of recruitment, that first topmost priority is the cop name. Once don't explain that. That directly comes under server violation. You have anybody to be seen like that, you have your evidences, report. That's a server violation. That has nothing to do with PD. It is for everyone. Any person who has 2 characters in the city and is mixing those characters, it means it's a violation. It's blurring the character. So that is a server violation. So you can report for that. 2 years and I have to say PD there is good Crimson, but good too. But it does seem more about Nilmar, 1 minute. I want to finish Nilmar. Nilmar, you are wrong. Prison escort is not about enough cops. Prison escort is if DOC is ready for a prison escort. You all have nothing to do with the prison. Only DOC has a right to give a prison escort, and they have a right to ask for additional force from the PD if they require. If they don't require, DOC can go with only 3 people. That's up to them. They will handle the RP. It's not your RP. Once you process, it is DOC's RP how to escort them, how to take them. They can ask more police force from you if they require. So it's not on police. There's another one, PD does speed run. That's correct. That's another thing, very much correct. Processing criminals. They don't do RP with them. Because there's another situation which comes and they want to run for that situation. Again, the same point, guys. You finish the situation till the end, and then you can go for another situation. Now you need to finish the situation till the end by asking him if he requires lawyers, if he requires a bench trial, if he pleads guilty, does he require directly to be transported or does he require an escort to the prison. This thing is a work of a PD guy. They don't do it and they should do it now. And the civilians have a right to ask this. And if civilians come to know that they don't give these rights to them and whatever it is, they can go and file a charge directly in the court and get away from all the charges. Okay, PD questions are over. Yeah, club, what questions you are putting is again a violation of a server mechanic. You can report it if they do it.
Yeah, I'm sorry though, I actually was AFK. People break their character से तुम्हें पता है. Okay, this is not PD. People cuff PD when there is only 1 or 2 cops with suspected pillbox. They do not try to escape the suspect according to rule. When suspect is at pillbox, situation is complete, so they can't do it. समझा नहीं मैं. Wildstorm. Like, what are you trying to say? Next one. No, there's जी another one जीता of Vikram विक्रम का Batra's ऊपर है. question. जी वो मिस कर दिया मैं, क्वेश्चन सॉरी. सिंपल, उसका मीनिंग नहीं होता है. सिंपल चीज है, जो लोग पार्ट टेस्ट सिचुएशन का, वही लोग प्रिजन एस्कॉर्ट का भी फ्री करने का पार्ट हो सकते हैं, और कोई नहीं हो सकता है. और दूसरे गैंग से भाड़े पे आप किसी को ले नहीं सकते. दैट्स नॉट अलाउड. It is the people who were involved in that situation are the people who can continue that situation during the prison escort time. Now imagine there were 6 people involved. 3 of them ran away. 3 of them got caught. Now when these 3 will be left from the, like if they are going for a prison escort through the DOC bus, the remaining 3 who ran, not injured, not dead, the ran, who got saved, can be part of the situation to get them free. Now for that they have to do a lot of RP. They will have to see that what is going on at police station outside. They will to use binoculars, everything to know exactly what is happening. Without that, how will they know if they are going for prison escort, or when they will be left from this? All these things, those remaining 3 guys will have to do, and then initiate the RP. Okay, any other questions which are left, Hans? PD ka? PD questions are over, guys. Okay, so let's go. If there are any EMS questions, please put ahead EMS questions. सॉरी तो मैं एक्चुअली AFK था. नहीं तो और तो कोई क्वेश्चन नहीं है पीडी का. I think. Yeah, let's go for EMS. All right. So, is there any EMS DOJ like channel for asking medical reports for a case? You can ask yeah. admins. No, wait, Kevin. That those channels are created by admins. If there is no channel, then you can ask for one of the admins to create the channel for you all to have a better communication. Also, actually, it's not about the communication. I see it's for the medical reports for a particular case. So, like, no, actually, like, if they're talking about the medical reports, so that is also kind of RP, जो आपको in city एक lawyer को करनी है with a EMS employee. उनसे No, the problem is not that he can come and do the RP with you all, but that person to find next time it becomes difficult. That's the reason he is talking about that. When you will be giving for that we have done thing. We have a central dispatch working there, and the reports for every patient that comes to us is actually uploaded there, so it can be given by any doctor, and all the information is being reported to the employees for the same. Yeah, so what they are asking is they require one channel where they can take those reports from, because right now it's not coming clearly. From where does it come? It goes from a long process when they receive it. So उनके लिए वो लोग channel पूछ रहे हैं, EMS DOJ, where EMS can give those reports directly in those channels and they can receive those, because they can use them for the cases of theirs. Oh, I just wanted to add something to this. Normally, what even I have faced this, I ask for a primary report. I don't want the detailed report, so that I can use this to file my complaint with the PD. For instance, कोई मेरा client है and I go to him and उसको किसी ने गोली मार दिया, right? I just need कि उसको bullet लगी है कि नहीं लगी है. That is the primary report which we require. So, like वही मैं आपसे बोल रहा हूँ इमरान. So, can I answer that though? Yeah, so the thing is कि जैसे आप कह रहे हो ना, you want a primary report जिसमें ये लिखा हो कि actually उसको बुलेट लगी है कि नहीं. Right. So actually the EMS can tell this कि उनके जो basically जो उनकी चोटें हैं, that looks like कि वहाँ पर एक बुलेट हो सकती है. We cannot define that in case अगर सर्जरी वहीं हुई है, like at that point सर्जरी कुछ हुई है या कोई additional record EMS के पास है for that instance, बुलेट गैदर हुई है, एविडेंस गैदर हुआ है, तो at that point EMS can write that कि एक इतनी mm की बुलेट वगैरह इतने पे लगी है. ठीक है, आप समझ रहे हो? मगर प्राइमरी रिपोर्ट I mean EMS के पास वो पैनल है जहाँ पे वो दिखता है कि भाई गोली रिकवर हुई है या फिर समथिंग लाइक दैट. नहीं, अब लाइक ऑन इंस्टेंस अगर कोई आता है, राइट, अगर रिपोर्ट उसी टाइम पे चाहिए कि पेशेंट अभी आया है
अरे काम पेशेंट करते हैं आया अभी है जरा टू द टाउन हॉल हॉस्पिटल, मीटिंग बट है। मेनी पीपल जो हम ऑब्जर्व टाउन करते हॉल हैं मीटिंग दैट चल इज रही है कि उसमें। पेशेंट ठीक बहुत है, और बाद में कितने आते हैं, 1 महीने 2-3 बाद, क्रेडिट्स है 10 दैट दिन इज बाद आते हैं और अलीशा बोलते हैं का, कि हमको अलीशा रिपोर्ट को चाहिए फॉर इंटरेस्टेड है, पता नहीं तो अब कितनी वो चीज़ इंटरेस्टेड है, पॉसिबल देख नहीं है लेना क्योंकि उसका। आप आरपी में भी वो चीज़ कर चुके हैं ठीक और है। उस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर चुके हैं। वो पॉइंट मैं आपसे कह रहा हूँ, समझ रहे हो कि फिर एक मिंटू से अगर ऑन स्पॉट अगर किसी ने अगर ऐसा कुछ बुलेट वुंड है और उसको ट्रीटमेंट दी गई है सही है तो फिर ओनली से। देन यू विल बी एबल टू गिव अ रिपोर्ट। हाँ वी कैन अश्योर, नहीं रिपोर्ट हम कभी भी दे सकते हैं, बट वी कैन ये अश्योर करना कि बुलेट लगी है, ये केवल उसी पॉइंट पे हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस। कैसी? Okay. A lot of people should provide RP that guys in हाँ EMS दिख they रहा है do मुझे much वो। work. That's correct. That's correct. They have already spoken about that. That it's up to people how they give them RP. They have complaints saying क्या that people हॉलस्टर? just come हाँ and go ये here वाला। and NC and get treated without giving them RP. That is बेस्ट when mostly these things happen is when you believe in gunplay. When you are thinking that I want to only नाइस, क्या हो रहा my है मेरे one साथ? RP is going on, I'm fighting, I am doing this, I'm doing. I don't want to additionally add anybody's RP, so I don't care about या that. दैट शुड बी द Now वन। this thing should लड़कियों reduce. को वही बनाते हैं हम लोग। This thing तो directly comes from the people दूसरी who चीज़ do ये gang है RP कि or who does बस यही था RPs which ये are दो चीज़ related था to those मुझे। things where they think it's and very urgent for them. keep it in the board zone में। कंप्लेंट्स आ So रहे हैं ना, करना सीरियस होता है. कंप्लेंट्स है। But anyway, EMS also has their own RP. If you do go अगर on ये doing वाली these पहन things, रही they हो will तो complain वो for हटा देना। low effort RP. Yes. All right. Why EMS is not charging for treatment? I already told EMS guys in past about creating a weekly medical insurance. No, no, RP. EMS cannot charge for treatment. It's a government hospital. Exactly. But for some treatments, we have some things approved from the DOJs. और वो चीज़ अप्रूव भी हो चुकी है. वी चार्ज फॉर सम थिंग्स, नॉट everything, because at the end it's a government hospital. We don't care about the profits and all of that much. But yes, कि एक पर्टिकुलर चीज़ उसके लिए भी एक आरपी की गई थी एंड एट दैट पॉइंट कुछ चार्जेस जो किए जाते हैं वो ऑलरेडी अभी ईएमएस कर रही है. तो तुम कौन हो भाई? नेक्स्ट क्या तुम है? क्या रेड हो? Okay, where फील बैड. There is this. ये कौन है? ये भी कैडेट है? मैं Yeah, मैं like भी रेड कब से insurance बन RP, गया? we have insurance RP in the server, Tell but what's your name? it's a very Aarsh complex RP. For रे. that, you require very Can't people hear you, to man. आर्श. understand how an insurance company Can't hear functions. you. Can't hear you. We have the mechanics, whatever it आर्श. is. If any of the EMS guys wants to do it, we are free to do that. But that also comes with understand that litigations also will come for that because insurance RPs are on Hello, those can you hear basis me? that they will pay compensation when they Yeah, claim the hello. insurance, the Mediclaim. हाँ अरे ना नाम क्या है? बस. All अरे these things आर्श. come into picture. हाँ. Okay, अरे so भूतनी के because पूरा ही understand कॉपी here in कर this ले मेरे city, को, a person gets थोड़ा इसको ही क्या क्यों किया at चाहिए? कॉपी? one point of time. Now, will he claim every time when he ऑलमोस्ट gets ये पूरा injured? मेरा आउटफिट So all है, these things जूते तक मेरे that guy वाले, who will पैंट भी initiate मेरी, that RP, who do that गंदा RP कहीं should का. understand चल full ठीक है हाँ तू ऐसे बोल सही रहा है, है. ऐसे the सही है, यही तो ऐसे बोल terms रहा and है. condition when he does the insurance. बाल company. मत छपा वरना कोई मेरे है ऐसे तो लगता हाँ है. फोरम पे रुक टिकट मैं फॉलो जूते बताओ. का देखता हूँ. एक तो ये पैंट्स ने जूते या पैंट का देख ले. एकदम काली वाली कोई पैंट सही नहीं है यार. ये थोड़ा थोड़ा पर्पल आती है तो है. जो मैंने पहली है. कौन सी है? नंबर बता. keep the mask, go to earrings and wear one नंबर बता. नंबर बता. फिर सेम हो जाएगी, one फिर or सेम two. हो जाएगी. ठीक है चेक. हाँ Iksa, it's correct what you're saying. It's correct. This is what everybody should understand. पहना दी. एग्जैक्टली वही है कि आपको एंड वन मोर थिंग जो चार्जेस की बात थी. सो लाइक इफ वी टॉक अबाउट चार्जेस तो वहाँ पर हमारे पास लाइक व्हील चेयर एंड सर्जरीज जो एक चीज़ होती है, क्योंकि व्हील चेयर को हमने इसीलिए चार्जेबल बनाया था बिकॉज मेनी पीपल वर एक्सप्लॉइटिंग दैट इन सिटी. सो उस चीज़ के लिए भी हम लोगों ने उसको वहाँ पर लाइक चार्जेबल बनाया था. एंड अदर देन दैट सम सर्जरीज एक्चुअली आर पेड, जो कि कुछ सर्जरीज जो बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्विंग होती है क्योंकि आपको कुछ आरपी इसमें करनी पड़ती है. सो एट दैट पॉइंट दैट इज आल्सो चार्जेबल. अदर देन दैट देयर आर नो चार्जेस भी टू. जब एक बार इसको आ जाएगा ना सारे क्या बातें हाँ, कर रहा है यार? People should stop shooting in that. People should stop shooting if it is a good RP. And the admins think that you are initiating RP for everyone, not for yourself. It also belongs to police, EMS, everyone. We tolerate. बाद में कर लेंगे. Now, if you are not doing that RP and you're shooting inside, yes, you will be banned. Because according to server rule, you should not indulge in any of those shooting things and everything in police station and the EMSs and DOJs. सेव करो. Because if that we allow, then we have to give counter RP. For counter RP, then we have to arm the EMSs and everybody, which you all will not like. So that's the reason we don't want to reach there. So we expect people to not to just shoot inside EMS, everything, understand those things. Now, if you have a good RP planned, then you can go ahead and we'll see that RP. And if that RP was well enough to give many other people RP around, then we will, no problem, we'll tolerate those things. तो कुछ और बात चल रही है. क्या बात बताओ?
Yes. I don't see any like any questions. So EMS is done. Now I want to talk about DOJ. Vivi, please go ahead with Do you have a DOJ. call sign? Alright. Have you So been first provided of one? all, I want to explain this one 629 thing ठीक है about DOJ कि इस do you शहर में do हम you लोग बस slash call state versus then put your call XYZ sign ही नहीं लेते हैं. You guys can actually go ahead and sue other people for things like and recently we got a department में case where a person बता took रहा हूँ loan from his friend and department he did में not slash pay it back, department so the and friend then sued him. now तो open up ऐसी the भी list चीजें हो and सकती है. तो you you'll guys can, know you once know, you when receive somebody, if you the you handwritten just bought a new thing car and somebody rams into it, तो instead of turning it into confirmation में a किसी को कुछ नहीं gun बता play कि हाँ तूने मेरी गाड़ी कैसे नहीं ठोकी, you ऐसा can कुछ नहीं just it's all sue good him or something like that, file FIRs for those reasons. And a second thing, I've seen a lot of people plead not guilty and they never come to the लेटर नहीं DOJ मिलेगा ever. तो जब भी तुम नॉट गिल्टी प्लीड करते हो, it doesn't really you क्या know, it टैटू just बनवा gives you दूं? a chance to challenge those charges. It doesn't Bullshit. really reduce your charges, it doesn't चेंज द really, you know, go ahead and remove those कॉल charges साइन ever. हाँ कॉल साइन वो सब अपनी नहीं मर्जी होता है. से तो नहीं कर in सकते fact, if you हाँ guys are जैसे actually आपका not डेट हो pleading guilty, तो contact a आपका lawyer. We 600 have a में कॉल साइन lot of रहेगा lawyers in the city right एंड now. So contact a lawyer, अगर आप challenge those शो charges, का see डेट बन if you जाओगे can तो get some 500 में आ relief. जाएगा ठीक है And उसके बाद mostly 400 I वाली जो think we लाइन do है पूरी try to get वो give LSPD के लिए है good 300 RP to वाली people who BCS है bring RP to 200 DOJ. वाली So SCS that is रेंजर्स सॉरी एंड one thing. 100 वाली Also SCSP के लिए EMS also has तो been अभी जो bringing मेरा us a कॉल lot साइन of है good शायद RP. 415 तो है तो अगर वो आप उसी लाइन में आना जाते चाहिए हो किसी चीज के लिए, like we got a case तो where कॉल a साइन का person मैं बाद में wanted to समझा दूंगा इट्स अ ट्रिकी थिंग have a sex और change. कॉल So साइन that could अभी have यहाँ पे been, you know, शहर में अगर वो तुम्हारा कॉल साइन आ गया क्या चला if गया the hospital says no, we एक मिनट can't चेक do कर that, you can actually sue the hospital saying that you are मैं कह not रहा हूँ letting me, giving me my अगेन rights इट्स and all of that. कायरा There are a राइट lot of things that you can be suing food okay companies. You know that there are so many food you businesses, will be and I'm able to not saying see keep just randomly go your and call sue sign each other, in but you there is a dispatch lot section of RP ये मेरा जो आप कीबोर्ड थोड़ा explore कर सा सकते हो है through DOJ. सुनो And I really want to यहाँ पे आ encourage जाएगा you यार guys वो to do बोले go तो उसमें ahead and लिखा है do था कि that, टाइम लगेगा especially where you don't plead guilty. Just try to yes you will try be to let bring known RP to also DOJ so that you always get डिपार्टमेंट more अब RP एक अपना instead of डिपार्टमेंट just, you सिलेक्ट know, कर लो what is going on in the डिपार्टमेंट city, like LSPD just guns वो and कर दो grinds and everything अभी like सर that. सुनो डिपार्टमेंट तो एंड देन LSPD हाँ हाँ बोल हाँ करो करो कैसे करते हैं बोलो सर बोलो टैटू बनवा लूं एमडी क्या क्या भाई Questions? हैं Any lawyer wants to टैटू speak? बनवा लूं Ahmed, क्या you want to नहीं speak something about उधर DOJ? तक What Yes, do you sir. नीचे face? बंदा तक Yes, sir. ओके Yes, sir. I have a point, sir. Yes, sir. हाँ हाँ The first thing is कि डिपार्टमेंट मैंने लिखो ऐसा देखा है कि स्लैश लोग डिपार्टमेंट जैसे कॉल डीओजे साइन के किया था आरपी मतलब वैसे स्लैश अगर डिपार्टमेंट आपको एंड कोई लॉयर सिटी स्पेस में अवेलेबल LSPD है, यू आर शॉर्ट फ्री टू वो कॉन्टैक्ट स्मॉल हिम. आप अगर लिखो पीडी सेल्स में हैं, आपके पास आपका फोन है, तो आप कांटेक्ट करिए लॉयर को. लॉयर आएगा, आपको आपकी फुल आपको जो सपोर्ट है वो आपको मिलेगी. अगर आप बेल लेना चाहते हैं, यू कैन गेट अ बेल एज वेल. और आप लॉयर की हेल्प ले सकते हैं. लॉयर्स को थोड़ी सी डीओजे आरपी आप देना स्टार्ट करें. यू कैन आपको मजा आएगा इस चीज में जब आपका सूट फाइल होगा. एंड इसमें आपको आपको जो हेल्प है वो मिलेगी और जस्टिस भी मिलेगा अगर आप केस विन करते हैं तो. द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि लोग अभी ऐसा कर रहे हैं कि कोर्ट हाउस अभी में सा आते हैं, गुची लॉयर को आउटफिट अब क्वेश्चन पूछते हैं ऑन ड्यूटी और हो ना लॉयर तो अब एमडीडब्ल्यू में गेटवे कुछ कनेक्ट चीज करके सर्च देखो कर रहा होता है, उसे गोली मार के चले यू जाते हैव हैं. टू तो मेरी द रिक्वेस्ट है पीडी से कि मैंने इन कलेक्टर भी बोला था पीडी हाई कमांड को कि थोड़ा पेट्रोल अप करिए कोर्ट हाउस पे और लॉयर्स को थोड़ा सिक्योरिटी देना स्टार्ट करिए. और जो दूसरी चीज है वो ये, तीसरी चीज है वो ये है 311 का जो हाई कमांड को जब कोर्ट में बुलाया जाता है, अगर इफ दे आर नॉट इन द सिचुएशन, प्लीज रिस्पॉन्ड टू 311 ऑफ द जज. The voice is sort of. Yeah. Ahmed, आपका voice save हो गया है. So, don't. Yeah, he's right. Ahmed is right in that. But first thing is don't shoot bullets in the. If you don't have a good RP, you will be banned. If you have a good RP to do something like that in DOJ or something, we'll tolerate. Again, I'm telling you this also. Do not do those things which you think that you can do simply and get away with. You should all will not get away with. So take care of those. And yes, cops, you all respect the DOJ according to the hierarchy. When you all are called in this courtroom for any cases or something, be present there. Don't go for any situation. When you are called in the court, you have to go to the court. Your RP that day is to go to the court, not to go for situations. As soon as the court is over, you can go back on duty of yours. But when you're called, you have to be present there because I've seen a lot of accused, they come in the courthouse and they wait, and the PD doesn't arrive. And it's a very bad thing for them. When they try to invest into that RP, you should also be part of it. You cannot run away from your responsibilities. So take care. PD has to take care of these things.
वन मोर थिंग सर, आई वांट टू ऐड कि आप लोग अभी मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, ताऊ सर भी थे उस दिन, और लोग जो हैं वो कोर्ट हाउस में ऑन गोइंग ट्रायल में जूता उतार के जज को मार देते। दैट्स अ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल थिंग इन द आरपी। आप रियल लाइफ में अगर ये करके देखिए आपके साथ क्या होगा। ये ऐसी चीज मत करिए। आप एक डीओजे को जज को जूता मार रहे हैं और यू थिंक के दैट अ वेरी फनी थिंग। ये चीज आप लोग रिक्वेस्ट है कि ये मत करिए ऑन गोइंग ट्रायल में। इससे सबका आरपी खराब होता है। लोग स्ट्रीम कर रहे होते हैं और वो एक बहुत बैड इंप्रेशन जाता है कि ऑन गोइंग ट्रायल में जजेस को या डीए को या किसी भी डीओजे को जूते पाड़े और पीडी। जब आप लोग खड़े होते हैं वहां पे देख रहे होते हैं, आपको बोलना पड़ता है हम लोगों को कि इसको अरेस्ट करिए। यू हैव योर ओन आईज, काइंडली उस चीज को फौरन अरेस्ट करिए। Actually, this DOC should, every time DOC has been given this charge, they should come and take care of the courtrooms before the case starts. Now, if DOC thinks they cannot handle it, come with a new rule. Tell everybody to remove their shoes before entering the courthouse. So all this has to happen in RP anyway, but y'all are not doing nothing about it. Y'all just keep quiet. And people who throw shoes, you should also be ready for repercussions because that's how the RP will be. Then don't cry saying that नहीं नहीं ऐसा ही किया था fun के लिए नहीं. कोर्ट में आपको repercussions आएंगे. Might be the judge will get angry and if the situation was such a way that he's something important was going on and you disturbed the proceedings. He might even send you, might be for 200, 300 years of jail. That means he will send you for even 5, 6 hours to jail. You will lose a lot of things. Then don't cry for it. You initiate the RP, you will get repercussions for that RP also. So remember these things, guys. वन लास्ट पॉइंट कि पीडी का और डीओजे का रिलेशन जो है, पीडी डीओजे को काइंडली थोड़ा आरपी देना स्टार्ट करिए। अगर किसी के साथ आपका कुछ लॉयर के साथ आपका झगड़ा होता है जैसे रिसेंट केसेस में हुआ है, तो लॉयर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आइए में रिपोर्ट करिए, उसके ऊपर एक्शन होगा। और लोगों को भी ये बताइए कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो वहां पर बहस करने से, पीडी ऑफिसर के साथ या झगड़ा करने से उस चीज का फायदा नहीं है। कॉन्टेक्ट टू आइए और उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपको मिलेगी। अगर नहीं मिलती, यू कैन कॉन्टेक्ट द जज, वी विल टेक एक्शन ऑन दैट। बट वहां पर पीडी जो है वो काइंडली लॉयर से जो है वो फ्रेंडली तरीके से बात करो। लॉयर से भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि वो पीडी से फ्रेंडली तरीके से बात करो ताकि डिपार्टमेंट में इंटरेक्शन जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। दैट्स ऑल सर। There are channels, Saif Neon, there are channels for your high command. If you're PD, then there are channels for high command to talk to OEMS. There are channels for high commands to talk to each other. So y'all can talk through that. Y'all can tell your high command to talk to those people and they will talk to whatever issues y'all have. But we'll put a EMS, DOJ, another channel for y'all. Just request it. The admins will put that for y'all. So y'all can this. Rana, there is nothing like double charge. On top of that, if you are even punished for that case, your jail sentence will become less. So there is nothing called double. You'll get double charge. You are appreciated for your RP, so your even charges go less. Some charges will be free of. There are many things you can explore in DOJ when you want to do that RP. There are some lawyers doing small crimes and whatever. That's not a problem. TD doesn't get caught. If he gets caught, then the PD will move to cancel his license of practicing in the city. Yes, Nixa. That's the whole idea. That's called understanding more RP or indulging in more RP. More people should indulge this into their RP, right? They should push themselves to, file cases and all this, then just indulging into, using gun RP. That's all upon on people, the gangs, the civilians, how they want to initiate or how they want to progress their character. So it's a very good thing that, what you said, that people should indulge in more of not gun RP, but try to find other mediums to solve their issues. Yeah. Any more DOJ thing? Anybody wants to come and speak here about DOJ? Lawyer or someone? Want to make one more point, like especially when you I notice a lot of people or a lot of you guys give out loans to your friends. तो अगर देखो we also have IT department, तो अगर तुम see when you give out loans and all of that, right, you should go through this through I think DOJ, because then you have contracts, you are safeguarded by the DOJ in that case. Suppose you have a friend and he's just refusing to give you money, अभी वो
even though he's your friend, instead of just killing him and all of that, you can just go to the court, and the court will come ahead with some reliefs, like probably they'll auction off his house or his car or something and get you back that money. So there's a lot of RP that DOJ can provide you. There's a lot of relief that DOJ can provide you, especially in matters of money and properties and all of that. So I think you guys should explore it more. People just now, somebody, I think someone had written before, diversion, I think so, regarding people who don't come in the city of houses, businesses, and all those. The thing is, you have to do RP on this. There's nothing we can do. The whole idea is if you think that somebody doesn't come in that place, whatever it is, you can visit that area and then go to DOJ and tell them that you want to take this place, that nobody stays there. Then the DOJ will do their RP as how they have to do. They might check how long they are there in the city, how much fees they have paid and everything. If it is certain limit, they have not paid their maintenance fees or something, they will empty that place. Business is a complete different thing. It is all about OC thing. That only admins and management and the higher admins from another from the main server, they decide whom and how the businesses has to be rolled out. And besides that, anything else, like people are the gangs. Yes, gangs, now the actions will happen. After the update comes, and if the gangs are not to be seen as soon as the update comes, yes, we will be removing all the roles of those gangs. That will happen now. Minimum 6 people has to be in the city. And actually, anyway, for them also now they got pets. For the pets to get activate and do business and everything, minimum 6 people have to be there. But we are just quiet now because yes, people are bored of a lot of things and all this, so break is required. But as soon as the update comes, and after that any gang is not being coming in the city, yes, we will एक्चुअली मैं भी यही gang चीज and we सोच will रहा था, open बट those मजा नहीं है gang भाई, roles for मतलब some other पहले people वाला who वो wants नहीं to है do कि gang गाड़ी से RP. चलाओ तो बढ़िया रहे, फिर तो और भी बढ़िया होती। Actually, Shokan, for 20 months there is no bail. Bails are normally for more than 60 to 80 months. So you should never go and take a bail for 20 months. तो वो अभी स्ट्राइक पॉइंट चिपका I दो, think बिकॉज़ now उसको ऑलरेडी वन दे MKT चुका has a होगा, क्या good बोलते हैं? situation. Can you address that? No, I don't understand his thing, what he's trying to say. He's saying that he filed a case against a gangster, right? Now, again, he's calling him a gangster according to his RP. He's not proven gangster. Then they keep doing gun RP. That's their RP, end of it, MKD. That's their gang. They will always go in violence. They will make you fear. Your whole idea is you have to ask protection from the police if that is the case. The police might put you into some other place, transfer you, whatever. They'll give you protection, might be. Oh, if the things become more higher, DOJ might give you even class 2 weapon to protect yourself. But that all depends on your RP. You taking the case back and whatever is up to you. It's your RP again. You don't want to take case back, it's okay, because the state is fighting your case, not you. When you complain about something, about a criminal charge, then the state fights your case, not you don't fight your case. Now you think that the police doesn't do anything regarding your case or whatever it is. There are 2 reasons left for you. Now is to go to DOJ and try to DOJ and try to find a recuse from DOJ side, by might be they passing some orders and telling the police officers to arrest those people or whatever. Even if you're not satisfactory with that, that becomes automatically a reason for you to turn into a violent, because you have lost the faith into the law and order system. Then you yourself can pick up an arm to fight for yourself. That can be your progression of the story. But now the mayor will come. There's another additional thing which will come in the city, which is very important, is a mayor. Now the mayor is an important part for everybody. He has to talk to the civilians, understand their problem. He has to talk to business guys, even the gang guys and police and everything. He becomes the point where everybody tries to give his problems and solve those things as a politician. So yes, I hope you people will do that RP with him, and whoever him or her, whoever wins the election, and it's up to him how he fulfills those things. Now you all don't vote anybody. First understand your problems and see if the mayor candidate will fulfill your problems what you'll have, and then vote for that person. PD cannot do everything, Shrikant. It's not possible for them to do all the investigation. Now people should know what kind of RP they are playing. We will be taking actions. We'll be seeing that if people are selling S plus cars and all this on Twitter, yeah, he will be not getting Q anymore.
Suddenly, after some days, his S-Class car also will be vanished from his garage. So take care. When you all start initiating this RP, there are some other things which will happen to you in coming days. Your car might be not there also. So take care of doing those RPs. Okay, so let's finish this, guys. Let's go to the next list. DOJ is done. The third thing is gangs. Now let's touch, before going to businesses, I want to touch the gangs thing. Rez, please, you can, Rez, just pull Rez. Uh, yeah, you guys can ask questions on this till Rez comes back. Rez को कोई DM करो. किया था मैंने. Yeah, so whatever questions you all have about gang and everything, please go ahead with things. Diversion, I've already spoken on that. I think you didn't hear. You can just go to the NoPixel channel and rewind and hear it back. Now Raz is suppressed. I think he's not able Just to. bring him, no? Admin को ही लेके आओ ना उसको. Lokesh. हाँ एक मिनट. गाइस राज भाई वापस रिक्वेस्ट करना आप नीचे. गाइस नीचे चला गया. To request again. Hey, he's back. Hello. Yeah, Rez, you can go ahead with the criminal side, everything. What rules have been lifted and all those things you can tell them. Yeah, जो पहले restrictions थी, everything has been lifted off. There is no more rules, you know, regarding, except few rules. One of them is जो वो होती हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग पीडी पिल बॉक्स, वहाँ पे यू कैनॉट टिल जब तक लाइक हमारे आरपी का लेवल उतना नहीं हो जाता, फॉर नाउ यू आर नॉट सपोज टू यू नो कॉज हैवॉक इन दीज प्लेसेस. अगर लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई बंदा पकड़ा गया है, ही इज कॉट एंड उसको पीडी पे ला चुके हैं, सो ठीक है, दैट सिचुएशन हैज एंडेड फॉर हिम, एंड the other guy who's caught, he can you know like show the other side of the RP, like ho gaya, like you took an L, now you can shine as a role player and you know do whatever conversations with police, try to get your sentence down and everything. So pillbox police in and in jagah pe, like you should not, I mean, do like इन दोनों जगहों पे अभी गैंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा मत करो, ठीक है. दूसरी चीज, दूसरा जो रूल लिफ्ट नहीं हुआ है इज द ग्रैनी थिंग. अनलेस यू हैव सम रियली समथिंग दैट यू नीड टू कंटिन्यू इन आरपी, अगर तुम्हें किसी को ग्रैनी पे उठा के कुछ बात करती है उससे, दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू टू कंटिन्यू आरपी, ठीक है, यू कैन डू इट, बट सिर्फ उसको उठा के just to you know insult him again after you have downed him, and then you are reviving him up again so that you can you know like insult him in RP, जो भी है, like that should not be done. उस इन दो rules के अलावा everything has been lifted off. Gang wars पे there is no restriction on how and why you are supposed to do it, but still, I mean, that will be low effort. You're not starting a gang. You are starting a gang war on a very like you know minuscule reason. और regarding और जितने भी rules थे regarding gang criminals, everything has been lifted off. You guys can do whatever you want, be creative, everything. Yeah, that's it. Let's just look at some questions people have raised about gang. Just look at it, and if you can answer on those basis. 1 second. Gangs actually not initiating enough RP before using class 2 weapons and killing everyone on their way. Gangs should understand once a suspect is in cuffs and brought to pillbox, shooting down cops and anyone therein. Pillbox हाँ मैंने बता दिया ना अल्फा. I have seen many times if one doing a robbery and gunpoint a gang member instead of showing some fear, RP gang members just call his whole gang and point a gun. See, if somebody is on gunpoint and he's using his radio or calling someone, I mean,
ऐसे तो अगर कोई कर रहा है तो I mean he should get a ban because that's not fair RP. But yeah, I mean, it doesn't matter if you're a gang member. Like, if somebody has a gun to your head, you should agree to his demands. अगर ऐसे कोई कर रहा है तो you can. I mean, I'm not a fan of asking people to raise tickets on forums, but इन सब चीजों के लिए I think you can. If some situation or gang fight which go out of limit, admin needs to involve so that it can end in a better way. But we admins don't want to involve in any of the fights. We don't want to indulge. We don't want to dictate. We don't want to tell you how to fight, when to fight. We don't want to involve in your RP. You are free to do whatever you want to do, but make sure that it's fun for both the sides. No, that's not about server or department thing. It's so okay. Okay, बता रहा anything था else? वो कोई ऊपर gang के दे रहा था if there is anything regarding gang that you need to किसी gang member को कोई doubt है तो you can ask me. Anybody wants to come and talk here regarding this gang thing or any point you want to raise from the gangs or not from the gangs also? Anyone can ask now. We can call them here. कोई है anyone? you can ask for PTS or Yeah, there's one safe neon. surprise regarding want to talk regarding as the AMS thing though, not this thing. Gang, anybody wants to talk anything I more? want to say something about gangs. अंकित कौन है? अंकित को बोल रहे हैं. There are people who are asking. Just invite them to speak. Wait though, wait. Yeah. बुलाया उनको? हाँ तो उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बोला अभी. Invited. Hello, hello. This is afternoon. Actually, I have a question. Like, मैंने एक चीज बहुत ज़्यादा notice की है from the server side. I'm gonna complain is a suggestion from everyone. I have seen the people like getting bored and playing. Like they are getting bored. They think that sometimes they don't have enough resources to RP with, and they think that they're getting bored. I just want to say something like I just wanted to let them know please there is a difference between playing a character in the server and playing yourself in the server. आप लोग I have seen most of the people they play their not their character, they play themselves as a character. Like अपने आप को खिला रहे हैं सर्वर में, ठीक है, वो अपने आप को गेम खिला रहे हैं और फिर they complaints from the staff or जो भी है that we are not having fun anymore and we are like having enough resources and this and that. I request at least the RP and the RP is the one of those things like आप आप अपने करेक्टर को एटलीस्ट एक दफा खेलो, लाइक अपने करेक्टर को एक दफा खेलो, नॉट अपने आप को खेलो कि कम से कम यू शुड नॉट आपको कुछ नया कुछ के देखने को कुछ मिलेगा। अगर आप अपने आप को खेलोगे, आप रेगुलरली वही चीज़ करोगे या चाहे आप नया कैरेक्टर बनाओ, चाहे आप पुराना कैरेक्टर करो, आप वही बूस्टिंग करो जाके करोगे, वही चीज़ दोबारा करोगे, देन डेफिनिटली यू गोना गेट बोर्ड। आप अपने आप को एटलीस्ट अपने आप को एक्सप्लोर करो फॉर दैट थिंग कि प्लीज़ ताकि आप लोग कभी हमेशा बोर ना रहो। आप यही और बार-बार वही एक-एक चीज़ करोगे तो यू विल डेफिनिटली गेट बोर्ड, हमेशा आप बोर रहोगे, ठीक है? आप लोगों को आपको एक क्योंकि आप यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। दैट्स एक्चुअली इशू जो मुझे आई थिंक सो कम्युनिटी के मैंने बहुत सारे चेक किए लोग के जो लाइक आई वॉच एवरीवन स्ट्रीम्स के जो लोगों के रिएक्शंस होते हैं, ठीक है? एंड जो रिएक्शन होते हैं कि लाइक आई एम गेटिंग बोर्ड फ्रॉम दिस शिट बिकॉज़ वी आर नॉट हैविंग द फन एनीमोर, लाइक दे आर सेम स्टफ, आई हैव डन एवरीथिंग एंड आई डोंट हैव एनीथिंग मोर टू डू एज़ पर सिविलियन आरपी, एज़ अ गैंगस्टर आरपी, एज़ अ पीडी आरपी, ठीक है? तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्ले योर कैरेक्टर इन द आरपी। अपने आप को मत खिलाओ,
अपने करेक्टर को खेलो, आप जिस तरह आपने बैक स्टोरी बनाई है, आप उस तरीके से आप अपने करेक्टर को खेलोगे, यू विल डेफिनेटली गोना हैव फन मोर, ठीक है, देन प्लेइंग यू एज अ करेक्टर। आप ये चीज़ मैं आपसे ताऊ कम्युनिटी से डिस्कस करना चाह रहा था, ये चीज़ ताकि ताकि they can understand, they will understand and they will never get bored because of this. That's the actual fundamentals of the RP actually. Normally, you don't play as Uh, you play as a character. But Tao, it's yeah. yeah. I just want to also mention this thing. There are a couple of people. Uh, I have reported few. We have reported few people. Every in every department, there is people like they are OC friends, makes a character, and do the RP that like they know from long time, and they do this shit. Like that's actually thing. This is that's the difference between the, like you can say, playing you as a character or playing your character. तो काइंडली Correct. अगर जी That's very एक्चुअली much ये बहुत correct. ज़्यादा ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा तब मैंने नोटिस किया है, नॉट फ्रॉम द ईएमएस साइड एंड अदर गैंग स्टफ से भी, दे मोस्टली आर द गैंग्स पीपल जो है, दे आर नॉट लाइक ये सारे लाइक, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी गैंग सर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दैट इफ यू हैव मेक द गैंग, यू शुड एक्सप्लोर द न्यू पीपल इंस्टेड ऑफ हैविंग द ओल्ड फ्रेंड्स इन द गैंग। आपको बेशक आप ओसी फ्रेंड हो, बेशक आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो कि आप लोग घूमते रहोगे साथ हमेशा, आयरल फ्रेंड्स होंगे, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को कैरेक्टर के हिसाब से चलाओगे, यू विल एटलीस्ट हैव मोर फन लाइक वी डू। ठीक है, अब पीपल थिंक दैट ईएमएस इज वन ऑफ द लाइक बोर सबसे बोर्ड डिपार्टमेंट है, like they think that this is one of the one of the board department, like we actually enjoy the EMSRP, ठीक है, this we actually enjoy the EMSRP because we do different stuff, like as we know, I think Nana is not mentioned here right now, we actually do the multiple stuff, like to have fun with the people, and you can say ताकि हम भी बोर ना रहे, ताकि सेकंड वाले को भी आरपी मिले, और लाइक दे शुड एंजॉय द, वी शुड एक्चुअली एंजॉय देम आवर आरपी, दैट्स एक्चुअली थिंग, कम से कम ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को बस ये चीज देखने कि आप लोग ओसी को चीज को थोड़ा सा माइंड से, आपके स्ट्रीमर्स मैंने एक्चुअली नोटिस किया कि समटाइम्स स्ट्रीमर्स जो है, नॉट पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन दैट्स एक्चुअली फैक्ट कि स्ट्रीमर्स एक्चुअली फैसिलिटेट देयर कम्युनिटी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग देयर कैरेक्टर। ये चीज़ मैंने बहुत सारे जिससे ओसी रेंटिंग कहते हैं, तो दे एक्चुअली डज दैट शिट, और फिर आपको पता है कि फिर वो गन फाइट और वो होता है, ठीक है, एंड दे आर कपल ऑफ पीपल, आप उनसे ओसी बात करो, दे आर वेरी नाइस पीपल, एंड दे हैव टू चेंज देयर कैन से, आप उनको उनका रिएक्शन अपने आप को बदलना पड़ता है, दे हैव टू अपने आप को पूरा गालियां देने तक अब मजबूर करना पड़ता है फॉर देयर स्ट्रीम्स, ताकि मैं एक गैंगस्टर दिखूं। गैंगस्टर इज नॉट लाइक समथिंग जो आप सिर्फ गालियों से कर पाओगे, गन से कर पाओगे, आप वर्ड से भी गैंगस्टर बन सकते हो, द गैंगस्टर आप अपने आप वर्ड से भी किसी को फंसा सकते हो, ठीक है, आप वर्ड से भी उसको किसी को पॉइंट आउट कर सकते हो विदाउट यूजिंग द बैड वर्ड्स, ठीक है, आप वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। सेकेंडली एक और पॉइंट है कि जो आई थिंक सो मेरे ख्याल से केविन ने मेंशन किया था, जो चेक इन वाली चीज़ थी, वो मैं अभी एक्चुअली मेंशन कर देता हूँ। वी हैव द फैसिलिटी ऑफ वी एक्चुअली हैव द फैसिलिटी ऑफ द डॉक्टर We साइनिंग। have already mentioned that. No need to like re-emphasize that for that point. ओके, Uh, so moreover this is the my actually suggestion for the community, so that they should understand the difference between the difference between the character playing and playing yourself in the server, क्या कि so that they should will never get bored every time, and they should never like sometimes वो ऐसे होते हैं कि सब Because लीव the करने point, के। that's a point everybody agrees on. But it is very hardly some people follows that point in their RP. Most of them don't do that. Yeah, actually that's It's, why I'm if it start taking action on people on all these bases, that will be like 80 to 70% people will be banned in the server, because we know that a lot yes. of gangs are doing RP on sitting in their own discords. They do all Yeah. those violations, and they get motivated also by their own chat and other RP players. They get motivated. People don't show, no, point out those hypocrisies to them. उनके खुद का चैट भी पॉइंट आउट नहीं करेगा, नहीं तो दूसरे आरपी प्लेयर्स भी हिपोक्रेसी को पॉइंट नहीं करते. दे फॉलो देयर स्टेप्स एंड देन दे आल्सो डू दैट, and there are a lot of things which get destroyed after that. Now that this everything can stop only once when a person understand that his character loses, not he himself. ये तभी पता चलेगा. But the maturity, उसके लिए maturity मांगता है.
In RP, players should become matured for that. I agree. Yeah, Very far लेकिन away. एक और लेकिन second point है कि for the PD and the gangsters, all of them के I've been following the main server from long time, and there's a conflict that the main server did something wrong, and something like happened with them कि उनको mostly जो streamer छोड़ गए जिसकी वजह से, so PD I request PD के जो भी अगर कोई ऐसा कुछ like guns के ऊपर कर रहे हो तो kindly एक कुछ चीज़ देखे कि बैलेंस आउट हो, ताकि नेक्स्ट कम्युनिटी प्लेयर जो है वो हर्ट ना हो और तंग करना उसको, लाइक वो डिसअपॉइंट ना हो इस चीज पे। लाइक कुछ ऐसा रूल ना बना दे कि नेक्स्ट वाला सर्वर वाला जो प्लेयर है कुछ खेलने वाला है, सो दे लीव द डिपार्टमेंट। सो आप कम से कम गैंगस्टर और रेबल्स के बीच में थोड़ा सा इक्वालिटी की, थोड़ा लाइक गन्स के बीच में एक बैलेंस रखे ताकि नेक्स्ट वाला जो है हर्ट उसकी आरपी सिचुएशन खराब ना हो। दैट्स एक्चुअली हैपेंड इन द मेन सर्वर। सम आई हैव बीन वाचिंग देम, आई एम फॉलोइंग देम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, और जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो आई डोंट वांट टू हैपन इन दिस सिटी सर। Okay, that's great. I hope everybody understands what he said. It's every time we repeat this thing. So today someone from outside came and told all this thing. So at least respect that people feel these things. You might be a old RP player, a matured RP player according to you, but as people are watching you, and this is the feeling what the community is holding on you all. So stop it and try to show the community that you can be a better role player than being a OC role player. So you Because can the gunplay every time there's, I think, don't know, there's a between different, I know, issue with the Asian community, they like gunplay, but there's a sometimes there's a fun RP. You can actually have a fun RP. You have actually have some content, like there's every time I request कि हर time robberies जो होती है गन से ना खेलो, use your skills, like driving skills से भी robberies हो सकती है, जैसे main servers में भी हुई है, like they did the one of the biggest heists in the server without shootout and without the guns. So we can use that skills to make a better content. आप अपने कंटेंट के लिए भी कर सकते हो, और लाइक गन प्ले से एक गन प्ले वाली चीज है वो उससे भी हट सकते हैं सर। It's correct. Yeah, so we all have to focus there. We cannot cheat. This is the fifth community meeting, and we have been repeating this thing, things again and again to everyone. Now we cannot catch somebody's ears and tell him to do those things. It's up to them how they will go ahead. So yeah, good suggestion on those things. Besides there, anyone else wants to talk about gang RP thing? Otherwise, Rez, just some questions have come of gangs. Just finish those, and we'll wind up soon. Okay. Why gangs sell class 2, class 3 weapons to civilians? Almost every gangs. So it's up to them. Like, agar if they are doing something like this, then it's up to the gang, right? You cannot dictate anyone कि इसको मत बेचो, उसको मत बेचो. अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं, then it's up to them. Like, and why would a civilian want a class 3 weapon, like, in the first place? You get it? See, काफी सारी चीजें हैं. Like IRL doesn't make sense. IRL से अगर compare करोगे, doesn't make sense. It's after all Grand Theft Auto, right? Grand Theft Auto, the game itself is made on the principle of gangs, criminals, shootouts, police, and everything. RP, of course, like we have to role play out, but wo elements, they always gonna come in, your everyday situations. So at the end, like, जो भी अगर वो किसी को क्लास 3 भी बेच रहे हैं, इट्स अप टू देम, लाइक उसके ऊपर भी बहुत कुछ आरपी हो सकती है. अदर गैंग्स कैन पुट अ क्वेश्चन टू इट दैट व्हाई वाज दिस डन, एंड लाइक दे कैन deal with it ki because of this. I mean, this, I think so this should be handled in RP, not in a community meeting. और कुछ है क्या? I don't think so. Okay. So besides this, now we have touched the gangs and everything. Anything, any other things which we have to talk about, or anyone else wants to talk about something else? Please let us know now. Now, I think you should explain about the mayor ka election jo aane wala hai and about the power, so that there is a clarity and who's going to stand and what's going to happen. Yeah. So at least more detailed insight onto that. Yeah, we are actually mayor election. So most of the citizens know now it's already been declared. So let's clarify the things again. It's already 2 weeks given for people so that they don't indulge into any criminal activities or something, so that they have a record in their MDW.
It's also a time for the people from the gangs, if they want to put any of their candidate as a contestant, it's time for them to remove that person out of the gang so that he doesn't indulge in any activities. So we'll declare the nominations on 24th. So the DOJ, you'll have to come to DOJ. All the setup will be at DOJ. You give your name, you give your 15 people, the criteria, what is given, you fulfill that criteria and file your nominations. Then you have 1 week of campaigning. For campaigning, we will provide you all some things such as we will give you all platforms, or if you can have a public meeting with people on the Legion Park or wherever you want to have, we will set up the stage and everything. Even anybody like a public unit wants to have debate program or something like that, they can come up with ideas. Just let us know in the forum that you have this idea to host or whatever it is, and we'll provide you whatever required things for you to do that event. So there will be 1 week. We expect everyone, including gangs, civilians, and everyone to be part of this mayor election. We want to be part. We want them to even register their vote, indulge into this, so it goes a better way and everybody gets an interest in it. Okay, so any questions you'll have or anything regarding mayor, anybody can contest in the city till he fulfills that criteria of contesting. Besides that, any questions are there or something like that, you can ask us in the forum also. Any clarification on this May RP? But yes, we want to make it as a little bit more important to most of the people in the city. So everyone should get, start talking about it, trying to find the best candidate. Because let me be very straight to you all guys. If you all get a good candidate, your RP can be better. Because he can help take care of a lot of things inside through his own system, what he gets provided after becoming a mayor. If you all select the right person giving the interest, you all will not require much of the admins to be part of things of yours. You all will be able to find the solution in RP itself through the mayor, who is again accountable for a re-election when he comes back for voting. For accountable to, if he had fulfilled your wishes, whatever the things what you are, you can give him the vote according to that. So this will everything will rotate into RP. So Also, I yeah, think the opposition will also play a crucial role in this there's because no there would be there's no counter. The one opposition. who has lost can obviously during his There's tenure can nothing. counter. There's nothing called one who has lost. NoPixel doesn't have all those things. It works on an American system of elections. There's nothing of lost. There's one candidate who wins. He continues his work. The opposition who loses, if he wants to continue as a politician, he can continue his RP as politician by challenging everything what he does through the mediums inside. So then people like him and next time vote for him. That is all possible in the RP. If that person want to follow his RP, the guy who loses. Okay, so there is nothing like, he's there inside the cabinet of decision, nothing. Normally, the mayor's function of duties also are very cleared. The mayor's function of duties are to look at the problems of everyone, look at the taxation, because the mayor holds the state treasury and he is accountable for the salaries of police, EMS, DOJ, and all the government departments. So his job is he can increase the taxes on certain products, he can decrease the taxes on certain products, that he can do. Besides that, he can appoint a private security for himself and all those things. He can give concessions to people, everything and all this. He has a lot of roles to play in the city. He can also propose new legislations in a proper way by listening to people, which can be framed into law in the city in MDW. So all these things, he has lots of things to do. In at least in NoPixel, he has lots of things to do because there are features for him which he can do with, play with. Oh, sorry, RP with. Saud, I have a doubt. I want to clear it out. Yes, please go ahead. तो अब मैं देख रहा हूँ पीडी को और सिविलियंस को एक चीज से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है और पीडी के कुछ ऑफिसर्स को Let's go. Ew. Chiara, क्या पे सुनो खाएगा? Rahul.
436 requesting rider. पैसा नहीं है जेब में खाली आज तो होगा I'm sorry. अच्छा म्याऊ क्या तो कौन चुनेगा कौन चुनेगा नहीं पता ये तो लग रहा है Four three six 10 8 requesting this get it meow चले यार मीटिंग में भी नहीं लेते हैं मतलब Guys, इधर कोई बैठे अगर आप लोग इधर नहीं है तो please leave this area. I'm telling you, it's a waste of time for everyone because here people are come for community meeting. You all are doing something else somewhere. Just showing a presence doesn't make any sense. There are questions which are put here. If you can answer them, then be here. Otherwise, just go from here. I'm being very straight. I'm sorry, sir. Just give me 2 minutes. I'm eating actually. Just give me 2 minutes. I think I can speak for roosters if people are saying that it's Yeah, a bit please, inactive. please. So the thing is, we hire employees on like a daily basis, and we do mass recruiting and trainees, and there's an entire you could follow like a script basically that they have to do this, give a certain amount of hours extra. But we cannot control the people who can enter the city or not. We have shift managers, but they also should be able to enter the city, and that's like a major problem for a lot of our employees. Now, another reason is that the employees they give a lot of time there, they work their shifts and they leave. In between shifts, there might be no employees in between, or at times it just blatantly it gets tiring for employees to stand there because there's not much interaction. So that's a lot of like one of few reasons why there may or may not be people. But we try our best to keep it open all the time. In क्या fact, बस some गाड़ी of our अबे मैं तो सार्जेंट you तो see the केडी हूँ HY boys आजा themselves, we come गेड़ी in मार रहे open बस roosters आजा and we गेड़ी मार stand रहे there and we try to keep the business open all the time. नहीं गेड़ी But it's physically अभी तो फिलहाल impossible. तो I गेड़ी mean, it मार is रहे possible, but it is very, very tough to keep it open 24 hours. अभी वो टाउन हॉल की मीटिंग चल रही है ना फोन There are problems such as सुन रहे civilians हैं also should indulge. They should go to those restaurants and give them business so that an RP is created there. They just cannot complain saying that nobody bees there.
it is also a duty of the civilians to go and indulge into RP. But I think Rooster's Nest RP will increase now more because of the Rooster's Hotel which will come. So people might buy rooms there and possibly there will be more people entering into those places. Ubu Cafe, Cosmic is not here, so I can't talk on their behalf. But if anybody else wants to talk about this business thing, please go ahead. इस बाइक वाले को धरो Anybody, any other business owners want to come and talk here? Hello, sir. I am a trainee in OO right now, so I have been in the city for like around the daytime, evening, and even the nighttime. Some days I am not there. So basically, I was for the night shift, but uncertainty. I do the whole day without having like there are customers coming in like a 1 or 2 hours. Sometimes on the rush time it's like 6 to 9, and then at night there's like complete nothing to do. You have to just stand there without looking at the tree in front of you, and that's it. That's the whole thing which we have to do. Just stand there and wait for the customer, which we post in Twitter also. But the customer line is very less at night. So what we do is basically we close it out, or sometimes there are not even enough people to like come inside the city because it's already late at night, and some people don't doesn't wake up. So at night, so doesn't come in the city. So basically, it's like that. Only one guy standing there. It's completely boring for all of us to do it. And yeah. And secondly, sir, the management of our U Cafe is like in the morning there are a lot of people. In the evening also there are a lot of people, but at night it's completely dead. So basically, we can understand that everybody has their personal life and a life around it. So we can't do anything about it. But at least we are trying to make the U Cafe available to everybody. But you have to come and give us something to do other than just standing there and watching the tree. It's literally like that boring. Sometimes I even give my number at the yellow page so that people can call me up. Even if I'm doing something, I just come back and I fulfill their needs. Then I slowly when I go back. But there's a constant rush for the food to come in, and they need to leave. It's like they're like speed running the thing out. They don't want to stand there waiting for the food. They just want to get it and get lost from it. That's my only यहाँ पे point जाके अंदर जाके for टैकल कर the U देना, ठीक Cafe. है? आता And है ना? basically the We cannot change Nixa, anything like that. We cannot change Rooster's Nest and bring in the city because somebody is comfortable to just do RP inside the city. The whole city you have to do RP. अगर किसी को सिटी में बताया कि सिटी के एंड में 2 मिलियन रहता है तो नहीं जाएगा उधर आरपी करने के लिए भागेगा उधर. So that is how it is. So you cannot justify on things that you have to be brought in the city. It's all on how you do. Rooster has its own way of doing RP because it's a restaurant based on its own concept. Officer yellow. So people have to move. People have to go and do RP there. They, just because you कल बोलेंगे कि गने मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ रेस्टोरेंट मेरे घर के बाहर ही लगाओ आप भी लो सर मैं 2 स्टेप जाएगा और खाना खरीदेगा ऐसा थोड़ी होता है वैसा नहीं होता है So it doesn't शेखर work that way. हैप्पी बर्थडे भाई वो दुश्मनी है भाई Diversion, शेखर you इधर can नहीं say that इधर these है। people are not playing Yeah, in the Shekhar. city. Oh, Mind wait, me, they wait. are playing. For that, we Oh, cannot wait, just wait, go wait, on ये reviewing दुश्मन people's warehouses and houses. There is a RP for शेखर that. हैप्पी बर्थडे You think that the somebody is not Yeah, thank you coming so and you much. want to buy that place or Yeah. something, you need to go to DOJ. DOJ is the right place which will tell you that if this they will release this, they'll check how long the maintenance fees is not paid and everything, and according to that they will empty that place. One more thing, diversion. You are talking about the hair salon and the south side pawn store. Like, those businesses are like right now not available, so they are closed right now. No. His कहाँ बंद है? ना ना तो like ये पूछ रहा कि like Rockford Hills saloon and pawn store. वो business है नहीं Those, city में. ah, Diversion वो is नहीं. talking about them. They are nothing. Yeah. Then they'll come. You'll come to know that they are there. Okay, Hello. so let's. हाँ कॉस्मिक Yeah. एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो के लिए. Yes. क्या हुआ sir? Like There's a question you can go with that question. Somebody has written in the list. Srikanth is asking the question. You can see upside. Shrikant, right? EMS wale, right? Yeah. I can't see their question. He's Just if you asking could like repeat. Roosters I business can and after ask them. the TP Minata Okay. business. It will.
Actually, we do If I can care. Like, अभी हम लोग, it's regarding the employees, right? नहीं हो The रहा question. Employees and the closing So time. the Like whole idea is these people are मेरी शाम complaining किल now that the owners of the stores and anything are not doing RP. They have left those places to the employees and they themselves don't come there. So they are saying the responsibility of the owners should be they initiating RPs when the place is given to them. They should do that RP, not to leave it to their employees. That's the question of these people. Yeah, actually, जब like I was active, तो हम लोग तो मोस्टली उधर रहते ही थे, एंड इवन जो भी लोग आते थे आरपी करने के लिए, वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ आरपी. वहाँ पे सिंगिंग विंगिंग भी होता रहता था, चीज़ें इवेंट्स वगैरह होते रहते थे. सो आई टुक अ ब्रेक, एंड इवन आई थिंक टोक्यो इज देयर, स्टिल देयर. लेट्स गो शी डू like comes online in RP and do RP and thing, and also उनका EMS से भी RP हुआ था कुछ इवेंट के रिगार्डिंग. तो वो सब चीज़ें हो रही हैं, इवेंट्स प्लान हो रहे हैं ऑलरेडी, एंड वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट. एंड ऑल्सो वी आर ऑल्सो मैनेजिंग फ्रॉम, लाइक अगर मैं ब्रेक पे हूँ तो आई एम ऑल्सो मैनेजिंग इट फ्रॉम OOC साइड. इफ आई एम नॉट कमिंग इन RP, इफ इट्स इम्पॉर्टेंट, आई डू कम इन RP एंड डू द RP of that. But yeah, so एंड रिगार्डिंग द एम्प्लॉयज, तो हम लोग ऑलरेडी लाइक सोच रहे हैं बहुत कुछ एम्प्लॉयज के लिए, कि उनको हम लोग थोड़ा लाइक सैलरीज देना स्टार्ट करें एंड ऑल. एंड जो मैनेजर्स हैं, वो मैनेजर्स वगैरह तो ऑलरेडी रहते ही हैं वहाँ पे. अगर किसी को कुछ भी उस रिगार्डिंग कुछ करवाना रहता है, कुछ इवेंट या एनीथिंग, तो उस चीज़ के लिए उनके साथ बातचीत कर सकते हो आप लोग एंड ऑल. बाकी इवेंट्स विल बी कमिंग बहुत सारे ओवू पे इन दिस इन अपकमिंग डेज, तो उस चीज़ की चिंता नहीं करो. एंड ऑल्सो ओनर्स विल बी ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम नाउ ऑन, like from tomorrow or day after tomorrow mostly. But Tokyo is also always there, like mostly. But Okay, so let's come to this thing now. Cosmic have assured that he's coming. Whatever. What you I will prefer now. Let's not just put mud over the problems which are there. What do you guys think for a community meeting right now who are present here? Do you all think what exactly are you all thinking about civilian art? Do you all think it's colliding with the business? Gang RP. Do you all think that the civilian owners, the shop owners, and everything should be out of the gang RP or something like that? Are you all thinking on those terms? What is your thought about it? Please write in S and no, whoever want to write. Just tell me, do you all want, I'll be very straight to the question again. I will ask you all, is simple thing is, do the community thinks that the businesses which are there in the server should be not owned by gangs? Yeah, definitely. I think, Wait, white collar Imran, it's businesses. community which has to tell. Just write yes or no. Okay. Yeah, Imran, what you were saying? I think, starting say what even I was telling you, and we were discussing the same thing that, white collar businesses should be, should remain away from gangs. Because already they have some things to do in the city where they are selling guns, they have, weed runs and everything. So legal businesses should have people who wants to, get involved into civilian art. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी एक डॉक्टर को भी कुछ चाहिए तो एटलीस्ट ही शुड हैव सम डिफरेंट बिजनेस अपार्ट फ्रॉम medicine, just staying at the pill box. So he should have something else also to do in the city. So if they are interested and they have they are white collared, so why not? Imran, one more thing ये है कि like what if a civilian takes a business and he joins the gang after that? उसमें क्या कर सकते हो? He can leave the business actually. Yeah, That's he the can possible. go join Yeah, there the is gang. a solution for that. He can leave the business, so he can tell the. See, there are two types of businesses in the city, guys. What we are talking right now are the businesses which are given by admins. There are another type of businesses which are bought and purchased in IRL. Those businesses we cannot talk about because it's bought by someone else. Now it's up to him what RP he will do and whatever he will do. But yes, he has bought the business, might be to do a civilian RP or whatever, it's up to him. But the most number of businesses in the city are given by admins. Now I'm talking about these businesses which are right now functioning, not the one which are coming in future. The coming in future are all paid by the people, so those are different. So the right now which are running in the city, do you guys think that it should be differentiated from now on? Like the things should be this way, that
the gang should be like busy with their own things, and the civilian should be doing the part of the civilian business RP. So that's what the question was, and most of them are saying yes. But still, we will go ahead and we'll put a poll for it. I think so. We should put a poll for it for the whole community for 2 days at least to vote on it or something, and then management can take a decision on that, and might come with after the new update which is coming. हाँ You are training दे रहे हो सिचुएशन क्या? होता है कि बंदे के पास कुछ गलत काम कर रहा है तो हम फ्रिस्क करते हैं then Mm-hmm. we see a large bulge like if you're giving someone an entry inside the MRPD you need to frisk him or Okay. and Okay. ask him कि आपके पॉकेट में large bulge क्या है ये are you carrying any Mm-hmm. lethal Mm-hmm. so you know have you ever seen American cops asking this question do you have anything that can harm me poke me in any way so Uh, that means are you carrying any weapon lethal or any pointy object so any pointy okay. object is a metal pointy object that is चाकू वगैरह समझ रहे हो Okay. so और the सर्च हम कब करेंगे? सर्च हम तब करेंगे जब प्रोबेबल कॉज है लाइक फॉर एग्जांपल कोई बैंक रॉबरी करके आया ठीक है उसको Okay, सस्पेक्ट को got पकड़ it. लिया जेल में ले लिया अब सर्च करना उसको प्रॉपर Got it. Is this? So there is one more option, seize positions. ठीक है F1 में जाना पुलिस एक्शंस में यूजली seize positions. Oh, for me the seize positions गायब हो गया. Fuck. One sec. मैं आ रहा हूँ. कहाँ है तू इधर नीचे रह मेरे को कर सर्च कर रहा. You can't. रुक मैं तेरे को करता हूँ तेरा तो तू दिखा रहा है पुलिस एक्शंस this one ये आएगा ऑप्शन ठीक है Mm-hmm. seize oppositions. When you do it जो भी उस बंदे पे होगा वो सब उसकी जेब से चले जाएगा टू द पीडी लॉकर और ये कब ही करते कैन हैं? क्या व्हेन प्रोसेसिंग अ क्रिमिनल इन सेल्स जैसे उसका लाइक आप एविडेंसेस ले लेते हो उनके पॉकेट्स वॉकेट्स इन सब का सो क्या कहते हैं फिर लाइक जो भी लीगल चीज़ें आप आपने रख लिया देन आप उनका सीज कर देते हो. ये मैं दिखा भी देता हूँ. प्रोसेस करने के बाद ना सो लेट्स से यू ब्रिंग अ सस्पेक्ट ठीक है खारुल वाला सस्पेक्ट राइट उसको तुमने सर्च किया तुमने उससे ले ली स्कारल ठीक है डन है अब मुझे कुछ फालतू चीज़ें नहीं लेनी और सीज पोजीशन कर दिया डन हो गया मेरा काम यहाँ पे हो गया दैट इज द थिंग ऑफ सीज पोजीशन डन छोड़ तो दे नहीं स्पाईबोर्ड सब समझ आ रहा है आप ऐसे बन के जाते हैं Done. Is it me or I About can't hear how to radio? get these positions back? Either they can get it at like prison, ये Boiling Brook, यहाँ के You're reception on पे radio मिल 5, जाता है dumbass. or they can come at MRPD and reclaim from here or okay there is another PD Vespucci PD Guys, go ahead उसके तो over to reception and पे grab मिल your जाता है friend, and okay? VCSO PD के भी Don't forget that. okay Officers, sirs. मल्लू आ रहा है सीवन पे लिखो यार बहुत जल्दी आ अरे गया आप लिख दो सर. yeah seize position search for is now एक और option है this guy is gonna stop or not okay अच्छा मुझे ना एक क्वेश्चन पूछना था हाँ बहुत बहुत मन में था कि मैंने नोटिस किया है कभी कभार अगर पीडी देखा है मैंने आरपी तो मैंने ये नोटिस किया है कि आप लोग ना क्रिमिनल के पीछे भागते ही रहते हो बिल्कुल जान दे देते हो आप लोग उसे टेजर क्यों नहीं करते हो there is a reason teaser is a like you will not escalate your force so force of escalation क्या होता है कि if a person is on foot and he is giving a chase on foot so you chase him if you are on foot ठीक है teaser तब यूज होता है जब वो अपना force escalate करता है for example he come and tackles you ठीक है this is a NRP reason in we our can tase him ठीक है we can tase him we have full authority to do that but हम we करते don't नहीं tase him because मजा आता है फोन फुट चीज देने में हाँ. literal मजा आता है ओके नहीं मेरे को होता था कि मैं देखती थी कि हाँ बहुत लंबा स्ट्रगल चल रहा है 5 मिनट से भागे जा रहे हैं हम टेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं लाइक कंट्रोल नहीं होता है कि निकालो टेस्ट कर दो क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे एक लगा और कुछ चीज रूल होगा एक और चीज बताता हूँ टेजर की हाँ ना रेंज हाँ ज्यादा नहीं है इट्स लाइक मोस्टली 5 अभी मीटर लाइक मैं 5 बोलूँ मीटर भी तो नहीं है बहुत छोटा है जैसे ये देखो and ये नहीं जैसे लगा अभी जो सिचुएशन हुआ था ऑफ द 90 मैं बस क्या कहते हैं हुड की बस वो बगल में था गाड़ी के अगल बगल में मैं टीज नहीं कर पाया सो समझ लो मैं टीज कर रहा हूँ बार बार तब भी अभी नहीं दे हुआ. मेरे को बिल्कुल पास में खड़ा है ना मेरे को टेज लगेगा
ठीक है, इतना दूरी से नहीं लगेगा, इतना ठीक है? दूर इतना इतना दूर सिर्फ लगेगा यहाँ बस। से। एक और बार और दूर जाके लगाना इनको। लेकिन ना टीजर का जी। भरोसा भी नहीं है नहीं मुझे। लगा। और ये तो जस्ट स्टैटिक था। अगर ये दौड़ेगा, हाँ। दौड़ी हुए, एक चीज दिखाता हूँ। दौड़, जैसे 1 फुट चीज है, ही इज रनिंग, ठीक? सर्कल्स हम्म, नहीं है, सीधा चल। हाँ, सो इट्स हम्म। रियली हार्ड टू टेज हिम इन अ फुट चेज। और आप तेज लिट तब और मा आप तेज वहां नहीं करते हो जहां पर बंदा पानी में जा रहा है, ठीक है? पानी में इलेक्ट्रिक शॉक लग के मर सकता है। कोई ओके। सीढ़ी वीडी पे चढ़ने पे तेज नहीं होता। दैट इज ऑल रिटन इन एसओपी। तो एसओपी जब आप पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि कहाँ ओके। और कहाँ पे तेज नहीं होता। हाँ, ओके। तो यहाँ पे जैसे मेन एक्शंस हो गए, सर्च, फ्रिस्क एंड दिस वन, कौन सा था? सीज पोजीशंस, हाँ। ठीक? सर्च प्रेस बचते ऑप्शन पोजीशन एग्जामिन तीन। टारगेट, चेक फिंगरप्रिंट, जीएसआर एंड चेक बैलेंस। You can't do check balance because it's for only DOJ. Take, ओके। you can't do it now. It's for SU and DOJ. If you're gonna do this, it's considered as power gaming that you can see the person check bank balance. गरीब है ये तो, मेरे से ओके। भी गरीब है। जैसे इसके पास अभी 1 लाख अबे ब्रो 3 गाड़ियां भी तो नहीं है चलो, चोंटिया। इसलिए गरीब हूँ। तेरे से ज्यादा गाड़ी है मेरे पे। हाँ। तो मैं भीख नहीं there was मांगता ना। another option as well। F1 करना एक बार। हम्म। उसका बीट मोड। अरे हाँ। F1 जहाँ पे वो आ रहा F1 था। पुलिस actions एग्जामिन this one. टारगेट। हाँ, एग्जामिन टारगेट किस पे होता है? एग्जामिन टारगेट It लाइक is फॉर एग्जांपल एक पर्सन आता है, ठीक है? वो बोलता है कि सर मैंने इसको शूट कर दिया है क्योंकि ये मेरे पे चाकू मार रहा था। तो हम्म, वो कंफर्मेशन कैसे होगी? यू हैव टू हम्म। एग्जामिन दैट टारगेट। उसमें दिख जाएगा तुम्हें, जैसे कि मेरे को एग्जाम करना है कि इसके हाँ, ऊपर मैंने कौन से किया है। मार्क्स हैं। हाँ, वो दिख जाएगा। तो It just ऐसे ही shows एक like सिचुएशन होगी। physical condition of the person, ठीक है? He's heavy ओके। breathing, फिस्ट आपको मार्क्स, कोई झूठ बॉडी भी नहीं सूट, बोल उसके सकता। अंदर से अगर बदबू भी आती है ना, जैसे अगर इफ आई जॉइंट, वन सेक, हाँ। राइट, तो उसका भी स्टेटस दिखता है। और ये बेस्ट थिंग ओके। है इफ समवन इज लाइक सेलिंग ड्रग्स और वो उसके बाद जॉइंट्स करता है, हाँ, सो हाँ। वी कैन जस्ट एग्जामिन हिम टू चेक if he has like used a drug. It's just not for ओके। like joint, it's on for cocaine as well, cocaine यस। and meth. ओके। ऑल्सो यू कैन इवन लाइक अगर फॉर एग्जांपल कोई अगर बंदा झूठ बोल रहा है कि सर मेरे को ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब ये Yeah, हो रहा है, तो और मेरे को हॉस्पिटल जाना है जस्ट टू बचने के लिए, जेल से बचने के लिए, या हाँ, उसके हाँ, बाद हाँ। तो तब भी आप चेक करके देख सकते हो कि हाँ तुम्हें तो कुछ नहीं हो रहा। एंड यू कैन पुट इट इन द एविडेंस एज वेल, ही वाज लाइंग अबाउट हिज मेडिकल हेल्थ एज वेल। यो, देखो, जैसे ये आ गया मेरा, ओए मेरा तो ज़्यादा है तेरे से भी। हाँ, तो यू सी एक और स्टेटस आ गया, स्मेल्स लाइक marijuana. दैट इज वेरी नोटिसेबल कि उसके मुंह से बदबू आ रही है marijuana के। हमारी जुआ। क्या? हाँ, हेलो गैज, मेरा यूए ट्रेनिंग कौन देगा? हम ही देंगे। नो वन, गेट कैसे द दोगे? फक आउट डूड। अबे तो ये दी सुन, मैं तेरे अबे वो उसने देखो, लीव कर दिया। लीव नहीं, नहीं लीव नहीं है। किया। तो वन थिंग मैं तेरा बाद में बता देता, अभी जस्ट शुरू ही हुई है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। 4 ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, सर्च, फ्रिस्क, सीज पोजीशन, वो तुझे भी पता, तेरे को 10 बार पकड़ा होगा हमने। हाँ, अबाउट दी ऑप्शन चेक जीएसआर, यू कैन टेक जीएसआर। अगर उसने शूट किया होगा तो पॉजिटिव आएगा, इफ ही हैजंट शॉट इट वुड बी नेगेटिव। हम्म, यू कैन टेक जीएसआर आफ्टर अ शूट आउट और इन एनी सिचुएशन जहाँ पे गोली चली हो, और ओके। इवन इफ यू थिंक दैट गोली चली है यू कैन टेक जीएसआर। जैसे ओके। इसने गोली चलाई है, इसका स्टेट आईडी हैज रिटर्न पॉजिटिव फॉर जीएसआर टेस्ट। मैं ओके। स्टेट आईडी का भी मतलब बता देता हूँ यहाँ स्टेट आईडी क्यों है। लिस्ट से 6-7 सस्पेक्ट डाउन है, उन हाँ, हाँ, सबका आपको दिया जाता है कि इन सबका जीएसआर दो। हाँ, हाँ। सो इन दैट केस स्टेट आईडी वर्क करती है बेटर वे टू आइडेंटिफाई। आवाज गया। आवाज गया भाई तेरा। बस गया। गयो गयो। क्या लगा ना मेरे को? इसका मेरे को लग रहा फिर है ही इसका गया, गया फिर है। उड़ गया, फिर उड़ गया। ब्राइट कोई नहीं, मैं कहाँ से था, मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से। ब्राइट लाइट्स वही ये शो था। जीएसआर सीक्रेट। जीएसआर वाला पॉइंट था। नहीं, शेयर कर देता हूँ। जीएसआर, हाँ, तो जीएसआर में सो यू हैव टू टेक द जीएसआर भाई। सो व्हाट यू हैव टू डू, इधर इधर आ, कौन सी इधर आ। सो व्हेन यू टेक द टारगेट जीएसआर, मल्लू आंटी। व्हेन यू टेक द जीएसआर ऑफ द पर्सन, हाँ, हाँ। तो
वहां पर उसकी स्टेट आईडी और वो सब आता है। तो जीएसआर में हम लोग वाई भी कंसीडर द स्टेट आईडी क्यों आती है, क्योंकि अगर आपने डीएनए ले रखा है ना किसी का, तो भी आता है उसके साथ, क्योंकि उसके फिंगर से तुम पूरी मतलब एक तरह से इफ यू थिंक अबाउट फॉरेंसिक्स, तो फिंगर से आप वो 4 क्लिप से आप निकाल रहे हो, उसके फिंगरप्रिंट पे वो है गनशॉट वुंड से, तो उसके डीएनए भी आते हैं। तो वो एक कंफर्मेशन होता है कोर्ट में कि ही शॉट द पर्सन। और वो स्टेट आईडी अपने आप आएगी या फिर कैसे, आती लाइक है वो हाउ अपने आप ही हाउ आती इट है। विल मैंने वर्क? दिखे नहीं आपने, ये देखो रिटर्न 30350 ओके 32350 पॉजिटिव फॉर जीएसआर, यहाँ से चेक ओके करते हैं, ठीक है। अब ओके। अबे साले का तो तो अब आते हैं हम उस पे, नाम एक चाहिए मेरे को बंदा यार, कौन सी तरह उधर मत जा, तो तुम्हें सब रहे अरे आ गया यार मैं वॉलंटियर यार तेरा आ मैं गया। यार कौन सी को मैं टारगेट करो? यार मैं वो क्या बोलते हैं, नहीं हैमस्टर, आया। गिनी पिग, गिनी पिग। हेलो। Elaborate. तो ये हो हाय। गया। Hi. फिंगरप्रिंट चेक कहाँ करना है पता है? सर यू आर ट्रेसपासिंग। फोन ची आ जा, फोन ची आ फटाफट आ पीछे। पेनार पे कौन सी बोल रहे हो क्या इसको? बताओ। वाओ ये भी सही है, नाइस वन। What the hell? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही अबे है। फोन ची जल्दी आ जा। बहन कराओ भाई अभी कर दो उसको। अकबर यार का एक फोन मेरा ची ये हो गया, क्यों I भाग got it. गया? तो कितना खर्चा कर एक चीज बता रहा हूँ, इफ यू आर पेनार जॉइनिंग पे विद बोला ही पीडी नहीं मैंने। प्रायो ना, एक हाँ चीज हाँ। है, यू कांट roam ऑफ ड्यूटी और स्विच टू दैट अदर अच्छा कैरेक्टर इफ यू कोई मेरे वांट को एक टू। बात, यहाँ पर किसी को सर्वर प्रायो Yeah. मिली हुई है क्या? सर्वर Okay. प्रायो या वो No. स्ट्रीमर प्रायो? मेरे को तो तुझे ये 2 गेटवे दिखते हैं पीडी और इसके अलग अलग घुसने के अंदर? मेरे को मैं ऐसे कनेक्ट ही नहीं करता, मैं सीधा मेरे को 5M से दिखते हैं कनेक्ट वो करता 2 हूँ। गेट अवे, मेरे को मेरे को दिखते गेटवे हैं। ही नहीं दिखते दोनों, मेरे को वो तुमको सर्वर प्रायो प्रायो मिली मिली हुई है। होगी ना? हाँ तो ही तुमको इज प्रायो टॉकिंग मिलेगा, अबाउट जिनको सर्वर नहीं प्रायो मिली ना, उनको। वो सर्वर जिन प्रायो की बात कर रहा है, फोन चीज जो कर रहा है। अरे सही है बाबा, सही है। जिनके पास नहीं है ना प्रायो उनको दिखते हैं, जिनके पास प्रायो है उनको क्या मतलब? मुझे ये लगा मेरा यूआई भयंकर। ट्रेनिंग कब होगी लेकिन? हाँ और क्या चल रही है ये? अच्छा बंदा ये सोच रहा है यूआई हाँ तो ट्रेनिंग भाई कब साहब होगी। रेडियो ऑफ करो, कान पे जब बज रहे हैं। भी नेवर सस्पेक्ट आस्क 2 के आते मिनट्स। हो कारतूस तो ऑफ ड्यू उसको, ऑफ रेडियो जा। मैं ऑफ रेडियो हूँ भाई, मैं रेडियो पे रहता नहीं जब अच्छा मेरे को जरूरत ओपन से ही आ रही है बात, सॉरी। तो जब भी सस्पेक्ट को लेके आओगे उसको हाँ हैंड पर छोड़ने और यहाँ पर आके उसका फिंगरप्रिंट लेना है, ठीक है। यू कैन चेक द फिंगरप्रिंट एनीवेयर इन द सर्वर, बट इट्स कॉल्ड कंसीडर पावर गेमिंग इफ यू चेक इट समवेयर एल्स, ठीक है। क्या? क्योंकि इसको जैसे इसने बेसिकली ग्लव्स पहने हैं, तो आई आस्क हिम टू रिमूव हिज ग्लव्स, ही रिमूव हिज ग्लव्स, ठीक है, आरपी करके, एंड देन आई विल पॉइंट एट हिम, चेक फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट में भी ये इसकी फोटो लेनी है आपने हमेशा, ये जो ऊपर आता है, एंड ठीक है। शेरिक्स उसमें या वो डाउनलोड कर लो, ग्रीन शॉट। ओके। मीटिंग तो जब ये इसकी फोटो लेके हमने एविडेंस में अपलोड करनी है कि ये दिस वाज द सस्पेक्ट, हिज नेम, एंड ये अपलोड करनी कि उसका जीएसआर और फिंगरप्रिंट हमने मैच किया है, तो हमें पता है कि ये वही बंदा है। अब रुक जा, गलती से खोल दी, ये बहुत इशू है यार इसमें उससे 5 सेकंड के लिए खोल कर जैसे मैंने बोला था। भाई। व्हाट द फक, ये हाँ हर समय लड़कियों की प्रोफाइल को देखता रहता है। अबे इसने आके बनवाई है, मैं ऑन ड्यूटी आया था, लड़कियों की प्रोफाइल नहीं देखता भाई मैं, क्यों? मेरा वाला काम है। एक्सपोज्ड एक्सपोज। एक्सपोज्ड ऑन स्ट्रीम। भाई ये जॉइनिंग बर्गर शॉट पुलिस वाला आके ऑफिसर। बनवा के गया इसके यहाँ। ये हो गया। अब कब एक्सेस बताते हैं, ठीक है। अभी तक मेन्यू सिर्फ कब फिंगरप्रिंट हुआ है, भाई उसके मैं वो बाद गया हूँ, फट गया हूँ। लमाओ तो मतलब तो चलो अब मैं क्या आ क्या रह जाऊंगा गया? ना इसीलिए। ये ऑलमोस्ट हो तो गया, ऑल फेस ऑप्शन सर से हो गया बता दिया, सब हो सब गया। तो बता दिया। फिंगरप्रिंट हो गया, टारगेट एग्जामिन हो गया। टारगेट एग्जामिन एक बार फिर से बताना क्या था, भूल गई मैं। इट्स टू चेक हिज फिजिकल कंडीशंस कि उसकी हाँ हाँ फिजिकल हाँ, कंडीशन हो क्या है, गया वो यार, मरा गॉट इट हुआ है, गॉट इट। जिंदा है, या फिर वो फूक के बैठा और है। हाँ अगर एक फूक और के गिनी बेटे पिग आ चाहिए, जाएगा लाल प्लीज इधर आ आंखें। जा। और आई गेस मेरी कुछ नहीं है। कार तो सर वो डीएनए और फिंगरप्रिंट का भी तो बोल देना, ठीक है? फिंगरप्रिंट बोल दिया, डीएनए डीएनए बोल दिया वो भाई, बोल दिया। वो गिनी बोल पिग दिया ना। चाहिए यार तो आ रहा है फ्यूरी। हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरे पास कनेक्टेड हो गया। जब जीएसआर लेंगे तो वो जो क्लाउड्स पे लिखा हुआ है तो उसका भी स्क्रीनशॉट लेना है क्या? यप यप यप। यस, सबका लेना पड़ा जी, बताया सबका। नहीं आपने। जीएसआर का बताया लेना तो। होता है, फिंगरप्रिंट का लेना होता है, वो फ्यूरी प्लेट करके चेक बताएगा का क्या? लेना होता है। हाँ मैं वो भी बता देता हूँ। किस किस का?
ये सारा ये फिंगरप्रिंट फोनची वाली ट्रेनिंग सबसे सही थी, पता चल जा रही थी वो। यार इसको यहाँ वो हाँ मेंशन कर दे लियो जर्नल में कि इट्स अ मीटिंग, यू आर ट्रेनिंग गोइंग ऑन, प्लीज नॉट डिस्टर्ब, ऐसे करके डाल दो। हाँ बिकॉज इट्स गोना बी प्रॉब्लम, लाइक यही करते रहेंगे लोग मैंने आगे। भाई इनसे कनेक्ट मार दिया। मल्लू इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, तू इधर आ। किसको आ गया। देखूं मैं अभी, अभी को या फ्यूरी को? मेरे को देखो। ओए कौन है? अबे शिट, मैं एलईडी तो वो अब डालना अगर पड़ेगा। अभी आरपी कर रहे तो बंद कर ले, बिकॉज मैं आगे उन सिटी में बता देता हूँ। नहीं उसको मैं बोलना है यार आरपी अर्जुन। नहीं करा, मेरे को एक बंदा चाहिए बस वो दिखाने के आ लिए। रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। He needs a puppet. लगाओ। यूडियन ओवरफॉल कहाँ गया भाई? कौन सी फॉर्म? पैराडाइज। हाँ तो जैसे ये आ गया, ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया कफ, ठीक है, कफ हो जाइए। अब मेरे को किसी की स्ट्रीम नहीं दिख रही, मेरी देखना भाई, किसी की नहीं दिखती। मैं बंद कर लेता, कोई दिक्कत नहीं यार। लोडिंग है, लोडिंग। नेट अपनी खराब है। बंद कर दे, अपनी बंद कर दे। तो अरे ये रहा तुम्हारे कफ एक्शंस, ठीक है, ये यूज करना। इसमें ठीक क्या है, होता है? इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है आपको, रिमूव मास्क एंड रिमूव मास्क ये वाला। एंड बाकी जो दो Wait, ऑप्शंस है phone. दैट इज फॉर क्रिमिनल्स। completely power gaming. मैं बता, this is Which one? completely power gaming. Never do it. This is for SEO, ठीक है, रीड फोन, यू कैन चेक ऑल हिज फोन एंड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। बीट मोड में ये कर सकते हो, रिमूव मास्क एंड ये आपको बस ये यूज करना है इन इसे अनार। I just want to see beat mode में होता क्या है? पिटाई होगी क्या? ये बीट मोड में से जैसे बैठा है वैसे हो जाता है बंदा। Oh, okay. अदर और बाय द वे दीज ऑप्शंस आर Thanks ओनली to फॉर that. क्रिमिनल्स, ठीक है, तो यू हाँ, कांट यूज देम, ओनली मास्क एंड गॉगल्स वाला। या yeah, I have been through that. you नहीं need तो to be अगर you need to have some RP around it if you are using it as a cop, और रीड फोन के लिए it's a SEO thing, basically Okay. very You will anti-fraud. let you will know in that in RP, वो आपको बता देंगे इन RP कि वो कब ऑप्शन होगा यूज, बिकॉज Okay. इट्स अ रेयर ऑप्शन और वो रेयर हाँ पीपल यूज करते हैं मोस्टली। Mm-hmm. तो You उनका got that chill. और क्रिम्स को तो ऐसा कुछ होता नहीं, बट स्टिल दे कैन यूज दीज ऑप्शंस। हाँ, डू वो यू आर अपनी नॉट सपोज्ड टू यूज देम। डोमिनेंट के लिए उनका वही हाँ काम है, ठीक है। Yeah, okay. पी और अभी ये तक हो गया कुछ F1 जो का ना। बताया है उसमें कुछ पूछना हो तो बत पूछ लेना अभी। Examine self. Examine self तो खुद के लिए हो गया ना? या एग्जामिन सेल्फ तो तुम खुद कर सकती हो खुद को, ठीक है, Okay. बट इफ यू वांट टू एग्जामिन दैट पर्सन, दैट दिस इज द एग्जामिन ऑप्शन, हाँ। ओनली पुलिस एक्शंस, ठीक है, और किसी को नहीं आता। आके नहीं रहा, इसका फिर फट गया क्या? क्यों फिर फट गई? हट गई वो हट जाएगा अभी। चलो ठीक है, कोई नहीं। वो डिटेक्टिव सर एसपी हो ना, गाड़ी निकालो ना। यार कोबरा तू आई हो, मैं भाई आ रहा भाई हूँ, रुक मैं आ रहा हूँ। मिलना है। नीचे आओ लोग भाई। मेरे को बोल रहे तू नया है ना, स्टेट आईडी बता। अरे भाई व्हाट द फक। CPU 100 भाई, ये 3060 Ti लगा के ये CPU पूरा चला गया 1 सेकंड में 100। सीपीयू पे लोड मत डाल देगा, छोड़ दे। अरे नहीं, अब उसके लिए मतलब ये अभी तक जो समझाया है उसमें कोई डाउट है? कोई भी एक पर्सन, कोई भी डाउट नहीं, हो? कोई डाउट नहीं है, हुआ भी तो स्ट्रीम से दोबारा देख लूंगी। सीन कर रहे हैं भाई। दिस इज आवर एमडीडब्ल्यू, ठीक है, जरूर दिस इज द एमडीडब्ल्यू नहीं, एमडीडब्ल्यू नहीं, वो आखिरी में करियो, पहले डिस्पैच कर, डिस्पैच ओपन करो वो वाला। हां पहले डिस्पैच दिखा उसको। दिस इज द डिस्पैच, ठीक है। ओके ये वन थिंग, सरबजोत वाइल्डस्टॉर्म, ठीक है, ये दोनों लीव करो। अर्श तू आई एम हियर रखेगा फॉर एटम रिवीजन ओपी सर, लीव। रिवीजन। नो लीव। ओके अभी के मैं लिए क्यों लीव लीव कर दो यार, बहुत करूँ? बसड़ हो रही है क्योंकि हमें अरे जल्दी ना खत्म करना है। नीड टू गो माय एटम लीव। सरबजोत है So FTO। this is your dispatch, ठीक है, ये कॉल है। तो whenever what you can do is, for example, hello, हाँ हाँ बोलो कंटिन्यू बोलो बोलो कंटिन्यू। बोलो। Yeah, I can hear you. okay, I thought I was disconnected for some reason. No, So no, this people is are saying कितना मन लगा के पढ़ रही है। शिश। okay. So how to create a call? Okay, there are certain things which you have to do when you get in. ठीक है, तो जैसे for example, I'm responding to this 37 call, ठीक है, तो यहाँ से मैं set GPS कर सकता हूँ कि कहाँ से ये कॉल आई है, ठीक है। I can dismiss thing from बोला कैसे था? and I can create a call, ठीक है। Creating a call means that
this call has been created. और यहाँ पर मैं बोलूँगा officers assign yourself. So for example, if I'm responding to this Bring a situation, repair kit. Bring the passing by the tube truck near I Senora can assign South. myself. तो Pro यहाँ पर 36 मुझे back इससे after पता लग जाएगा कि officer. कितने ऑफिसर उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो जो नया हमको खुद को असाइन करना है उस सिचुएशन के टाइम। हाँ अपना कॉल साइन अटैच करना whenever you are asked is just to maintain the limit of the officers Where is freeway? क्योंकि शूट आउट में क्या होता है कि बहुत ज्यादा ऑफिसर्स आए ओके Took a left और towards अगर फॉर Palomino. एग्जांपल जैसे कि तुम्हारा कैरेक्टर यू आर गोइंग अलोंग विद मी हाँ फॉर एग्जांपल आई एम एफटीइंग यू राइट नाउ तो हाँ यू हैव टू गो टू दिस डिस्पैच यू हैव टू क्लिक ऑन योर नेम कहाँ गया कायरा कहाँ गई तो नाम ही नहीं दिख रहा है। वाओ इन सर्वर और व्हाट दिखता है मेरे को, दिखता है हेजल का आया दिख रहा है मेरे को। Diesel कौन है? अपना ये हैंडल कायरा कहाँ हार्ट है? सॉरी, हाँ तो कायरा। यहाँ पर यू आर ऑपरेटिंग अंडर मी दिस इज माय कॉल साइन 415 एंड स्वॉट दिस इज माय हाँ हाँ भाई इनको जरा Currently प्लीज जरा भेज Palomino दे fuel यार station. जो कोड वन भेज दे कसम से मेरे को इरिटेट कर Go रहे on, हैं code सारे one boys. Don't stand here. We are performing a UA training. Sit को, ठीक sit को है यहाँ मत जैसे खड़े हो मैंने लेकिन। तुम्हें अपने David, अंडर give them असाइन a किया तो verbal मेरे नाम के warning to अंदर तुम्हारा surrender. नाम आ If they जाएगा don't, we'll go hard ओके up No, the I'm second. tracker. गॉट so इट this means Yeah, that you जो are primary है operating एक under बार me बार ठीक है this ओके is your dispatch और vehicle. You need additionals? Nana, 4 units switch radio 5. The unit this AD switch to 5. नीचे तो होने नहीं वाला, Remove ऐसे ही your रहेगा bike तो फिर from अभी here, ऐसा ही dude. है। क्यों भाई, क्या दिक्कत है? बात कर रहा हूँ Bike हटाओ इधर से. भाई। कोई दिक्कत है अरे यहाँ पे? यहाँ पे कोई हाँ, पड़का पार्किंग में नहीं लगा है? दे इधर आ जा इधर पार्किंग नहीं है ये. क्या नाम है तेरा? आर्श, सार्जेंट आर्श. आर्श? हाँ जी. सार्जेंट होगा अपने घर में? हाँ. ठीक ये है, मेरा घर है. ये तेरा घर है तो इसके अंदर जा फिर। हाँ. अपना पार्किंग में लगाओ. अरे आ जा यार, पार्किंग में आ जा। आजा चल. आर्श सर रेड लॉन्ग हाँ चल. गाड़ी है ना ये. मुझे रेड लॉन्ग दो। चलो 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 चलो, मैंने मना की. लगाओ ये कुछ तो झोल हुआ है. एक सर जरा बैंक एक लेना, एक वो एक सैलरी लेना। तुम 5 मिनट रुकोगे जरा. मेरे कुछ सीन हो रहा है. मैं Yes, sir. मैं जरा बस एक नैप लेके आया. ठीक है, नैप लेके आया. 5 मिनट रुको. जाओ 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 जल्दी जाओ। We'll get you back into the RP. Right. See ya, guys. Thank you for joining. इसको यहाँ पे गया क्रिएट कॉल जस्ट क्लिक ऑन इट वंस क्रिएट यहाँ कॉल पे दो यहाँ ऑप्शंस, यहाँ आपको कॉल दो बन ऑप्शंस गया यूजफुल हैं, दैट इज क्रिएट कॉल एंड सेट जीपीएस। सेट जीपीएस से ओके आपके मैप में वो लोकेट हो जाएगा, वो मार्कर लग जाएगा एक जिस पे आप जा सकते हो। क्रिएट कॉल से यू कैन क्रिएट इट अ मेजर कॉल एंड देन असाइन पीपल टू इट कि कितने लोग जा सकते हैं। मैं उसका रीजन भी बताता हूँ वो हम लोग क्यों करते हैं, ये फालतूगिरी हम लोग क्यों कर रहे हैं। इस फालतूगिरी का फायदा ये है कि जैसे कि हमारे पुलिस वालों की लिमिट है दैट वी कैन ओनली गो 12 इन अ सिचुएशन, डबल टू द क्रिमिनल नंबर। अगर 4 है तो 8 ऑफिसर, अगर 6 क्रिम्स हैं तो 12 ऑफिसर्स, ऐसे राइट। ओके तो लेट्स से 4 क्रिमिनल्स हैं एंड अभी ऑन सीन मेरे को बहुत सारे ट्रैकर दिख रहे हैं। व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना क्रिएट अ कॉल। ऐसा आ जाएगा साइड में लेफ्ट में, फिर क्लिक करो उनमें से एक कॉल पे कर सर क्या हम ये कॉल पे है स्लिप हाँ, लेने जा सकते हैं? आई विल आस्क ऑफिसर जो जो ऑन सीन है वहां पे जो भी है रिस्पॉन्ड कर चुका है, असाइन योरसेल्फ टू द कॉल। वो हाँ हाँ असाइन करेगा। कर तो अपने आप को असाइन कर।
I'll assign यहाँ myself as well. 415 आ गया ना, 415 I'll assign responding to myself this as call. well. This is how You it can works. ओके, तो इसको कहते हैं अपने आप को असाइन करना। और एक दूसरा कौन सा था? दूसरा है कि What do we say ऑपरेटिंग this one? अंडर, दिस इज असाइन, वो है असाइन। ऑपरेटिंग। ओके। ऑपरेटिंग अंडर, अच्छा वो ऑपरेटिंग अंडर, तो फॉर हम्म। एग्जांपल जैसे ये है, वो अब जैसे आप मैं, करोगे या हम करेंगे? वो आप ही वो को करना है, आप दोनों करोगे। चीजें आपको करनी है, असाइन ओके। और ऑपरेट दोनों ही आपको करना है। मार्टिन लेट्स फ्यूरी से को ऑपरेटिंग अंडर, इसके नाम के आगे क्लिक किया, ठीक है। हाँ। तो व्हेनेवर यू आर ऑपरेटिंग अंडर समवन यू हैव टू क्लिक ऑन योर नेम देन ओके ऑपरेटिंग अंडर दिस। तो ठीक है, मैंने इसको अपने ओके ओके। अंदर असाइन कर लिया। तो बोथ आर नाउ 415 के अंडर दो पर्सन काम कर रहे हैं, लाइक दे आर राइटिंग अलोंग टुगेदर, दैट ओके। इज काया हार्ट्स एंड मार्टिन फ्यूरी। अगर मैं अभी कार्तोस के साथ राइड अलोंग कर रहा हूँ, मैं ये नहीं करूंगा कि मैं अभी कार्तोस को अपने अंडर ऑपरेट कराऊं डिस्पैच में। आई हैव ओके। टू ऑपरेट अंडर हिम इन द डिस्पैच। और जब क्रिएट कॉल होती है उसमें लेट्स से मैं और अभी कार्तोस ऑलरेडी वो कर रहे राइड अलोंग, सो मेरा ओके। इंडिविजुअली नाम नहीं जाएगा डिस्पैच कॉल में। जब आप कार्तोस को असाइन करोगे अपने आप ही नंबर बढ़ जाएंगे डिस्पैच में, कार्तोस की यूनिट का नाम रहेगा वहाँ पे। 10 मिनट बाद। इट वुड बी लाइक कंफ्यूजिंग, मैं बता देता हूँ वो क्या है। हम्म। डिस्पैच कॉल, कार्तोस डिस्पैच। हाँ हाँ हाँ, खोल दे खोल दे। हाँ, सो इसी अभी वहाँ पे तीन ही लोगों के नाम दिख रहे हैं जो कॉल है, बट वहाँ पे लिखा चार है बिकॉज एक एक्स्ट्रा बंदा कार्तोस के अंडर ऑपरेट कर रहा है जो असाइन नहीं है कॉल पे, दैट्स द रीजन। ओके। और ये ठीक, कैसे अबाउट हुआ डिस्पैच। ब्रो? ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जस्ट टू सेव, ठीक है। तो whenever you are thinking like for example there is a shootout going on and there are 6 हाँ people involved from the other side, तो we हाँ। will ask you to respond, you will just check here अगर कॉल बनी है, ठीक है। पहले तो यहाँ चेक करना है, यहाँ पे 4 ऑफिसर हैं, तो इसका मतलब 8 ऑफिसर और आ सकते हैं। और आपको ओके। एस्केप दबा के भी चेक करना है यार कौन है। तो वंस यू चेक कि तुम्हारे को बैकअप की जरूरत है एंड डू नॉट हैव इनफ ऑफिसर देन यू रिस्पॉन्ड। ओके। बिट डिस्पैच पार्ट इज कंफ्यूजिंग डन। बट या ओके। व्हीकल गैराज बेनीज और बस। तो बेनिस का भी मैं बता देता हूँ, जैसे ये गाड़ी है इट्स नॉट ऑपरेबल। और सर हाँ जी बोलो सर। मैं यूआई ट्रेनिंग दे रहा हूँ आपको, फिर जरूरी नहीं। अबे किसकी एक्सप्लोरर है यार, क्यों नहीं रहा? I'm gonna take your vehicle from you. Damn ठीक है, it. गाड़ी हमारी ठुक गई, ठीक है। यू हैव टू कम बैक इन अरे कारतूस और फ्यूरी, मेरे को एक इम्पोर्टेंट चीज पूछनी थी। 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है ये डिस्पैच कॉल में। लाइव पूछो करके पूछो। दिखाऊं क्या? ये कर देते हैं, फिर तेरी प्रॉब्लम भी सॉर्ट कर ठीक है दूंगा ठीक है और कायरा की भी, वो ठीक है। उसकी भी की बाइंड का इशू है। हम्म। एंटर बेनीस, यू हैव एंटर हम्म। बेनी। तो अब इसका पता नहीं करता तुम्हारे से, ठीक है। इट कम्स फ्रॉम द स्टेट मनी, ठीक है। तो डू नॉट हेजिटेट टू रिपेयर द व्हीकल बिफोर यू गो ऑफ ड्यूटी, समझ रहे हो? पेट का पैसा है पानी की तरह उड़ाने का। हाँ, तो गाड़ी रिपेयर हो गई मेरी, देन आई गो हियर एंड आई जस्ट हाँ। पार्क इट। हाउ टू टेक आउट योर व्हीकल आई टेल यू। F1 muscle, you have to come on any of this yellow markings, ठीक है। Vehicle list, so this is the share vehicle list। तो यहाँ पे explorers हैं, 10 explorers parked हैं, ठीक है। यहाँ पे और so these are not the vehicles that you will be allowed now, right now you'll gain your ranks then you'll be allowed some certain vehicles, ठीक है। Crown Vics निकालनी है, तो Crown Vics पे जाओ, LSPD के हो, हाँ क्या DOC निकाल दी क्या गलती? कंटिन्यू कंटिन्यू। Crown Vic LSPD, take out the vehicle, ठीक है। Take it out, you go here, you check how much fuel is it there and you repair the vehicle first. It's requiring repair. You take out the vehicle, go on code 1. So as a cadet you will not be able to take out the vehicle until unless allowed by NFTU, but you need to be able to understand that। सर एक चीज हम कहनी लोग थी, इसका कॉल वीसीपी साइन होना, भी एक चीज पूछनी थी। हाँ चेंज सर। करते हैं। हाँ, कॉल साइन चेंज करने के लिए आपने कैडेट्स को पकड़ा दिया बैज, वो सॉरी स्टाफ प्रोफाइल MDW में। इससे बात हो रही है। हाँ सर। So You this is call sign, is whenever you change the call sign of the vehicle,
ठीक है, कॉल साइन B, then your call sign. So mine is 415. There you go. Okay. Right. Okay. Then you park the vehicle. और अब MDW पे स्विच करना है, कुछ और बताना? गैराज एक्शंस सॉर्ट वाला। क्या? गैराज एक्शंस। ओके, तो गैराज एक्शंस, स्टेट आईडी। सो ये बेसिकली उसके लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे के स्टेट आईडी की किसने यूजेज करी है गैराज एक्शन, ठीक है। सो नेवर लॉक डाउन द गैराज, ठीक है, अनटिल अनलेस यू आर स्वॉट यू आर ऑथराइज। तो हम लोगों को रेड वार्म मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लॉक डाउन कर सकते हैं, लॉक व्हीकल, अनलॉक व्हीकल्स। तो व्हीकल जो है जैसे कोई बंदे लॉक करके वो रखते हैं, तो अनलॉक भी कर सकते हैं सारे व्हीकल्स, ठीक है। ये होता किस लिए है बेसिकली? ये गैराज F1 मसल में गैराज एक्शंस आता है, जहाँ पे भी आपको गैराज हो उसकी क्या। स्टेट आईडी डालनी है, बट ये तो बहुत बाद की चीज है, ये लाइक स्वॉट में आने के बाद व्हेन यू गो एंड काम बट क्या है स्टिल दैट लाइक वाज UI का व्हाट पार्ट है, वील कवर इट। यूज सब। फॉर एग्जांपल रेड मारनी आवाज कट रही है। हमने, आपकी क्या नाम है, आवाज। हेलो, जा आवाज रही है? कट रही है। हाँ, इनकी आवाज कट रही है। हेलो। हाँ, अभी बोलो आप। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे फॉन्ची का दूसरा कैरेक्टर है, फॉन्ची बीरबल वाला, ठीक है, उसके गैराज पे हमने रेड मारनी है, उसके घर पे रेड मारनी है। तो हम्म। देन वी हैव टू गो टू द गैराज once we close down his property from कोर्ट हाउस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी पूरी सील डाउन हो जाएगी। जब हम इसके गैराज के पास जाएंगे तो इसकी स्टेट आईडी, अपनी स्टेट आईडी बता। You won't. 5912। Oh, you did. 5912, ठीक है। हमने इस पे क्लिक किया, इसके प्रॉपर्टी के पास जाके लॉकडाउन, तो हमने इसके लॉक कर दिए सारे व्हीकल। इसका मतलब ये नहीं Oh, निकालेगा, और हम उसके बाद एक एक करके इसके उसमें से रेड करेंगे। हाँ निकाल देंगे, सारे व्हीकल निकालेंगे, सर्च करेंगे, कोई विंड Okay. स्क्रैच वगैरह वो चेक करेंगे, तो उस तो ये हिसाब से हम उसमें। बेसिकली क्रिमिनल्स के लिए होता है ये वाला ऑप्शन। हाँ, दैट इज यूज फॉर रेड्स। ओके। वो हम यहीं से बैठे बैठे कर सकते हो उनको लॉक। नहीं, उसके गैराज के पास जाके, उसके घर के ओके। पास जाके। ओके। ओके, सो मैं क्यों ट्रेनिंग चल रही है अभी तक खत्म नहीं हुई? और कुछ रह गया? ओके, I'll start with the very important and very like the core of being this, मत कर यार। MDW. Yes, MDW and how to take evidences and how to attach them. So बिल्कुल ध्यान से सुनना इसको, अगर AFK जा रहे हो बता देना गलती से भी, और तेरे को भी बता रहा नहीं हूँ मैं, नहीं। मल्लू नहीं मैम को, हाँ, यहीं पे है ना, ध्यान से देखते रहो। मैं काफी देर का यहीं पे चुपचाप सुन रहा हूँ। अरे तो वो हाँ बस। डिफॉल्ट कैरेक्टर वही यूज करेगा क्या? हाँ, और भाई जो बकचोदी डिफॉल्ट होगी नहीं, भाई, बहुत अच्छा है वो। बकचोदी होगी भाई। फिर तो क्या पुलिस है, उसमें पुलिस यूनिफॉर्म है। नहीं, मैंने अबे मैंने मतलब थोड़ा वो हाँ, बैच दिखा के काम चला गया, ये SU आज करेगा भाई बाजी फुल। टॉनिक ऑर्डर कैसे कड़वा सा होता है यार, बियर मैंने की फीलिंग दे रही है। मैं कहा अगर कोई देख थोड़ा लो, सा बताना अगर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आज से ही हो रहा है, आज से पहले कभी नहीं हुआ। मुझे वो दिखा। वो आज क्या इशू हो रहा भाई है? देख ले इसके सर्वर साथ। चल रहा है। सर्वर का है, हाँ सर्वर इशू चल रहा है। क्योंकि मेरा ये एग्जिट हाँ, लैग एकदम ठीक है। क्या हो मैं रहा है? तेरा रीस्टार्ट मारने के बाद ही पीएल सही होता है वो। पीएल बहुत पीसी ज्यादा पूरा रखा होगा। रीस्टार्ट मारने के बाद होता है ये। पीसी पीसी रीस्टार्ट पूरा मारने के बाद सही रिस्टार्ट होता है मेरा ये। पूरा सुबह से हो रहा है। क्या आज हो रहा है सर्वर ये? का भी कुछ इशू चल रहा है। चल रहा है। आज ये 4 दिन से हो रहा है अंश भाई, मेरा अभी दोबारा चालू हो गया है। कोई नहीं, कर ले कंटिन्यू। दिस यूज्ड टू हैपन फॉर मी। मैंने एग्जिट लैग जब से लगाया ये नहीं हुआ, लेकिन अभी एग्जिट लैग भी चल रहा है और ये भी हो रहा है। अंशवाजी एकदम ना बढ़िया डील मिली है ये 3060 ओके, पे। सो वी आर मूविंग टू MDW। दिस इज आवर मेन MDW, ठीक है। तो यहाँ ओके, पर अब क्या डिटेल मिली बे? क्या डील मिली? मैं बता रहा हूँ। ये अभी गीगाबाइट पे अपना अच्छा खासा ऑफर चल रहा था,
प्रोफाइल इज दैट आई होवर onto it and press control C, ठीक है, कॉपी क्या एमडीडब्ल्यू में कंट्रोल सी अपनी कॉपी, मैं बताता हूँ दोबारा, हाँ 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 होवर किया, ये दिखा यहाँ पे ग्लॉक 22 आ रही है, हाँ कॉपी कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी, ओके ठीक है, एमडीडब्ल्यू में गया, अभी हाँ देखना क्या, ठीक, अभी ये तो और मुझे भी नहीं पता इन्फॉर्मेशन था। ये है, क्या हुआ जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी कार्ट्रिज की, सेम इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉपीड एंड हैज बीन पेस्टेड हेयर, तो यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल बी कर दिया। ये हमको लाइक एज अ न्यू पर्सन एज अ फ्रेश स्टार्ट में ये दिखेगा कैसा लाइक ये तो आपको आता है हमको नहीं आता है बट हमारे पीओवी में ये हमको कैसा दिखेगा और हमको किस तरह से स्टार्ट करना है इसको पीओवी में ऐसे ही दिखेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, इधर आओ पहले नीचे आओ, लोअर करा जाओ, हो एनआरपी हो ना, इधर आओ हाँ हाँ लोअर, क्या बताता चीज हूँ, सीखे क्या चीज करते हो? ये जो यहाँ मैं कॉपी करके और ये अच्छा वो, हाँ ये तो इजी है, ये तो तो बहुत मुझे आज इजी है। पहली बार पता चल रहा है। वो कंट्रोल सी कंट्रोल कंट्रोल सी भी खुद कंट्रोल करवा भी देता हूँ। करना है। हाँ, नीचे लोअर गिरा जाओ और अपने आप से करके दिखा दे, खुद करना अपने लिए। तो यार मेरा ये कीबोर्ड पूरा चल रहा है। सर्वर में किसी भी आइटम पे इन्वेंटरी में माउस ले जाकर कंट्रोल सी करोगे ना, वो क्लिपबोर्ड पे आ जाता अब है, कहीं अपनी भी पेस्ट कर इन्वेंट्री सकते खोलो, इन्वेंट्री खोलो, अपनी गन के ओके ऊपर माउस लेके जाओ, गन के ऊपर माउस लेके जाओ, ओके कुछ इन्फॉर्मेशन आई, अब उसको हाँ कंट्रोल सी प्रेस करो, ओके ओ अब आई किसी डिड हाँ मैंने करा करा है हो ना, गया अब एमडीडब्ल्यू में कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हो, ओके ठीक है। तो व्हाट आई सजेस्ट है, ठीक है, ये मैंने नोवा से सीखा, हाँ यू कैन मेक अ फॉर्मेट लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही फॉर्मेट लगाओ जो जो तुम्हारी वेपन्स खराब हो चुकी हैं उसको यहाँ से ये पूरा डिलीट मारो और नई नई वाली गन का सीरियल नंबर बस ऐसे पेस्ट कर दो, ठीक है, इससे तुम्हारा ये लॉन्ग, हमारी प्रोफाइल है ये मेरी प्रोफाइल है, आपको भी अपना करना ये पड़ेगा। आपको भी अपनी बनानी है, ठीक है, वो मैं बताऊंगा, ओके ठीक है, वो मैं बनवा दूंगा आज बैठे बैठे, ठीक है ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेंटेन योर प्रोफाइल एज एन पुलिस ऑफिसर, सो यू विल बी यू विल एबल टू सी माय कार्स, ठीक है, ये पूरी हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं यहाँ से मेरी कार्स की, ये एक्सप्लोरर, ठीक है, तो और आप मेरे कोई पास गलत ड्राइविंग काम भी लाइसेंस, करोगे वो सब दिखेगा गलत काम इन द सेंस प्रायर्स क्योंकि यहाँ पे आते हैं, अभी प्रायर्स यहाँ पे आते हैं, यार एम्प्लॉयमेंट का हमारा नहीं आता, ये बात एम्प्लॉयमेंट अलग हमारा है। दिखता क्योंकि हमारे को हमारा जो जॉब है वो सर्वर साइड जॉब है, तो तुम्हें बहुत सारी पर्क्स मिलते हैं एज अ पुलिस ऑफिसर, मतलब तुम कहीं भी स्लैश आउटफिट करके अपना आउटफिट चेंज कर सकते हो, बट इफ यू डू इट विदाउट एनी आरपी देन यू विल बी काउंट एज पावर गेमिंग, तो बहुत सारे पर्क्स होते हैं, मिस यूज ना करें तो हम लोग बताते नहीं किसी को, ठीक है, एज अ कॉप। तो अभी अभी आते हैं हम ऐसे ही हर एक वेपन का आपको टेजर का भी होता है, फ्लैश लाइट का भी होता है एंड इसका भी होता है, हर एक के सीरियल नंबर आपको डालने हैं वहाँ पे, ठीक है, ओके मेंटेन योर ओके प्रोफाइल। अब ओके आते हैं प्रोफाइल सेक्शन, तो रिपोर्ट्स इज नॉट वर्किंग, तो ये क्या होता था हम लोग यहाँ पे रिपोर्ट भी एफआईआर रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, आवाज क्रैक हो रही evidence है आपकी evidence this is like just see this, so how you have to copy this, you can copy this link and give it to any person, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीओजे मांगता है तो तुम जस्ट यहाँ पे ये स्टेट ये रिपोर्ट आईडी है 5838, तो इसके रिगार्डिंग सारे के सारे तुम देखो, हाँ अब लगा भाई, अब लग रहा है ना ये गेम, अब लग रहा है ये गेम, चलो डिस्प्ले कैच, अब लग रहा है ना ये झक्कास गेम, क्या बोले तो झक्कास।
463 back after code 0, guys. Aarsh, is that you? 10-4, sir. Yeah, welcome back. 10-4, sir. Sir, I had to if these cadets कहाँ पे अभी वो? Names? किसके साथ? Hey, is there who's on this radio? Negative. It's in Radio 5. 1990. Rocky, are you on radio? Negative. He's on the. Alright, Kaushik, grab a charger, get on radio 1. But 4 ride along with me. Got them? Why do you have 4 ride-alongs with you? Yeah, the FTO had a head pop, so he's with them. Yeah, I'm there. Come in. Alright, 10-4. Alright, get to LSIA. Do you need me to also to come? Yeah, just need 1 vehicle. Yeah, 10-5. I'm 76. Yeah, get on radio 1, alright? 10-4. Suburbia, Suburbia. $76 to the latest 13B. I guess it's heli crash. आर्श सर थोड़ी देर रुको. आजा 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 आजा. मेरे कैडेट्स दो. आओ बेटा. आजा बेटा. साइन करो. साइन. नाम पापा का नाम 436 Aarsh का 436 plus 176 to the latest 13B. भाई सेक्सी चल रहा है बे. तूने देखा मैंने क्या नया लिया? 3060 Ti. ओसी गेमिंग प्रो. बेटा क्या बहुत बात है, अभी नहीं बहुत आ रही है? अरे नहीं बहुत मस्त सेक्सी डील मिली. ये इंजन फेलियर गाइस, इंजन फेलियर लग ही रहा है. देखो ना वो उसमें से निकल रहा. देखो I can discuss it. Oh my god. Yeah, it's Any because kind of you, VSR के द्वारा? it's because you're not. I'm not seeing you in my eyes. I'll take a nap. I'll come to Vespucci. 10-4. Come to this switchy. Do a 391 311 where you Just pick me up at station. bus station. Gucci. EMS बुलाओ. ना 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 ना. आ ही गई है वैसे तो. हैं? आ जा तू चल. कहाँ गए ये लोग? अरे रुक 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 EMS आ गई है. इनको EMS ले जाएंगे. अरे उनका सीन हो रहा था यूवी का. ओके. आ जाओ सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर. ले लो ले लो. Dispatcher, respond to 13 beta. It's कर लिया ready for कर लिया situation. कर लिया कर लिया कर लिया. Okay, fam. इधर एक ऑफिसर है, दूसरे ऑफिसर का वो कुछ दिक्कत हो रहा था, वो अभी बस आ रहे हैं नैप लेके. ठीक है, वो आगे आगे VSR सर VSR सर VSR तो इधर है. सुनो, जो दूसरे हैं वो अभी नैप लेके आ रहे हैं. आजा बस. इधर ही रुकना थोड़ी देर. ये चल 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 चल. ना 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 ना, देयर इनफ. लड़ाई ऑलरेडी हो रही है. ओके कौशिक सर, लाइक दे UV had this good zero, so like we are coming to pick him up. Going to pick him up. अच्छा वो हुआ था क्या, हिलने वाला सीन? अरे उनको वो दिख नहीं रहा था. मैं वो सीन था. अच्छा तुमने जो लिया उसके बाद भी तुम्हें नंबर कम क्यों आ रहे? मैं तो ये सोच रहा हूँ. नंबर सही तो आ रहे बे. 50-60 की तो आ रहे बस. अरे तू लॉक करके रखा है ना. अच्छा वही मैं सोच रहा हूँ. मेरे खुद के 70-60 आते हैं. तो तू क्या देख रहा है क्या? नहीं, कभी देख रहा था पहले तो ये.
अच्छा आदत सी है अब मुझको। मसाला। हाँ ओए मैं जरा नेचर कॉल करके आया, समझ रहा? पीछे मुझ जाके कह बैठो, रहा पीछे मुझ बैठो कह फिर रहा करो, पीछे बैठ के करो, अबे यूवी इधर आ रहे हैं तो वेट कर रहे हैं अपने। पीछे बैठ के। आया क्या? ओए बताओ मेरे अभी क्या कहते हैं डिस्कॉर्ड मिल पे क्या मिल पे आता? Hey, yeah, he's back. Hey yo, eat your side pills. Y2A plus 2 performing a felony stop at West Kuchu. We are requesting him to. Let in felony, we don't go and come back. Lamau dead. Is that motherfucker? Yes, sir. 20. The best co-pilot. Ali, come back. That guy was the bad man. That guy messed up. He fucked up. It was at this moment he knew he fucked up. Oh, 36 plus one chief downed 76 to the viceroy. 77 for the felony stop, please. Come to West Kuchu Boulevard. Let us car don't have a driving license. Hello. हाँ. No driving license on the way. क्या आवाज आ रही है मेरे को? आ रही है बे, आ रही है बोल. अरे मुझे किसी और की आवाज आ रही है. मुंबला कर मुंबला. वही होता है मेरे साथ भी होता है. जब बीच में क्या कहते हैं किसी की आवाज सुन रहे हो बीच में हो जाता है ना डुमचू क्या कहते हैं हेडेक वो तो तो ठीक होता है, है. वो तो पता ही है, वो तो पता है. मैं कुछ गावर होते हैं लोग. हमें सिखा रिया. बताओ. हाँ हमको सिखा रिया. चीफ को लेके जाओ, बहुत बहुत वो प्रेज करेंगे. अहम चीज है. यस वे लेके कौन जाएगा? And for charge. थोड़ा बस. हेलो भाई ऑफिसर. ये ऑफिसर हेलो. क्या चल रही है? कुछ ना
ये देख इसके लिए पानी का emergency खेल बोतल रहे हैं हम चाहिए क्या तेरे को? पानी का बोतल चाहिए क्या? नहीं यार 80,000 का होता तो 80,000 लेता। चाहिए क्या? पानी चाहिए तेरे को? अरे सर जल्दी चलो, ये रखो सीपीआई निकालो। क्यों क्या हो गया? अच्छा तुम, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, रुको 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 रुको, गलत बैठ गया, गलत बैठ गया। इसलिए बोलते देख के बैठे। तुम चलाओ तुम चलाओ तुम चलाओ, अच्छे से चलाओ एक्सप्लोरर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये कौन है? राम 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 किसान। भाई बैकअप पे नाम पे घंटा कुछ नहीं आता बहन की चूतर। अरे अपन ने हमारे तो जैसे हमेशा पहुंच जाते हैं बैकअप पे। अरे अपन तो यूवी सर को सिक्योर कर रहे थे। यूवी क्यों डाउन हो गया अभी? अरे बेस्ट का पायलट वीएसआर। एक सेकंड। बेस्ट पायलट ऑफ वो है ना अपने पायलट ऑफ द ईयर वीएसआर। नो यू नो वही वही आने दो आने दो। ओ ये 1 कितने छोड़ने आएगा जो प्लाजी? No, Vespucci PD. Box. Yeah. Come in. So I impounded. How the fuck I have did a you car. get- I have come with me. Come with me. Okay. Somebody shot me. That's why I got down. And no one came to pick him up. Okay, never mind. आजा बेटा। शेखर सर है क्या इधर? इधर बैठ। हैप्पी बर्थडे शेखर की गान मारो बहन। किधर है शेखर सर लेकिन? गाड़ी में छुप रखे। मैं कहाँ छोड़ू रखे हुआ? We saw get to Vespucci PD. एमआरपीडी अच्छा चलो। एमआरपीडी या बॉब स्मिथ? सर रोक रहे हो? अच्छा बात ही ले रहे हैं। नेवर माइंड सॉरी। अलग क्यों हुआ ये? आर सर अगर मैं नेक्स्ट वीक में सोलो बन जाता हूँ आप मेरे को क्या दोगे? मैं तेरे को $5,000। पक्का? पक्का क्या? और अगर नेक्स्ट 2 वीक के अंदर अगर मैं ऑफिसर बन जाऊँ तो क्या दोगे? वो तुम बन ही नहीं सकते। अगर बन गया तो? बन ही नहीं सकते। नहीं बन सकते। अगर नेक्स्ट 3 वीक के अंदर ऑफिसर बन गया तो? वो कर सकते तब भी तो और 5,000। नहीं थोड़ा ज्यादा करो यार। 7,000 कर दूंगा। Pull out the दस करो, Maverick. दस करो। Let's go. आपका रेट बस 7.5। चलो ठीक डन। चलो सर अगले ट्यूसडे तैयार रहना पैसों के साथ में आ जाऊँ। कर लूंगा आपको। ये ले रॉकी साहब तुम्हारी जगह। थैंक यू यार ये काम। अरे देखिए कौन सा फिल पंप खुला है। हाँ और ये जो मैडम जी है ना कायरा ये कैडेट है। आई नो हाँ, कायरा कैडेट है। इसकी यूआई उनका वो ट्रेनिंग देखा चल रहा है। नहीं हाँ Hey, don't यूआई take ट्रेनिंग off चल रहा है। from उसका आर्मर देख रहे हो? नहीं क्या हुआ? देख रहे हो उसका? क्या हुआ? देखो जाके वेस्ट देखो कौन सी वेस्ट पहनी है। Get on radio 1. Come to LSIA. हमको तो अलाउड नहीं है पता नहीं इनको। कौन सा पहनी है? Kaushik, you too. Get on P1 and come to अबे नहीं LSIA. वो फीमेल ऑफिसर होगी ना इसलिए करा रहे थे। ठीक है ये भी वो ज्यादा छोटा हो जाता है ना सो यू नो मैं क्यों सड़ा हुआ पहनूं? मैं भी पहनूंगा। नहीं इट्स लाइक अबाउट सम बॉडी पार्ट से। सर मैं आईए में ले जाऊंगा। चले जा आईए। अरे ऑटो पीछे सर। हाँ आईए में बात जाएगी अब तो हो गया खत्म है। लेकिन आईए में बोलेगा क्या मेरे को कपड़े से दिक्कत आ रही है? हाँ नहीं मेरे को महंगी वाली वेस्ट पहननी थी इसको पहने। नहीं मेरे ख्याल से वो फीमेल है एंड उसका कुछ है। अरे अच्छी बात है ना हमारा ही फायदा है यार। हरियाली है पीडी में हमें खुशी होती है। मैंने भी क्या अपनी वेस्ट अभी जाके चेंज की है सार्जेंट बन के। नहीं तो पूरा भी आउटफिट है अपना किया। अरे दूर यार X7 छूटो। हाँ पता है यार उस उधर थी। तुमको क्या बता रहा है? मुझसे ही तो पता बंदा। भाई वो सब ठीक है? सब कुछ ठीक है। गेड़ी मार ली अब इधर आ गए। अरे पागल हो क्या? हम तो कहीं गेड़ी नहीं मारते भाई होश तो रख दे इधर। अरे वही अबे साले वो लेके बैठ गया तू। अलग हाँ बोलो सर। हेलो
मास्क उतारो। अच्छा ये फूड ट्रक वगैरह कहाँ मिलता है भाई काम करने के लिए? अगर दुकान 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 पीडीएम ये रहा। मतलब पीडीएम में खरीदना पड़ता है फूड ट्रक? हाँ हाँ जी जी जी। अच्छा हाँ तो रेंटल पे आई गेस मिलता होगा, पता नहीं यार, आइडिया नहीं। 480 बेड plus होता है, shoes, फ्लैट इतने बेड। पढ़े लिखे हो तो 76 ऑफिसर to थोड़ी बनते। 37 near मैं बोलूँ Dalpal Beach. खरीद ही लो। लिखे होते तो ऑफिसर बनेंगे ना। अरे इतने पढ़े लिखे होते तो ऑफिसर थोड़ी, हम शेक्सपियर, सार्जेंट बनते ना। ओथेल्लो। अच्छा सही है सही है। हम पढ़े लिखे हैं, हम सार्जेंट कोई है। अवेलेबल है क्या? रेंजर जज यार बनेगा क्या वो? अभी वो रेंजर क्या कोई कहते हैं, available अभी है? वो काम कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट वो हाई कमांड मेरे वाला को काम पावर चल रेंजर रहा है ना। चाहिए। ओए आजा। हाँ पार्क रेंजर वो ट्रेनिंग के लिए बोला हाँ था यार कि पता नहीं, आने के पावर लिए रेंजर तो पता नहीं। घूमते रहते हैं बस हमेशा घूमते रहते वो, घास फूस में देखो कहीं पे मच्छी पकड़ रहे होंगे। ठीक है ना, जरूर जरूर। 436 डायरेक्टर फ्यूरी, यू टेकिंग एयर वन टेस्ट? नहीं है। क्या हो गया, एयर वन चाहिए क्या आपको? हाँ बे एयर वन क्या हर सिचुएशन में नीड होती है। तो आपको उड़ाना नहीं आता? अबे नहीं, मैंने उसका एक दो चीज क्लियर करना है। एक तो हो गया काय के सार्जेंट हो यार, काय के अरे नहीं, सार्जेंट? एक जो मेन चीज होता है वो अपना क्लियर हो गया, रेस्ट वो करना है। क्या बोलते हैं वैसे, ऊपर के लिए कौन सा वो चाहिए मिनिमम? क्या? मिनिमम रैंक क्या चाहिए? अरे देखो होता क्या है, तुम टेस्ट कभी भी दे दो लेकिन मिलेगा तुम्हें ऑफिसर पे। ऑफिसर पे ना बस। हाँ। नेक्स्ट 3 वीक में हमको फिर एयर 480 सर्टिफिकेशन plus और 2 responding to वो भी लेना है, 37 बाइक near सर्टिफिकेट। Karkar Avenue. मेरा सबसे फास्ट जो प्रमोशन था अब दैट बस वाज टर्न देखना आप, स्पीड रन। ऑफिसर अरे टू। नहीं नहीं पीछे लो, ये वाली जगह से मेरे को कुछ याद आ रहा है आज सर, बड़ी क्या? अच्छी जगह लग रही है। कहाँ? कुछ नहीं बस याद आ रहा है, ये वाली जगह लेफ्ट। कभी ठुके वुके हो क्या आप यहाँ पे कभी? हाँ है सर? हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी। अबे बढ़िया को Sorry, अबे नहीं बना। स्मूथ। Dispatch, this is 5 double. सोच ले नाम सोच भूल ले। गया ले। इधर इधर ये नया नया कॉल है अपने पास ही है। चल 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 लगा लगा लगा। 37 ये तो रहा पीछे। अरे पीछे ही है, चल चल पीछे। धड़ लेना गोली मार देना। नहीं पागल है, मेरा ट्राई नहीं। सर आप पागल हो, मैं मार दूंगा, भगाओ ना। अबे अगर 37 है चुमू तो पहले देखना पड़ेगा तो ना कि आगे वो कर रहा है कि थोड़ा नहीं आगे सर। लो आगे लो। हीरा कद्दू आदमी हीरा, यही है। अबे कैसे अरे सर आगे गया, ये तो रहा भाग रहा है। सीधा दो, सीधा राइट लिया। कहाँ भाग रहा भाई, मुझे तो दिख नहीं रहा। स्पीड दबाओ गाड़ी में, एक्सीलेटर दबाओ नो, जाने दे दिया, राइट लो, चला गया यार। अब बे वो लोकल था। वो वाली वो सीधे जान तो दो, मैं बोल रहा हूँ बस सीधे जान दो। ठीक है चल तू बोल रहा बोल रहा हूँ वही है, लिख के ले लो, टोपी पहनी थी महान ने। वो देखो भाग रहा, राइट लिया, लेफ्ट लिया, देखा बोला ना। Dispatch currently on an activity with a नहीं 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 sit down नहीं नहीं to नहीं right रुक Havoc जा, Avenue. रुक जा। नहीं तू 74 इज लेस कॉल। अबे हम ऐसे थोड़ी आसानी से कर लेंगे सर, गाड़ी रोक दो। रहने दे अरे वो, अरे सर क्या है, धर लिया जाता, मजा आता। अबे लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अगर उसने प्लीड गिल्टी कर दिया तो एविडेंस का क्या काम? अबे ओ इतना ना मेरे को भी पता है कौन प्लीड गिल्टी करता है कौन नहीं, है ना। सार्जेंट ऐसी नहीं बन गया डीएससी में था इससे पहले, मेरे को पता है। सर उसकी शक्ल पे लिखा था वो नहीं करता। चल ये नया वाला लगा, टर्मिनल सर वाला। अब मैं नहीं लगा रहा, आप खुद ही कर लो। ठीक है चल। यस विजय खन्ना व्हाट्सएप 20। Direct to Vijay Khanna. Wait at the car parking. We are coming. आवाज बदल के बोलेंगे, आओ चलो। हाँ कौन ये? अपर पार्किंग। अरे अपन तो अपन, अच्छा वो विजय खन्ना था क्या? हाँ विजय करना, चलो। इसको भी बोल आजा। दुश्मन इज सेइंग वेट वी आर ऑन माय वे। दुश्मनी सिंह क्या नाम है?
दुष्यंत वगैरह सुना है? दुश्मनी क्या है? दुश्मनी होगी किसी से पर्सनल। घर वालों को दुश्मनी थी इससे। लोगो इसको रोक रोक। अरे नहीं हमारे धीरे चलाओ, धीरे धीरे। डायना डैनियल्स ये कौन है भाई? ये थोड़ा नाम किधर है एक बार ट्विटर चेक कर। डायना डैनियल्स सर 30 की स्पीड है, उससे धीरे क्या चलाऊं? अरे नहीं मजाक कर रहे कुछ नहीं। अरे इस बंदी का नाम देख। वही याद आ रही है ना जो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। मैंने तो वही तो पढ़ा, मैंने पहले वही पढ़ा। देखा तो ध्यान से याद है। अरे come to the upper barracking who were requesting for the FTOs. I'm already up. आयो दिखाओ यार कैसी हो दुश्मनी यार? सिंह क्या? इज दैट यू या तो विजय? नहीं यार, हम विजय खन्ना है। अरे तो उसको दुश्मनी क्यों बोला? दुश्मनी कौन है? 608 डायरेक्ट टू दुश्मनी। I'm in the देख लो, ला लो। You can go रिप्लाई कर दो फॉर। नहीं है ये पुरानी है, देखिए जरा। चलो यार, दुश्मनी नहीं आ रहा। एक सेकंड थोड़ी देर में बंदी ले क्या कहते हैं काम किए बहुत गजब के। चल आजा कोड आओ सर शूट आउट अपने अंदर मेरे को असाइन कर लो, मतलब मेरे अंदर अपने आप को असाइन करो। 436 आपके अंदर असाइन कर लेंगे। चल आजा आज बात कर रहे हो तुम है? क्या बोला मैं? 416 राइट आपको? 436 70 608 के नीचे कर लो। 608 प्रोफेशनल है। ओए हम ड्राइवर के अंदर 436 अरे कहां? 436 608 पे 608 भी तो है। अभी स्टोमू ने अपने उस पे कर लिया होगा। हां 608 इसीलिए तो बोला। 608 चोमू है तो एक नंबर का। ये एक बंदा का मर रखा है। अरे सर आप मेरे अंडर में, आप नहीं समझे। ये बंदे जा रहे हो भाई? रुक जाओ। इन भाई सब को क्या हो गया? पूरा रोड प्राइवेट प्रॉपर्टी है, घर होगा। मेरे घर है यहाँ पे, बताओ कहाँ जा रहे हो? मैं ये पूछ रहा है ना इन भाई सब को क्या हुआ है? ये कहाँ सदमे में अरे ये भाई साहब ना रेसलिंग मैच कर रहे थे इलीगली। अब बेचारे अब इन्हीं की जान। ये तोंद के साथ रेसलिंग मैच कर रहा था। ये क्या चल रहा है इधर? वो नहीं भाई बस अरे तो अंदर ही बैठे रहे, अंदर बैठे रहे चोमू। ओ भाई चलो यहाँ अबे अंदर बैठ। ये क्या बात है? चले जाओ, भगा देते हो यार ऑफिसर आए तो। कोई बात नहीं यार, हमें अच्छे नहीं लगते यहाँ पे ऑफिसर। ठीक है यार। अभी पीडी पे दिख जाइए भाई, एंट्री नहीं दूंगा। चलो इसको पीडी पे एंट्री नहीं देनी। आओ। अबे वो तो कभी नहीं देंगे। अभी इसकी बंदी छिप दी। अरे बात क्या है, ये सब ना अभी पूरा गैंग वैंग इधर है और हम हैं अभी 3। गैंग बोलते अपने गैंग। रोको, पीछे घुमाओ हम दिखाए गैंग कौन है। गैंग बोलता है ना अभी अपन 3 लोग ही हैं। गैंग बिचीज। ओए स्पीड पे ले जाओ। ओए सुन मारा बुंतरा हमने। हां ले जाओ स्पीड में ले जाओ और वॉल्यूम 12 रगड़ लिया ना। चल हां ठीक पता है क्या होगा? क्या आएंगे साले भी कर लेंगे। अरे डन सर आप लो ना, बोले चिल्लाएंगे। देख पीछे आ रहा है। पीछे देख। रुको बात कर लो ना। अरे देख भाग गया। सुनो प्लान चुप अरे चल 76 से लेटेस्ट 99 है। ओए लगा मार। अबे 99 है चोमू, 99 ए है। पहले मारा बंदा। लड़वे चल ठीक है। पहले मारा बंदा यार। ठीक है रुक। उल्टी साइड ज्यादा गलत दिखा गया। उल्टी साइड मजा आएगा। ना स्पीड में कर ले अपने को, स्पीड में। ठीक है रुक। ठीक है मैं वो करूंगा। ठीक है क्या बोलते हैं, रेडियो पे बोलूंगा। नहीं चोमू मेरा फोन। ठीक है 3 अच्छा 3 अपन तो किसी 608 के अंडर काम कर रहे हैं ना। अपन ने तो कुछ किया मार रहा बुंता रगड़ा उड़ा दिया। कर्मा होगा भगाओ अरे चलो 80 का मार्क लगा तो। अरे आज सर गो पिक्सल क्लिक करो। कर ही रहे भाई। देख पीछे आ रहे बंदा, पीछे आ रहे। भागो ये हुई ना बात। अरे माँ
अरे वाह, अरे अरे मेरा मिरर पेट, पार्ट अरे भाई, अरे महान आदमी अरे पीछे, भाई रुक पीछे, जा, तू पीछे। मेरे को हाथ से ले गया। 99A A प्लस। अरे अरे रिवर्स ये में। A प्लस है, अरे पीछे ये है यार। ये लाइट बंद कर अरे चुके हैं। अरे वाह, मेरा रुक 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 मेरे को हाथ से ले दे। ओए ओए रामा, ओए रामा, ये मजा आया। Continuing with street, took a right, ये हुई ना प्रमोद शुक्ला वाली बात। heading northbound Elgin Avenue. चलो ना। अरे भाई चल अबे वो हर्ष रहा है बेचारा। मेरे को गाड़ी दो, मेरे को गाड़ी दो, हटो, उतरो उतरो। ये मैं मार हाँ, दे रहा हूँ, अबे ये हो मार खटाओ, मार खटाओ। साइड हटो, आपसे नहीं होगी, हटो। अबे हो जाएगा, चल। अरे आपसे नहीं। अरे आप घटिया हो, आप बच्चे हो, अभी हटो सर। अबे चलना। 480 attaching. LS freeway, correct lanes of travel. सब अपना मार LS वाला freeway ना, काम अच्छा। करो। ओए दिन Opposite lanes of travel, LS freeway. भाई ये ला, ये मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये अब आएगा देखिए बोलेगा ए इधर आके फजलिल पे आगे बजे रहते हैं, फजलिल पे आगे बजे रहते हैं अच्छे, ये बोलेगा, देखियो यही होगा गैंग वॉर गैंग वॉर गैंग वॉर डरते गैंग हैं वॉर। सर, मैं गोली चलाता हूँ ना, लोग डर जाते हैं, मेरे को जानते नहीं हो आप। तू चलाती है ऐसी उस जगह दिन पे? मार नहीं दिया। Still continuing भैया सर को? northbound हमको off-road 2 दिन हुए, may इसलिए किसी को exit पता नहीं। towards Harmony. अच्छा विजय सर, आपको 2 दिन हुए, और फिर मैं भी नेता वेट बन कर रहे रहा हो? Yeah, I'll exit towards Harmony. पागल हो तुम? पागल हो तुम? ए गाड़ी कौन सी है बताइए? पता नहीं रे, रुको मैं चेक। देखिए देखिए मेटालिक व्हीकल क्लास A Z2879, ये कौन सी गाड़ी? ये पता नहीं, देखिए जरा सेंटिनल गूगल पे। Z2। अरे वो है पुरानी वाली स्टाइल की। Northbound फेयर लेडी है क्या? from the Harmony. चलो चलो चलो, गाय मत मार देना। Harmony repair shop. Taking a right गंदा towards ड्राइवर भाई। LS चलो freeway. A प्लस सर, A No, ए प्लस भी है बेटा। disregard, took a U-turn. Continuing पुरानी straight कमेरो है on बे, पुरानी। मास्क लगा ले, मास्क 268 मास्क लगा ले। मास्क लाए हो? रहता तो है ये जेब में। अच्छा ये शायद पुरानी Extra पड़ा कमेरो होगा, है, फिर देना। 1985 वाली। कौन सी फेयर लेडी सी है क्या? Still continuing on. अबे डीडी कौन क्या कर रहा है? इसको बोल 268 ड्यूटी पे आ। अल्लाह हाईएस्ट पे काम कर रहा है। चल। अरे इसने तो रिजाइन दे दिया नहीं? 65 joining a 70. 10-4. ये है कौन है डीडी को? अरे धीरेन। धीरेन वो क्या बोलते हैं, वो तो बानर। अरे भाई अपना वो कॉन्ग, किंग कॉन्ग, चिंपैंजी। उसने जो रिजाइन क्यों दिया? धीरे ने पे कब चले जी? हाँ इसमें चला गया वो। Ammunition just because I'm to the ओके west नेवर on माइंड, 460. सॉरी। अरे बच गए बे भाई। लोकल का एक सीन तो है, जानबूझ के लेफ्ट राइट होना जरूर। किसी कुछ देखा तो नहीं लग रहा है Passing सर्वाइव by वगैरह? Route 68 for them to the entry. We are on our way. Just long eyes for you. If you're coming from city, then go to Great Ocean No, no, I'm just at your back. AFM. आराम। पुरानी कमेरो है रे, कहाँ है? दिखी नहीं थी भाई ये लाइट। हाँ बे अच्छा पुरानी, अबे ये वही तो नहीं जो, अबे ये भी आ गया लिंक। ये एक और 99 नहीं आ गया, ये भी सही है। हाँ ये पुरानी Take कमेरो। a right, merging into Great Ocean Highway, northbound. CVPI, you can take primary दूसरा from my किसका है left. ये बे? लिंक से सस्ती क्यों चाइनीज वालों जाएगा। हाँ 99A, ये लिनक्स आई है। लिंक्स लिंक्स। अबे यार A प्लस कर, Links। कैप्च कर। यार हर अभी इतने ज्यादा फेमस है शेखर, हर जगह इसके बर्थडे You पे pay catch up पार्टी। in A place, then switch back to A. Oh, sorry, doing that. Okay, vehicle heading northbound Great Ocean A. We just behind your मारो 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 मारो, आई एम बैक। TLMC डाउन।
लम्बा हूँ। मारू 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 टायर पॉप। अरे इतना जल्दी नहीं। Tracker where off? Primary, give him a warning. He is going under 100. Sir, give him. Let the areas get straight. Give him a morning of pit if we can. Fury your call. बेचारा लोकल छूट गया यार। Fury कहाँ से है? एक्सप्लोरर में कौन है? अरे कौन है? बिल्कुल थर्ड फ्यूरी मेरा माइंड। अरे गोली कौन है मारो Fury? यार। सर क्या ड्राइवर, मेरे को गाड़ी दो गाड़ी दो गाड़ी गाड़ी। किल अप्रोच ना इसे बाहर निकाल दे। नहीं हो रहा सर, गाड़ी दे दो, गन पॉइंट करके ले लेंगे। चलाओ यार। हैं मारा बुलता करालते बोल रहे हो। भड़क जाएंगे सर आज। भड़क ही गए। अरे भड़केंगे। भड़क तो गए। सर सेंडिट ही कर रहे हैं तो वो एक approaching Purito fuel pump ना North Transportation Highway. कौन है बैठ नहीं उड़ा? ओए देख इधर ही म्यूटियर गिरेगा। क्या होता है सर? ब्रेक मत करना यहाँ पे, टर्न लेते रहो। आप टर्न लेना बेटा मेरे को पता है। ब्रेक मत करना कभी इस वाले टर्न पे। हम F1 देखते हैं, हमें पता है सब। आप अभी न्यू भी ड्राइवर हो ना, आपको बोलना पड़ेगा। Primary codes off. एक सेकंड। अच्छा कोड्स ऑफ सर। मैं प्राइमरी नहीं हूँ। हाईवे पे एक तो कोड ऑन करो, मतलब अपनी गाड़ी नैनो बन गई। Regulating eastbound Sonora freeway towards Crepsey. बच गए। Who's the highest who's the commanding of the situation? आवाज यार सर, बोलते जाओ, आपकी आवाज तो आनी है। हाँ बस मुंह चल रहा है। 97 नहीं आ रही रेडी आई पे नहीं आ रही। मुमला मुमला 70 गोली खा। Was that an industrial pit? X की गोली लो। करो। आ रहा बस। हेलो हेलो। Spec is heading straight southbound Sonora freeway Crepsey Turf. Who's the commanding? CVPI. Who is driving the CPI? अच्छा। Sir, 371 Prem. And 4. Commanding sir, can we go for the pit? Sir, menu commanding sir. क्यों देना तेरी? नहीं सर, आप फर्स्ट रिस्पॉन्डिंग, आपको आज कमांडिंग सौंप दी जा रही है। Sir, 10 पर सर। सर नहीं पिट नहीं देते अभी। Okay, I only heard the 10 for but requesting primary going for the pits. अरे अरे 10 पर सर। 80 का स्पीड देख लो, स्पीड देख लो। He is under 100. ठीक है, गुची करो। You know he is under. Take primary. Thank you sir. Going for soft pits. गुची। पागल नहीं कहता जल्दी पिट क्यों देना? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। रो देगा। अरे जब रोड ब्रॉड है तो दो ना, क्या दिक्कत है? अच्छा इसलिए तो दे रहे हैं। अबे सामने वाला देगा। Mind he fucked up. अपन फक हो जाएगा। सर एक काम करो, आप गाड़ी छोड़ो, मेरे को चलाने दो। मैं बोल रहा हूँ, मैं 2 मिनट में धर दूंगा। मेरे ना इसकी बातों से ऐसा लग रहा है बेटा तुम्हारा क्रेडिट प्रोग्रेशन शीट में ना नेगेटिव मार्किंग कर दूंगा। चुप रहो। अरे अरे सर, गुस्सा क्यों हो जाते हो यार? मैं यही बोल रहा था कि मेरे को लगता है कमर और नैनो बन के उड़ के गिरेगी। Should I go for the experts if you are like level 2? आप क्यों जाओगे सर? आपके आगे 2 हाँ मेरा हो गया था। लेफ्ट विल बी लास्ट वाला हो गया था कि नहीं? वो तो उसने खुद ही ठोक दी। लेफ्ट विल बी क्लियर भाई। अपनी ग्राउंड को दे दो, मजा आएगा। सेंड इट कर दो यहाँ से, पूरा सेंड इट, स्पीड बढ़ जाएगी। सही है। Enforcer taking primary from your left. ये फन। ओए लेफ्ट ही मार लिया उसने। Primary taking over pumps, took a right, going straight towards MRPD, southbound. Right left. Again took a right, going towards Legion. Took a left from Legion. स्ट्रॉबेरी है। Took a right towards Legion Bank, westbound. Took a left, westbound Elgin Avenue. Going inside the rentals. अपनी गाड़ी नहीं घुसेगी CVPI। Taking a alley. ओ घुस गई। Took left. Another left. Left.
Took another left, VCB for now. राइट किया होगा 100% पता नहीं। It's a VCB for now. अबे यार ये इवेंट राइट पीछे। अरे रिवर्स। आज सर अब टाइमिंग है ना बहुत खराब। What is पीछे? Which पीछे? Race gone. VCB right now. अरे ऐसे नहीं अबे ट्रैकर ऑन है चोमू। पकड़ के दिखाऊं। ट्रैकर इज ऑन स्टिल ऑन or not, don't know. Wait, it's another car, never mind. अरे दो ए प्लस हो रहा है ना, मतलब दो 99 ही हो रहा है सो लिंक। दूसरी ये तो इधर घूम रही हो। 6 कर रहे हैं बेटा। अरे देखो मैंने जहाँ पे मार्क लगाया उधर ही होगा। That's vehicle seen at scene. वो 71 का है, छोड़ दे उसको। अरे उधर ही गई है, मैं बोल रहा हूँ। इधर नहीं आई होगी, वो उधर गई होगी। मैंने देखा है जाते हुए। 78 actually. 20. At Legion, there's a Rocket League thingy going on over here. 10-4. 76. The RX-7 and Remus, they were involved over there. ये S plus लोग के सामने ही डर लगता है मेरे को तो। What are they doing? Nothing, just playing Rocket League. With you or on me? Yes, with me. क्या कर रहा है भाई? देना पिट दो ना क्या कर रहे हो? जो हमें दे रहा उसको हम भी देंगे। The fuck is going on, dude? डर गया क्या? गार्ड में नहीं है क्या तुम? मारो उसको दो। सामने आ जाओ यार। अबे क्या कर रहे हो? It's gonna be activity with the Geo. ले इसको नहीं छोड़ना G60। Heading westbound Adams Apple Boulevard. Taking a right northbound Power Street. गोली मार दो। आगे निकल रहा है, हेड क्यों कर रहा है? लाइफ को थ्रेट है। Taking up a power northbound. और फिर लोग यार पिक कर। Taking a लग गई ना चोट। San Andreas Ave. टायर पॉप करूं? नहीं यार, कर कुछ पागल है। अरे नहीं कर रहा भाई, चिल करो। Vehicle taking a U eastbound San Andreas Ave, lower San Andreas Ave. Clear. गया Taking a left northbound Alta Street. Into the world. कर रही है SGT। एजी को ट्राई ना फॉलो। निकल। लीव। ओ एसजी को भाग जा चल। Taking a right east Ave. Another right into the construction site. Turn into a shoot. पढ़ो ना? SOP पढ़ो। जाके SOP पढ़ो। हाँ टेस्ट के पहले पढ़ेंगे सर, आ जाओ। अभी पढ़ो। प्रोफेशनलिज्म। वीवो मैम को ना हालत खराब कर दी थी। हाँ ना, मेगाफोन पे मत बोल। कौन है वो? मैं तो जानता नहीं। ठीक है। Cause of 80. Class 2s and intentional goods. प्राइमरी टेकिंग गाड़ी रोको ब्रदर। Came on road also street southbound. Take care, RX-7 is back. Okay, the Continuing to towards apartments. Remus trying to involve pitted us head to head. Okay, the Remus is involved, all right. The SG for Yeah, Remus good for pits, good for pits. For Remus and RX. RX-72. We got eyes on G-Wagon. Repaired है? G-Wagon. Okay, so dispatch, I'll advise there are 3 vehicles involved. RX-7, G63 and ये Remus, रहा and I can see the G3. गाड़ी फ्लिप्ड है, सैन एंड्रियास एवेन्यू। ASAP. Man running west सैन एंड्रियास एवेन्यू। जल्दी आ। Guys, I need a minute. आजा। आजा भाई बैकअप। आजा यार। आजा बैठ जा, तेरे को इसके तो बैठ जा। अरे हाँ, देख इसके प्लान। कब कर दिया उसने? The RX-7 is here, RX-7 is here. This one, there are 2 vehicles. Leave the area, dude. I'll be going for the pits for RX. Never wait. Get him inside. क्या हो गया? भाग। Going for कब भी नहीं बोला है। चलो इसको पकड़ना ही नहीं है। भाग जाने दो। छोड़ रे, बम छे आरआर वाला है। छोड़ो आरआर वाला। Let them go. करके सर। अरे ना दे दी आरआर किड्स with 2 E's, you know। भाई कितने चाहिए होते उनको कब हो चाहिए जाओ तो सो रोने लाइक लग जाओ। छोड़ो। मत बोला करो।
Good for them. मैं पूरा पता है बोला 1 2 3 गोइंग फॉर For फिर zero कब क्या backing फिर भी off दिक्कत है भाई and I suggest please keep radio clear. ये लग पागल है पीछे आ रहे खुद ही Give छोड़ short दिया comms जाना which are needed, but don't talk like this. Do a thing, Please. just like leave there. Leave it. Okay. दे दे बात ही नहीं बात को तो ठीक है, क्राई किड मत बोला करो। अरे रेडियो देखने आ रहे हैं क्या उसको क्या जा रहा है मैं बोलता हूँ दिखा ना हट जाओ ओए छोड़ दो उसकी 10-7 चीज़ हो आगे। 2 मिनट के लिए हम थोड़ा नेचर को ठीक है, अटेंड ठीक है, करेंगे। ठीक है। हाँ सब जा रहे हैं अबे जूसी क्या कहते हैं उसे क्या है अब मतलब अर्जुन अबे आरआर बम चे थे हाँ, बे रो रहे थे रहने दो अबे कफ कर दिया तो बंद हो गए बट ऐसा बोलो जस्ट बैक ऑफ। ये सब सुनो ये सब रेडियो पे बोलना अच्छा नहीं लगता। अरे कफ हो गया बोल उसके दो बाद कि बोल back रहा off है कर लो। गोइंग फॉर कफ्स तो बोला ही नहीं मैं भले बोल के बोल रहा हूँ हाँ फिर उसके बोल रहा बाद है, उन उसके लोगों को बाद चाहिए सुनो, वे उसके फालतू बाद हाँ मुझे पता है ये उसके वही बाद मैवरिक का पार्टी। अपने इधर आकर डिस्कशन करते हैं वो बात अलग है ओके बट उधर रेडियो पे मत बोला करो भाई क्योंकि सब लाइक अपने तो ठीक है चलो मैं तो इग्नोर करता हूँ लाइक ये वही बंदे वो मैवरिक ज्यादा पार्टी कन्वर्सेशन जो होती है बट जो बेकार लोग का मीटिंग ठोकर है। में लाइक जो लोग हाई कमांड जो लोग मीटिंग में है बात कर रहे एक दूसरे से ओके और रेडियो पे ऐसे कॉम्स जाते हैं ना तो वो लोग फिर लाइक तेरे को लाइक कि क्या चल रहा है सब व्हाट रकस आर यू मेकिंग है ये सब हो जाता है समझ रहे हो तूने जोशी फिर की कॉल सुनी है मैं तो तुम्हारे सुनो मैं तो एक तुम्हारे लिए सेकंड देता हूँ तूने जोशी की कॉल जोशी सुनी का है व्हाट द फक व्हाई आर यू सर्चिंग मी जोशी की एक बार कॉल सुनिए परमिशन सर्च जब आरआर होता है ना उसकी कॉल सुनिए तब समझ आ जाएगी क्या होता है अबे हाँ बट अरे आरआर वाले बमचों से भी सख्त नफरत है आएंगे ऐसे उजी निकालेंगे ओए बगल में जा कैडेट है तू अभी हमें बैठो ना यार बेटा मेरे को ऑफिसर में भी नहीं मिली थी एक्सप्लोरर मेरे को मत बोल बगल में हो मैं रोज चलाता हूँ चार्जर चला चुका बैठो बस पता है क्या मैं 99 को पिट करने के लिए गया बंदा खुद ही ठोक गया। मैं तो बोलता हूँ अब जीवन भाई छोड़ो भाई हिट करो ठीक है और उस रॉकेट की कुछ काम वाम नहीं होता है ना तो यही करते हैं अरे बेफालतू का नौटंकी कर रहा है चेज खत्म हो गई फिर भी आरएक्स पता नहीं पागल किधर ही नाच रहा है चूतिया देख ना वो तो राइट लो रिमस के पास लो ना इसके पास लो बात तो करूं सामने से देखो आ रहा है दे आर मारेगा फॉलोइंग चार गाड़ियां Need 78 is up. We are getting fitted. छोड़ दो नहीं कर रहे लोग छोड़ लीव इट गोली मारेगा और क्या नींद आ रही है हाँ प्लानिंग चल रही बोलो भाई क्या हुआ निकल अर्श मत निकल बोल। अर्श निकल पीछे से बोलो सर क्या हुआ सर गो छोड़ Following us Auto need 78 is up. 78 4 units, 3 cars and 1 bike. We are currently at population. Yeah, I need 78. Yeah, there are So we are getting followed. 4 vehicles. so about 20. Beatwise, they are the same people popular. involved in the G-Wagon chase. अरे माँ So I'll summarize it up. We have 4 units behind us. We are currently at Pinkage model. ये भी सही And our है car is almost disabled. ये भी सही है गाड़ी महंगी है फरारी की Dude, you okay? भाई तुम सही हो पागल हो गाड़ी सुंदर है बड़े वाले भाई गाड़ी सुंदर है ना सर अरे एकदम सेक्सी गाड़ी तो सुंदर एकदम है सेक्सी बट ये आदमी ऑफिसर कौन है वाइट वीडियो वाला कम तेरा वाला भगा पीछे भगा जो भगा भगा बैठा है वीडियो ना। कम तेरा भगा भगा अरे तू यहाँ से निकल अर्श अभी Sir, मैं हूँ चलना हर्ष क्या कर रहे हो sir, need 78 front. अरे जान दो Need 78, we are getting trapped. पेलो रे We are box. दे Cross one or दे तेरी तो चला दे ले रे कर बॉक्स कर बाहर निकल हर्ष सर ड्राइविंग से पीछे जाओ मैं संभाल रहा हूँ मेरे को ऐसी सिचुएशन में अच्छी चला लूंगा Rocky sir, एक बार आप कार भी edit कर लो शायद वहीं आपको shoot मत हो बे बोल देंगे रे नहीं बात
क्या करना है भाई मेरे को समझ में नहीं Yeah, if it's RX-7 involved in that, Yeah, Gilly, same 10 RX-7. for RX-7 SG4 and a bike involved. And a reverse. RS7 is for 10 for. We are currently at Legion. You're Legion or अरे भाई Pink हुआ Cage? क्या पार फॉलो क्यों कर रहे Disregard हो? my last call. We are at PDM. Last warning us, stop following us, stop following us, LSPD. Okay, we are हाँ? currently डू थिंक crossing Legion. ओपन पीडीएम गेट्स, ये पीडी की ये दरवाजे खोलो जल्दी। मत घुसा, Night- Someone chasing Leave it, you, leave do it. not enter the MRPD, Yeah. right? It's a misuse. SG4 is back. I'll be going for foods. Alright, first of all, switch this situation to Radio 5 because Nah man, it's you like guys are not getting. 4 officers man. 605 to dispatch need FT for right along. अरे एक मिनट रुको, अभी FT रुको। 10 for, 20 बताओ, what's the We'll go to Radio 5 then. Yeah, switch this to Radio 5. आ जाओ रेडी फाइव Radio 5 पे पहले तो बहुत गन्स आउट और आर्मर You have 3 vehicles, including the SG4, at Trooper SPD. an SG4 a Rimas SG4 is And a bike smoking involved. almost. RX-7 involved as well. Keep updating the route. Yeah, Trooper SPD. मेरे पास They'll be circling around Trooper SPD. You guys can catch up. Okay, I need to meet at one point. Wait, Make sure the I'll do a weapons thing. are I'll just disabled coming for up. the shooter. I'm just coming up in front of the trooper security. God. Group up at one point, then we'll decide. I'm on like 2 stalls. So Yep. yeah. You're vacating north, one populous street towards auto. अरे मेरे को लगा Yeah, we are there. 10 4 we are here. हाँ भाई अब बताओ फॉलो क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ भाई, ये फॉलो क्यों कर रहे हो? जाने दे दिया आप क्या? बोलो बोलो बोलो। पास इतना दूर से बोलेगा तो क्या? पास आके बोल ब्रो। बोलो 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 भाई, बोलो ना, बोलो ऑफिसर बोलो बोलो पीछे क्यों बोलो। जा रहे हो? बोलो बोलो हाँ तो बोलो 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 ना, सुन रहा बोलो ना, हूँ बोलो, बोलो, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। बॉक्स नहीं करना नहीं तो हाँ नहीं कर रहे तुम बोलो क्या बोलना है, बात करो। Okay, one of the guys just said in the RX-7 they don't have class 2s, although we didn't even ask them. अरे क्या हुआ बताओ ना, क्या बात करना है, पूछ रहा हूँ। क्या हो गया है सर? अरे आप ही को बात करनी है, आप बोलो क्या बात करनी है, Don't बोलो remain stationary, don't remain stationary. बोलो क्या बात करनी है। रोड पे चल रहे हैं, फॉलो थोड़ी Hello, my name is Shiny Milo. I love to play games. फॉलो नहीं कर रहे हो तो Okay. हमने जब सर्कल लिया तो पीछे पीछे क्यों है? अरे हम कहाँ फॉलो कर रहे हैं? सर जी इतना हमें भी पता है अरे फॉलो क्या सर, होता है और पीछे अरे अरे सर नहीं करे, हम तो रोड पे चल रहे हैं भाई, सेम अपना क्या बात बात होंगे कर रहे हैं? अच्छा रोड पे चल रहे हो, रोड पे चल रहे हो तो हमारे पीछे पीछे हमारी रोड की फॉलो कर रहे हो। सेम पाथ होंगे ना हमारे। अरे सर कौन सी अच्छा मैं एक ही जगह से 4 बार गुजर गया, वो उसमें सेम पाथ। Commanding the situation, let us अरे know. हो सकता है कि नहीं हो सकता। जस्ट बी देयर, जस्ट बी नहीं आप यहाँ से सीधा जाके वो सोचना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि कहाँ जाना है। हमारे बात सोचोगे क्या? वही नहीं अगर आपको Okay, बता just दिया to आप वहीं brief, मुड़ोगे the फिर। guys in the Remus आप RX-7 they have class 2s. I don't know about the Sentinel guy, आप he जाओ, was just about. हम अपना देख लेंगे। आप जाओ, हम आ जाएंगे, कोई बात नहीं। है जी। अरे ये ऑफिसर हमारे पास टाइम वेस्ट, कॉपी कर रास्ता रहे हैं। ब्लॉक कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर तो रहे ठीक हो। है आप सीधा जाओ, मैं उल्टा जाऊंगा। डन? ओए कौन ठीक है, अबे? अबे नहीं है यहाँ कोई। हम सीधा अपने रास्ते जाएंगे, अब भी उल्टा जाइए, ठीक है? ठीक तो सीधा दो। आप उल्टा जाइए, हम अपने सीधे रास्ते सीधा रास्ते तो जाओ, हम तो सीधे ही स्टैंड तुम बाय उल्टे खड़े हो लाइन में। आई एम लाइक डोंट आज सर सुनो, एक प्लान है। या सीइंग दिस फोर बाइक को फॉलो करने दो, ब्रेक चेक कर दो, बाइक वाला उड़ जाएगा। बेटा मेरे को स्ट्राइक पड़ेगी। Seeing these like 4 people like following me in that fucking jungle. करने दे सुन, फॉलो। सुन, पीछे बैठा है ना, Yeah. पीछे जो बैठा है ना, गन पॉइंट रेडी रखियो। हाँ हाँ मैं रेडी रहता हूँ बे। दिखता नहीं क्या बाहर समझ से। रहे हो यार मेरे को? बाइक गाय गिविंग कॉम्स ऑन रेडियो। We gonna just cruise like slowly right now. भरोसा नहीं होगा, कुछ भी कर लेंगे। 35 पे बैठ।
क्या हो रहा है? Speed it up a bit and see if they're still chasing you. Speed up a bit. Yeah. Take a U, come back. गंदा ड्राइव They want to drive. They are chasing us. It's the other way around for some reason. इनका कोऑर्डिनेशन कहाँ है? Yeah, falling. ये लो पेड़ पड़ गया। भाई मेरे को ये बताओ, ठीक बात बताओ, क्या कर क्या रहे हैं अपन यहाँ पे? क्यों चेज कर रहे हो? I've given them multiple warnings to stop We following. are trying to find right path. What path? ओके राइट पाथ ढूंढ रहे हो, किधर जाना किधर है? मैं बता अरे कहाँ मिला? सच्चाई के राह पे ऑफिसर के साथ। सच्चाई के राह पे? नहीं तो ऑफिसर को नहीं, ऑफिसर को चेज मत करो यार ऐसे बिना। Make some cover if they should. लाइट्स ऑफ कर दो, लाइट्स ऑफ कर दो। क्या दिक्कत है? Let's just move. जब लाइट्स ऑफ कर दे उनका दिक्कत है। अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, कैसे फॉलो करें? Don't remain stationary. अरे जय भाई फॉलो देख के चलते हो ना। ये देखो ये लाइट लगी ना ऊपर बोल रहा था। अरे Give them a final warning. If they still following you, we'll start. उन्होंने कहा follow the car 436. Start being aggressive, choke them down, and we'll have to, Last one. Yeah, this better be their final warning because I've been aggressive with them earlier. They have given multiple नहीं warnings. कुछ करते यार, हम अच्छे लोग हैं, क्या बात कर रहे Do हो? hमें विश्वास नहीं होता ना, पीछा मत करो यार। The gun. अरे नहीं, They do anything. हम तो अपने रास्ते दरवाजा तोड़ दिया, अब तो ऑर्डर लग रहा है। Tell them go fuck off. Clear the road. Do something. Let's do it. दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा एक ना एक दिन, समझ रहे हो? अंदर कैसे घुसेंगे? कैसे घुसेंगे फिर बताओ ना। Hello guys. अभी परेशान मत If you're not doing anything, just leave and let us do our work. We don't have all day. Right? We are strong on the traffic stop. Get the place for RX-7 and We'll do it. ले एक दोनों टाइम इनके जो Yeah. Officers, let's go. Don't follow. जैसे उधर भगा दो। मालूम? चल ठीक है। मेरे को पीछे बैठने दो। Officers, let's move. मैं पीछे भी ठीक है भाई। Move. If they still follow you, you have to you have to go Press flag. aggro. All right? एक में बताइए SG4 is flag. Leave it. We'll catch them another time. चाहिए भाई? सॉरी सर। अरे माफ करो यार थोड़ा। They're baiting you. So do not fall in the bait. ये ना पीछे पड़े हुए हैं यार। Stay following us, sir. ये अबे मारो ना भाई, कितना टाइम और लोगे यार? इतना वही ना यार, कब से परेशान कर जा रहे हैं, मार के खत्म भाई मारो, खत्म करो। हैं जो उसकी देख रहे लब होने लग गई है। कब से वेट कर रहे हैं। है ना बेटा, एक टाइम को हमने भी 40 गाड़ियां निकाल के मुतवा दिया था। ये मैक्लेरन कौन लेके घूम रहा है बे? अमीर बाप चल हेस चल। टाटा मारेंगे यहीं से। खुद भी आपस में भिड़ गए, चलो सही है। आपस में आपस में भिड़ गए। अच्छा आपस में भिड़ गए। I need you at the MRPD. Just 10 foot, 20 years old. Just take a breather at MRPD and then go out for forward. And everyone just get inside the lower garage. You need to have a talk. क्या हो गया अब अपनी? अबे कैडेट पेल दिया है, कैडेट पेल दिया। 445 back on repair को intersection यहाँ पे। No. Suno. Come here. If someone is following you and they are doing something like you feel you have a risk on your life, all right? Update the dispatch that they are following you. I am threatened. The unit will come to you. If they still following you, you can detain them under the traffic laws, all right? Don't just around, all right? They just want to bait you, so you are just following them. If you are chasing someone, just chase it the proper way. You fixed one vehicle, that is the vehicle you want to catch, go after that, not all of them.
You're not able to kill all of them. All right, just focus in the one car, then go for it and try to detain him. If they shoot, we'll shoot back, because we cannot shoot at the first place with a normal thing. All right. So इधर बहुत confusion थी, कोई command नहीं ले रहा था, पहले गलती. दूसरे रेडियो से मैं और रॉकी आया, उसके बाद सिचुएशन ऐसा हुआ. ऐसा नहीं होना चाहिए. हम सब जगह तुम्हारे हेल्प करने नहीं पहुंचेंगे. खुद को भी कुछ करना पड़ेगा. Right. And another thing, if you are like doing some situations, try to take the command. Because if you want to get promoted in the LSPD or any departments in the Unified Police Department, you need to have these skills to command. We'll have to like you have to show us that you can do a command. Then we'll have the name to recommend for a promotion. All right. So don't just be pussy around. We're not pussy people. All right. Yeah. We're unified. You're a part of a Unified Police Department. So we don't go to them and like try to put our fingers on them. They are doing it for now. All right. And don't entertain them this much. Sorry to interrupt, sir, but one of our officer request for 78. Right now? And he also 1 week yeah. All right. Radio 6 Go पे. after them. Go. Is it a GS? तो रेडियो 6 पे कमांड कुछ बोल नहीं रहा है वो. रेडियो 6 पे मैंने आके पूछा भी नहीं कुछ. Aarsh का call sign क्या है? 528. His call sign is active. Just follow it. Go everyone. I think we got a situation kidnapping officer. Aarsh has been kidnapped. I think his call sign is 528. His track is still active. Try to find it guys as soon as possible. Try to intercept it and hold it. All right. मेरी गाड़ी है ये तो 436 है ये क्या? मेरी कहाँ गई? आगे ओए तेरी चलो बेटा सर आपको बेटा बोलती है. 417 dispatch. Does anyone know कौन सा fuel station open है? ये हुई ना बात. आज से बुरा ना मानो, मैंने आपके जेब से Okay, the tractor is moving on the West Pucci Boulevard. बात करते हो तुम कैसे यार पीडी वाले हो? Which tracker are you speaking about? बन किया? Even at 80 but no comms. What the hell? I think the guy is chasing his kidnapping. He's not giving comms. 99 here heading towards West Pucci where we are now Popular Street. किधर जाना है? तीनों यार Vehicle is heavy smoking last call. ले ले इसको. If this Jaeger hits you again, I'll fucking ram you. G-Wagon heavily pitted me. Okay. They are with them. 3 individuals in the G-Wagon and 1 individual in the prime division. Alright guys, 10-3. Ajay, you're talking, right? 10-4 sir. We thought you got kidnapped. We tried to find you. Why didn't you give the comms? You're like in AD or something. Just finish this session and talk to me, alright? I request at the Autopie parkway. Yeah, so we thought you were kidnapped and asking for like, no communication on the radio that time. No issue. Just finish this and then we'll talk. Yeah, 10-3. मैं तो 12 बजे भाई सो जाऊंगा. मैं कोई एमबी भाई मेरे को भी नींद आ रही है. G-Wagon is circling around MRPD. Guys, I think you got enough units to stay 5 who are involved in the AD. Okay sir, CVPI backing. 4636 plus 2. मारो भाई, होता रहेगा ये तो मारते. सिल्विया प्यारी लग रही. सिल्विया ही थी ना? हाँ पता. अबे मेरे ख्याल से एफडी थी. एफसी मतलब जो भी हो यार, मुझे गाड़ी सोने जाने वाले तो फिर एंगेज भी मत करो. अरे नहीं 12 बजे जाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं. Okay sir, you need additionals. 15 ही मिनट है इसलिए. ओए तेरी ये जानबूझ के आगे पीछे करते हैं मेरे को तो. New join in all. जान की कर रहा है वो बंदा. रीमस वगैरह सारे जानबूझ के कर रहे हैं. अब मैं समझ रहा हूँ क्यों इतनी फ्रीडम पार्टी होती है. सामने वाले इतनी बात भाई वो बाइक वाले तो था जो रोया था, फिर बीच में आ गया वापस से. भाई रोएगा ही ऐसे करता रहेगा तो. ये अच्छा नहीं लगता ना ब्रो. एक बार हमने जब छोड़ दिया था वापस क्यों आ रहा है?
भाई हेड टू हेड दे रहा। I've seen this G-Wagon multiple times around us. G-Wagon को लो मैं तो बोलता हूँ। Give him a warning if he doesn't leave, then you know what to do. Don't come in the G-Wagon fucking भाई gate, कब you से dude. घुस रहा है, चला जाना ब्रो। सर क्या हो गया? दिमाग में था सर, दिमाग में था सर, दिमाग में था सर, दिमाग में था। ये रीजन जाने दो ना सर। हाँ सर दिमाग में था। तुम इधर से लीव करो ना, एरिया लीव करो, हाथ के तभी करो। ये तुम्हारे टोकने का रीजन है, दिमाग में थे। भागो भागो भागो। चल जा रहा हूँ। एक गाड़ी को घेरा रखा है सर। नाइस रीजन ब्रो, नाइस रीजन। बस मेरा हो गया आज का। You're fucking getting out or should I fucking detain you? सर मैं जा रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ, मेरा दिमाग। Yeah, fucking leave the area. भाई वो बंदा गाड़ी रोक बार इन्वॉल्व होके बीच में बोलता है ठीक है, मेरा दिमाग में जा रहा है। क्या ब्रो, क्या मेरे को पीड़ी छोड़ भाई। रुक अब इसकी पिट मार क्या उसकी छुट्टी। हम सो डर। क्रॉनिक हट जा, पिट मारो। ओके। G-Wagon is still following you. Let him get in the Survey करो, wagon again comes from. भाई पर तू तो दिमाग में था। G-Wagon is going down, man. Runway, कैसे get the give me space. When he reaches the highway again, I'll fucking put him down. भाई गो फॉर पिट्स बोल दो यार, जो भी कमांडिंग है। अरे सिटी है। Who's the commanding for this one? ऑलरेडी ब्रो क्यों नहीं देना भाई, जब हमको गाड़ी की हालत देख नहीं फटे भाई। Guys, we going for the G-Wagon. Guys, give me a down. ब्लॉक दे दिया। आप ब्लॉक दो ना यहाँ पे। स्पाइक करूँ। ये गाड़ी तोड़ दी। आर्श सर बैठो जल्दी Go for spikes. Ask the juggler to leave CVP. G-Wagon got man. Ask the other cars to leave CVI. Don't get in my way, man. Okay. अभी गाड़ी रिपेयर कराया, तोड़ दिए तुम लोग। हाँ यार। अरे move bro, what are you doing? Getting out of the garage dude, like you are getting in. 12 अरे वो नहीं है, ये दो गाड़ी नहीं है। 12 चुमू। सर हमें जाने दो। हाँ अरे यार भाई फोन रख दे अंदर। उनका हाथ अभी भी फोन पे, मेरे को समझ नहीं। सर मालूम है नहीं। कर लो सर, रिपेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। जाओ अब कर लो। सर आपके बाल बहुत सुंदर हैं। सर ये गाड़ी बंद होगी। कर रहा हूँ, मेरे को कवर पे। कहाँ दो कर कवर पे। सर कैन यू लीव द एरिया सर? भाई तुम्हारे को समझ नहीं रहा सर। भाई बोल रहे सो जाऊंगा। आगे हो जाए एक्सप्लोर। चल का तरीका है क्या? अच्छा थैंक यू सर। चल पीडी चल। मुझे तो बताने देखो। पीडी चल। सही पूछा। लॉजिकली सोच के बोलो। You have visuals on the vehicle, main vehicle. 24 है visuals on the G-Wagon. Okay, put it down. What is this reason bro? मैं दिमाग में था। सुन। वही तो मुझे भी नहीं पता। भाई कुछ समझाओ उस दोस्त को। सुन रुक अपनी ये तू ये इस बंदे को लेके जा, मैं उस G-Wagon को देखता एक्सप्लोरर नहीं ले रहा उधर। मैं G-Wagon को धर के रहूंगा, मैं को नहीं जाना भाई। अभी going for his tires now. मैं खुद नहीं जा रहा। जाना। इसको क्या करेंगे? बोल रहा कमांड है बेटा।
हाँ मैं लेके जा रहा हूँ। अरे ओए What is the 20 of G-Wagon? जा Where's one for dollar drive? पीछे उतर तो बाहर तो निकल। बाहर निकाल। Northbound Madvan Thunder Track. इसको उतार तो दे फिर ले जा गाड़ी। Currently VCB last seen eastbound South Boulevard Talpara. बैठो भाई यार। बगल में अरे सर मेरे को चलाने What's दो। the तू status बगल of में हो। 99 Alpha? One unit at Benny's vehicle was smoking. G-Wagon was smoking. वोल्ट के पीछे जो बगल में क्लकन बेल है ना, उधर जा, उधर भी बनी से। Got visuals eastbound Parker Way, Rocket Culture. ओके रॉकेट करता है। ये कौन क्या चाहिए? तो सस्ती है। Very long blonde highway car. अरे मेरे को बस वो वाला बंदा चाहिए जो बोल रहा था ना मैं Yeah, दिमाग में जा touching रहा from your right. हाँ उसको मैं भी धर रहा हूँ। हूँ। उसी को चाहिए, वही चाहिए मेरे को, और कोई नहीं चाहिए। ऊपर जाएगा कैसा मामला? So VCB again. Last seen eastbound highway car. नहीं ये not coming. Performing code 6 for G-Wagon. If will be hearing out the bus. I'll check. Was the vehicle repaired? No, G-Wagon was smoking heavily. 10-4. One unit go to the Benny's. I'll check the second Benny's. है जी सेकंड बेनीस। बेटा इधर भी पीछे Benny's है। ना डू चेक करते हैं। अरे भाई हाई कमांड ही बोलते हैं, हाई कमांड ही बोलते हैं। नो तू ठीक है बट जब कल बात हाई हुई थी कमांड्स तो never mind. हाई कमांड्स कैन व्हाट द फक आई कैन I'll check once. हां नहीं तो कर ले तू, अगर होता है तो फिर नहीं करेंगे। हाँ सर ने बोला तो ठीक है। नहीं अपन ने लाइक पहले तो चेक कर रखा है ना, अभी अगर कल कुछ हुआ होगा तो फिर नहीं करोगे। अरे इधर वो जीवैन को ये पता भी नहीं होगा इतना कुछ। वो चला गया होगा गाड़ी पार्क करके दिमाग में। दिमाग में अरे यार बहुत ऐसे लोग आ रहे भाई, बहुत आते सब क्योंकि दिमाग खराब करते हैं। तो इसको तो भाई मैं देखूंगा भाई, ये दिमाग में जाने वाले को बहुत दिमाग खराब करते हैं, मन नहीं करता। फिर 12 बज गए, चलो अपडेट ही जाएंगे। मैं भी जा ही रहा भाई, मैं सोने जा रहा, मेरा हो गया सोड़ा। सो रहा था got eyes on the G-Wagon. Ready? New additional says I'm going straight near apartments. Peaceful streets out. Took a left from apartments. Took another left, Cerberus. Northbound. Took a right towards Legion. Lower Power Street. Eastbound. Going straight, crossing Legion. इसको धर के जाऊंगा अब तो मेरा हो गया। Took a right towards MRPD. Took another right near Legion. 74 took a left. Again took a left, Fantastic Plaza. Took another left going towards MRPD northbound. Took another left going towards Legion. Another nice left, nice pit. Nice one, Explorer. Driver shot, get him. आजा। Don't go directly for the phase line. क्या बोले वो? NHK हैं? NHK ना? दोनों को मैंने धक्का दिया, मैं खुश हूँ। मेरे को जरा घबरा है, तो जरा कर लेना है ना। एविडेंसेस ले लो सारे। हाँ तो 2 छोटे बच्चों के नाम पे पीटना करते तो अच्छा रहता। सर अर्जुन सर इधर लाओ, दूसरा सस्पेक्ट इधर लाओ।
तुम ही प्रोसेस करो ना, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम प्रोसेस करके जाओगे। अजय एसटी करेगा, वो था रिस्पॉन्डिंग। हाँ। R20 लेना चालू करो जल्दी। You both were one heck of a pain in the ass. Like seriously भाई रॉकेट लीग बना रखा है तुम दोनों ने। हरवी लिसन पकड़ा गया ना तो मेरे को बोलता है मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं बोला भाई पिट करने से पहले याद नहीं है, दो छोटे छोटे बच्चे, पापा मर जाएंगे तो क्या करेगा। एक सेकंड वो सब ठीक है। तुम्हारा पीली टी शर्ट वाला दोस्त है जो बोल रहा था मैं दिमाग में हूँ वाला, वो महान का है। वो भी साथ में तुम्हारे जेल में जेल में मिल के आया उसको जरा। भाई दिमाग में हूँ भाई, वेरी वेरी रियलिस्टिक। मैं उसको तो डरूंगा मैं। Remus or RX me comes the mobile. Spec CVPI. Which fuel station is open? Below the pump. AFM. Unit come to impound lot.
child made one GTA incident report. You can add in the vehicle evidences. $97? नहीं अभी नहीं। हाँ Vehicles win out, minor 50. Yeah. Keep up. Dude on the San Andreas Avenue, southeast bound. Might be exiting from the Vice Hospital. Who's the one giving calls? I think 8 on Prosperity Street, southwest अच्छा bound. केनी सेबेस्टियन। ये रह ठीक है, जो ये क्या कहते हैं इन दोनों को ना, ये इन दोनों पे लगा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस। वेट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस लगा इन दोनों पे, है ना, रेकलेस इवेडिंग एंड क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं मेन वो था ना इसका 99 का था ना सिचुएशन, 99 सिचुएशन थी ना। आप ब्रीफ में लिख दीजिए, ये मैंने इंसिडेंट से बना दिया। बस प्राइमरी रेस्पोंडेंट बताओ ना, उसके बाद ब्रीफ लिखवाना। उसको ही पता है करो ना। बस। हाँ ब्रीफ में लिख के चले जाओ, मैं अपडेट कर दूंगा। है ना, और क्या कहते हैं ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, इन दोनों का कंप्लीस, उसका ग्रैंड थेफ्ट ऑटो उनका कंप्लीस, और इसका क्या कहते हैं इसका लगाना है पूरा ग्रैंड थेफ्ट ऑटो। इसका क्या? इसका ग्रैंड थेफ्ट ऑटो लगाना है इन दोनों का कंप्लीस। इसका मेन है। हाँ उन बाकी दोनों का कंप्लीस। मैं कर लूंगा, MW कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका सामान मेरे पास। अच्छा सुनो, अभी he has a weapon license, इसी का वेपन है शायद। केनी के पास है, केनी के पास है वेपन लाइसेंस। हाँ इसके पास वेपन लाइसेंस है, इसी का वेपन है, तो इसको दे दूंगा मैं, ठीक है? Because he hasn't used it. है ना, क्या क्या था इसका पोजीशन, क्या था? हाँ फोन डोंगल है, नाइफ है, बेरेट M9 है, लॉक पिक है जो मैंने ठीक है, उसको दे दिया। फोन डोंगल का इनका सुनो, फोन डोंगल का लगाओ, वायलेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर, स्टोलन गुड्स, है ना, इन दोनों पे क्या मिला है? तो ऐसे गाली देने को मिलता है, नहीं मिला। लॉक पिक ले लो इसकी। नहीं है आंसर। हाँ डालो, क्या कहते हैं किसकी है गाड़ी, मेरे को बता, मेरे को दो वेपन दो। लॉक पिक ले लो इससे मैं। नहीं 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 छोड़ो फक। ऑफिसर क्या बोलता है, गाली देने का मन कर रहा है मेरे को। ये इसका क्या क्या था इस पे? बम इस पे एक फोन डोंगल और गन का लाइसेंस नहीं है, गन भी दूसरे। ठीक है, गन का सीरियल नंबर बताओ। सीरियल नंबर 1306 मल्लू आंटी है, मल्लू आंटी की गन चला रहा है भाई। मल्लू आंटी की गन चला रहा है। अरे वो ने मेरे को बुलाई थी तो वो गन दे दी मेरे को। अच्छा इसके एंड में क्या, इसके एंड में क्या है? 1306 और 1306 और कुछ नहीं है क्वालिटी। अरे आगे आगे कुछ तो लिखा होगा ना 1306। कार्टेज है। हाँ क्या लिखा है पूरा? धरो 96 पोजीशन ऑफ अ स्टोलन वेपन डालना। हाँ ऐड कर दो, तो पहले एक बनाता हूं। करो इसका, बहुत झंझट है कसम से, ज्यादा बनता ना। 436 ऑफ कम्स MDW एंड प्रोसेसिंग। सैलरी क्या मिलती है? हाँ मैं क्या नहीं ज्यादा, ये तो कहते हैं तुम्हारे दोस्तों को ज्यादा अच्छा लगता है ये सब करना है? जी वैगन ऐसे अंदर ठोक रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस पे भी चला देता MP7 अगर मेरा मन करता है ना। ये पहली सी एक जी वैगन चूतिया मेरा पागल कर दिया है 430 है ना, मैं सच बता रहा था MP7 चला देता तुम पे। आवाज नहीं आ रही आप। हाँ भी कुछ कह भी नहीं रहा। और गन का भी लगा।
सर एक चीज कैसे पिटा, ठीक है, समझ रहे? अरे ठीक कहनी है आप ये हाँ चार्जेस है मैं सुना वो आ गया, बम आ गया, हमचा आ गया। फट के आ नाइस। गया। हेलो सर आपके चार्जेस है वित्तल करिए। बोलो बोलो बोलो। ठीक है कैनी, तुम्हारी पोजीशन ऑफ चार्जेस सुन स्टोलन लो। गुड्स, क्या कहते हैं? लोकेशन ऑफ फायर आर्म्स पोजीशन ऑफ आपके स्टोलन गुड्स, लोकेशन वायलेटिंग a court order, और reckless क्राइम evading, का टोटल grand theft auto। ओके यस। 5500 का चालान, 74 months जेल। प्लीड गिल्टी। ठीक है सर आपका 35 ठीक है। months है और 70 तुम्हारे जेब में कुछ है तो नहीं ना? चेक कर लो। आपका वो मेरी गन नहीं मिली मुझे। नहीं मिलेगी। हाँ बोले एक कॉल उठाना है, उसको मैं बुला रहा हूँ, पीडी उसको भी पकड़ो। अभी है कि नहीं तुम्हारी जेब में सामान, हाँ या ना? एक बार हाथ जमा सामान है मेरी जेब में। आते हो रुको। मेरी गन तो दे दो, लेकिन मतलब वो भी नहीं मिलेगी। पोजीशन में डालो ना। हाँ नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी नहीं। क्यों? लेकिन वो तो लाइसेंस है ना, मतलब। दे दे इसकी लाइसेंस चलो। हाँ दे उसकी गन दो। तुमको दे रहा हूँ। ये वाली एमआरपीडी। अबे यार अरे वो कुछ नहीं करेगा। ये ग्रे वाले का कुछ किया अब तक? पोजीशंस फोटो ली कर रहा हूँ। एमआरपीडी मैं करता हूँ। रुक कार्ड के ऊपर रखा है, कार्ड के ऊपर। ठीक है। अबे ये जो सर्च कर रहा था। सिटी में एक ही पीडी है ना? अच्छा एडवांस लॉक पे कहाँ पे? ये कौन है? केनी सेबास्टियन? हाँ जी। अबे फिर से ये हर दूसरे ये कुछ भी करते पकड़ा जाते हैं। मैंने इसका फोटो डाला है, ठीक है, मगशॉट में पहले ही। नहीं पकड़ना चाहिए ना यार, छोड़ दिया करो। इसका मत लिया करो, मेरे पे बहुत पड़ा हुआ है, बहुत पड़ा हुआ है। अबे इसके 10 तो मेरे पास ही होंगे। सुबह इसको, हाँ वही तो सुबह ही प्रोसेस किया इसको मैंने। जेंटोर्नो लेके जा रहा था हमारे साथ। अभी सेंटिनल थी। तुम्हारे पोजीशन से इसका ड्यूसी बोल देंगे, ठीक है? बस उधर इधर में आ रहा, ठीक है? पेपल आईडी बताओ। नहीं 552। मैं आ रहा हूँ, अंदर से आ रहा हूँ, बात ठीक है। बिल तुम्हारा कर दे, मैं जेल कर रहा हूँ। इधर आओ ना यार। हेलो ऑफिसर 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 ऑफिसर, कोई सुन रहे हैं मेरी बात? हेलो 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 हेलो। अच्छा यहाँ पर सिर्फ पिक्सल। हेलो ऑफिसर हेलो अरे सुन रहे हो? I'm sending you to the jail, Mr. Kenny Sebastian। एक और बार देखा, सच बता रहा हूँ, बीटेक से मारने मैंने। हेलो ऑफिसर हेलो गुड बाय। अबे कहनी हाँ अबे ये ऑफिसर सुन ही नहीं रहे। हेलो सुनो ऑफिसर। क्या हो गया? ऑफिसर सुनो। बोल ना ऑफिसर। हाँ आवाज नहीं आ रही इनकी। हेलो सुनो ऑफिसर। हेलो अरे रियो आवाज आ रही है? रियो अब आ रहा है? कहाँ पे? हाँ आ रहा है। अरे सर सुनो बोलो। अरे जो मेरे साथ एक बमचा था वो बाहर खड़ा है गेट के पास, उसको उठा के लाओ। कहाँ है? इधर हाँ क्या है? कैसे हो सर? हाँ बोलो सर। मेरे को ये बात पूछनी थी, लाइसेंस कैसे बनता है सर? गन लाइसेंस? जी सर। डीओजी को पास जाओ, पहले डीओजी के पास जाओ, लॉयर के पास जाओ, उनसे अप्रूवल मांगो, फिर मैं तुम्हारा आगे का करता हूँ। हाँ हेलो मैम। तुम हो वो बमचे वो जो बोल रहे हैं जेल वाले? मैं बमचा? मैं क्या बोल रहा हूँ? भाई जेल में कोई लोग आए बोले बमचा तो वेट कर रहे बाहर, तुम्हें उनका तुम हो क्या? नहीं अच्छा बताओ। मैं पीडी ज्वाइन करने वाला हूँ, मुझे बमचा मत बोलो। क्या पता यार, क्या नाम है? मेरा डेवी जोन्स है। अबे मैंने तो किया है। अच्छा ठीक है। 911 किया था, मैं ठेल गया था रास्ते में। क्या हो गया था?
वो पेड़ से थोड़ा भिड़ गया था, मैं कहीं और देख रहा था तो अच्छा फोन चला रहा था, थोड़ा गाड़ी ठीक है चलाते ठीक है चलाते, आराम से चलेंगे ठीक सीट है। बेल्ट देख रहा था। सर सर क्या सर बोलो आप बोलो ऑफिसर हो? आपके बेटा पास गन है? सार्जेंट बड़ी तब ऑफिसर सार्जेंट हो? सार्जेंट सार्जेंट सर, सार्जेंट सर, हाँ ठीक जी है सर। सर देखिए, मेरे पास एक छोटा सा प्लान है, अगर आप 2 मिनट के लिए फ्री है तो। बोलो 2 मिनट जल्दी लगेंगे बोलो सर। जल्दी बोलो। देखिए, मेरी एक सोलो कैडेट से बात हुई थी, हम्म है ना? लेकिन मैं उससे मुझे उस पर ट्रस्ट हुआ नहीं। बोलो बोलो वो तेज। उसके पास विक्रम बत्रा का बैच है, कुछ भी दिखा रहा है वो, पता नहीं, है ना? तो एक बंदा है सर, बनावरी लाल, हाँ येलो पेजेस पे वो ऑक्सी बेच रहा है सर देखो। अच्छा और मैं कल चेक की करता हूँ। ट्रेनिंग में वीवी चैन मैम ने बताया कि इलीगल है वो, ड्रग है ना? उस पे ऑक्सी अगर जुर्माना लगता तुम्हारे पास तब तक वो नहीं है अगर कोई ऑप्शन नहीं तो मैं लेता है। हूँ हाँ उसको सर, डरता हूँ। सुनिए तो हाँ, तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने वो कैडेट, सोलो कैडेट जो भी थे, उनके सामने मैंने 4 5, उनका 5 to 8 है शायद कॉल साइन, तो उनके सामने मैंने कॉल किया, उन्होंने उन्होंने ही बोला, तो उन्होंने बोला, उनको कॉल किया मैंने, उन्होंने बोला कि उनके पास 45 ऑक्सीज है, 250 के रेट पे देंगे। मैं बोला मुझे 10 चाहिए, तो हम्म। जगह बताने बोला कहाँ पे दे आना है, वो दे देगा। तो वो अबे इसका अपार्टमेंट ना पूरा बोला, मैं बोला ऑपरेशन करना पड़ता है यार, मैं ऐसे 5 मिनट में नहीं कर सकता, मैं लेकिन करता हूँ। अभी होने दे ऑफिस फ्री होने दे। सर खाना मिलेगा, सर खाना मिलेगा, पेट खाली है बिल्कुल भी, बहुत अबे दर्द हो रहा है हाँ ये ले मेरे मैं भाई दे को। रहा मेरे हूँ, पास इधर आ बोबा जाओ, टी इधर आ है, जाओ। ये ले बोबा टी पी ले। अरे सर ये आपका लो, नाम मेरे क्या मेरे है? पास बहुत खाना है, आर्श खराब ये होने दो। वाला है। दे दो अरे सर। नहीं, ये पिंक पाल पिंक पाल। I think tracker is disabled. I think. No, I have disabled. छोड़ दिया उन्होंने ठीक है। ये सर ले आएगा उसको उठा के। नहीं वो है ही गिल, नहीं बाहर। अरे रिसेप्शन रिसेप्शन पे अरे मैंने वो देखा ना, ऑफिसर मैं भाग के रिसेप्शन गया। पे था। ऑफिसर ऑफिसर बाय मिस्टेक बाहर आ गया ऑफिसर। हाँ रुको कर रहा हूँ। ऐसे काहे कांड करता है भाई। ये अच्छा तो मेरे पास क्या सामान था, क्या सामान पास था? मेरे पास डोंगल था। ये ना अपना कॉल आ फोन। गया, कॉल आ गया, हाँ कॉल आ गया। पागल बनाते सर हो कोई भी सही में निकाल। सर अबे कहाँ पे दरवाजा है जम खराब है जम के। यार। नहीं हूँ मैं। जो चीट यार। हमारी फिट कर रहा है। सुनो सुनो लो इसकी ऑफिसर ले लो मेरे से जो भी। इसका कौन और से क्या, गिल इसका पोजीशन क्या क्या था? लल भाग लल टी गया शर्ट। बेंचो। मैंने ले लिए, दोनों के ले मेरे लिए, को बताओ क्या जो भी ना क्या लेगा। था पोजीशन हाँ लीगल। जी, ये वित्थल कन्या जो रेड कलर का है, इसके पास वेपन था जो कि इसका लाइसेंस नहीं था, स्टोलन गुड था जो कि वो इसका सर स्टोलन गुड्स में नहीं आएगा, फोन डाउन है। वो स्टोलन वेपन में आएगा। यार देख लो ना, ये एक पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड में उसका फोन डोंगल आया, और क्रिमिनल पोजीशन ऑफ फायर आर्म में उसका वो है वेपन, जो कि उसका लीगल था। बाकी दूसरे का भी मैं चार्जेस लगाने वाला हूँ, इसको पहले प्रोसेस कर दूँ, इसने प्लीड गिल्टी भी कर दिया। तो पहले प्रोसेस कर देते हैं, फिर उसको देखते हैं। ठीक है सर, आप ही सीज कर रहा हूँ जल्दी। ठीक है आप ही लेना। हाँ। रेकलेसिविटी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस कौन लगाएगा? लगा दो अब इतने सारे हैं, मेरे को पता ही नहीं चला। चलो दोनों के दोनों पे फाइन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस लगाओ। ठीक है ऐड कर। और वायलेटिंग कोर्ट ऑर्डर में नहीं लगाया। कौन सा था सर? वायलेटिंग कोर्ट ऑर्डर। ठीक है हाँ। ये विथल कन्या कौन है? पैलिनी ऑब्जेक्शन या मिसडेमर? मैंने कर दिया है। और बता इन पे क्या 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 मिला था इनका ही लीगल? बस यही है और कुछ। स्टोलन फायर आर्म का क्लियर आ रहा है इससे। उंगली कर माथर जात। आपको पहले फाइन वेतन करनी है, 4600 का हुआ था ना, अभी थोड़ा चार्जेस बढ़ चुका आपका, एक तो वायलेटिंग कोर्ट ऑर्डर है, तो अभी 6700 है, तो एक्स्ट्रा आपका जाएगा 2100।
ओके और ये दोबारा भेज दो। सर मुझे एक स्पीयर फोन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। डीजे वाला बाबू सर्च करो। क्या क्या क्या? लेके बैठे हो। ठीक है सर। तो तुम्हारी पोजीशन सीज करो। नाम बताओ अपना। जेल है रॉय बाबू। ठीक है। जो टोटल जेल है अभी 63 मंथ्स है, 126 पे आओ। रोल। ठीक है सर। ओके सर ओके आपको प्रोसेस कर दूं सर? ओके सर। इनका फिंगरप्रिंट लिया तुमने? यस सर, सब कुछ ले इनका नहीं लिया, ये बगल वाले लिया। ठीक है रॉय बाबू ये एक सेकंड। अबे ये क्या हुआ? बाहर आना मुझे। रुक जा एक सेकंड, मेरा चेक। एक मिनट रुक जाओ। सॉरी। हाँ अबे आलू यहाँ पे कैसे आया भोसड़ी के? चले जाता फिर। छोटू कितना क्यूट है यार, तू कह रहा यार चले जाता दिमाग हूँ। खराब हो गया यार।